Assalamu alaikum and good morning, everyone. Welcome to the first session of the second day of the STEM Education Training Program funded by British Council. Let's start the session with the name of Allah Almighty. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار صدق الله العلي العظيم. Jazakallah. Ladies and gentlemen, today we have with us Dr. Muhammad Tariq Parvez. He has been serving Warsaw University of Pakistan since 2005. Currently, he is working in the capacity of Associate Professor and Chairman Department of Bioinformatics and Computational Biology. He is co-founder of the Department of Bioinformatics and Computation Biology and Department of Biology, Department of Biotechnology, Department of Molecular Biology, Mobile and Smart Labs. His work comprises construction of genome assembly, whole exome data analysis, machine learning in prognosis and predicting disease, algorithms, and database designing and development. He has more than 50 publications in national and international journals and developed multiple bioinformatics databases and tools. He will deliver his talk on genomic variant discovery, interpretations, and prioritization using bioinformatics. Welcome, sir. Please proceed for your presentation. Assalamu alaikum. As you are told that my talk will be on genetic variant analysis using bioinformatics tools. Actually, there was demand from my staff, biofaculty staff, for 2 and 3 years that we should be trained on bioinformatics tools, SNP analysis, genetic variant analysis, proteomic analysis, and other bioinformatics analysis techniques. Today, I will tell you three main research domains in SNP analysis.
SNP analysis work starts after having variants or SNPs as a result of whole exome data analysis or whole genome data analysis. ये एक ऐसा काम है जो कि आप आफ्टर हैविंग वेरिएंट्स आपने उन वेरिएंट्स की इंटरप्रिटेशन करनी होती है, प्रायोरिटाइजेशन करनी होती है. तो दिस इज अ फुल फ्लेज रिसर्च वर्क, SNP analysis. And then comparison of pathogenicity prediction tools. The tools who predict the impact of SNPs. इनके कंपैरिजन पे आप काम कर सकते हैं. काम कुछ हुआ है, कुछ हो भी रहा है. मेरे भी एक दो स्टूडेंट्स इन पे काम कर रहे हैं. फिर उसके बाद होल एक्सोम डेटा एनालिसिस और होल जीनोम डेटा एनालिसिस है. Let's we start from whole exome data analysis. These are some problems when you work on generally if I say on bioinformatics data analysis. Firstly, there is a lack of bioinformatics proper setup. इसमें आपको हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग टूल्स रिक्वायर होते हैं. अभी मैंने तकरीबन हफ्ता पहले एक वर्कशॉप यहाँ पे करवाई थी हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर क्लस्टर डिज़ाइनिंग एंड बिल्डिंग पे. अगर आप सुपर कंप्यूटर की बात करें तो वो जैसे मैंने पहले भी बताया था कि सुपर कंप्यूटर इज़ नॉट अ स्टैंड अलोन कंप्यूटर, इज़ नॉट अ सिंगल कंप्यूटर. It is actually a network or collection of several high performance computing machines. तो एक तो all over the world, especially in Pakistan, this is a problem that we don't have a proper setup. उसके बाद then there is a lack of expertise. आपको इसके experts बहुत कम मिलेंगे. You have data, but you don't have any expertise or you don't have any person कि आप इसमें कोई आपकी कोई इसमें help कर सके. Then there is a lack of workflow or pipeline. You may have listened about the workflow or bioinformatics pipelines. What are the workflow or pipeline? आपने बायोइन्फॉर्मेटिक्स एनालिसिस पे आप लोगों ने कोई काम किया होगा. जैसे अगर मैं इफ आई वुड से अबाउट अलाइनमेंट जनरेशन, उसके बाद आपने फाइलोजेनेरिक ट्री बनाया होगा. फिर उसके बाद यू मे हैव वर्क ऑन सम अदर बायोइन्फॉर्मेटिक्स टास्क. देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स टास्क. होता क्या है कि आप एक टूल की आउटपुट लेते हैं, फिर आप दूसरा टूल इंस्टॉल करते हैं, फिर आप तीसरा टूल इंस्टॉल करते हैं. आपको मैन्युअली यू वुड हैव टू गिव इनपुट टू ऑल टूल्स एंड देन सेव आउटपुट. तो ये इन दिस केस यू आर वर्किंग ऑन कंप्यूटिंग टूल्स सेपरेटली. यानी उसमें ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जिसमें आप एक ही दफ़ा इनपुट दें और आप 3-4 ऑप्शन सिलेक्ट करें साइमल्टेनियसली और आप बाद में करते जाएं, लेकिन आपको बार बार इनपुट या आउटपुट ना देनी पड़े या सेव ना करनी पड़े. तो उस केस में कि आपके पास जैसे आप जाते हैं बड़े डिपार्टमेंट स्टोर्स में, शॉपिंग सेंटर्स में, यू परचेज ऑल रिक्वायर्ड आइटम्स फ्रॉम द सिंगल store. So that is the concept in case of a bioinformatics pipeline. कि आप पाइपलाइन की फॉर्म में आप एक ही इंटरफेस में रहते हैं या आप एक ही वेबसाइट पे रहते हुए सारे काम कर लेते हैं. तो ये एक इसमें एक प्रॉब्लम है कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स पाइपलाइन बहुत कम है. आपने कुछ सुनी होंगी, गैलेक्सी है, जीनोम एनालिसिस टूल किट है या दूसरे भी हैं. लेकिन अगेन अक्सर डिपेंडिंग ऑन योर डेटा, डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट, आपके वो उतनी यूजफुल नहीं होते. आपको फिर भी
कोई दूसरे टूल्स यूज करना पड़ते हैं। तो सेकेंडली, देयर आर नो गोल्ड स्टैंडर्ड्स फॉर एनालाइजिंग और इंटरप्रेटिंग और प्रायोरिटाइजेशन ऑफ होल एक्सोम और होल जीनोम वेरिएंट्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्लिनिकल इंटरप्रिटेशन। कि आपने अब आपके पास वेरिएंट्स आ गए हैं, तो उसके लिए कोई बाकायदा कोई ऐसा सेटअप, ऐसी गाइडलाइंस नहीं है जिसकी बेस पे आप कहें जी 100% इस वेरिएंट का क्या काम है। तो ये प्रॉब्लम्स हैं बायोइन्फॉर्मेटिक्स में, स्कोप भी बहुत ज़्यादा है। द वर्क इज़ गोइंग ऑन टू डेवलप न्यू टूल्स, एल्गोरिथम्स, डेटाबेसेस। लेकिन अगेन जैसे मैंने पहले कहा कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। आपने अलाइनमेंट जनरेट की होगी, यूजुअली मोस्टली जिन्होंने जनरेट की उनके पास डेटा कम होता है, वो फील नहीं होता। मैंने एक रिसर्च की थी अलाइनमेंट जनरेटिंग टूल्स के कंपैरिजन पे, तो उसमें मैं कुछ टूल्स का नाम लेता हूँ, जैसे क्लस्टर डब्ल्यू, माफ्ट, मसल, प्रोबकॉन्स। All these tools are used for generating alignments. Usually, whatever I have learned and observed, we use cluster W. क्यों? That person or that person and that person is also using cluster W. तो मैंने भी यूज कर लिया। मेरी स्टडी इसी पे थी कि which tool is most accurate and most efficient। तो मेरी स्टडी प्लस उससे पहले भी स्टडीज हुई थी, प्रोब कॉन्स को टॉप पे रैंक किया अलाइनमेंट एक्यूरेसी वाइज। लेकिन देयर इज ऑलवेज अ ट्रेड ऑफ बिटवीन एक्यूरेसी एंड एफिशिएंसी। प्रोब कॉन अगर ज्यादा एक्यूरेट था तो वो उतना ही स्लो भी था। यानी अगर मैं बात करूं तो मुझे कई अलाइनमेंट की जनरेशन पे 2-3 दिन या इससे भी ज्यादा डेज लगे। अब मेरे पास एक नॉर्मल कंप्यूटिंग मशीन थी, और अगर मेरे पास एक अच्छा कंप्यूटिंग सेटअप होता तो हो सकता है मैं सारा काम 15-20 दिन में मुकम्मल कर लेता। तो सिर्फ अलाइनमेंट जनरेशन में ही मुझे 2 से 3 महीने लग गए। ठीक है। और उसके बाद जैसे मैंने बताया कि हमारे एक ट्रेंड है कि हम लिटरेचर को कम फॉलो करते हैं, हम सुनी सुनाई बातों पे ज़्यादा करते हैं कि क्लस्टर डब्ल्यू यूज़ हो रहा है, क्लस्टर ओमेगा यूज़ हो रहा है, तो मैं भी यूज़ कर लेता हूँ। तो क्लस्टर डब्ल्यू आप लिटरेचर देख सकते हैं, इट इज़ रैंक्ड ऑन 6 और 7 पोजीशन। अब आप का काम सारा का सारा बेस कर रहा है अलाइनमेंट पे, बट द अलाइनमेंट यू obtained is less accurate। तो व्हाट अबाउट द डाउन स्ट्रीम एनालिसिस? बाकी जो उसके बाद काम कर रहे हैं, फिर उनकी एक्यूरेसी या उनकी वैलिडेशन क्या होगी? तो इस तरह के प्रॉब्लम्स हैं, काम हो रहा है, स्कोप भी बहुत ज़्यादा है। बायोइन्फॉर्मेटिक्स पाइपलाइंस फॉर एनालाइजिंग जेनेटिक वेरिएंट्स अवेलेबल भी हैं, लेकिन अगेन लोगों ने अपने अपनी लैब के हवाले से जैसे काम हो रहा है उन्होंने अपने हिसाब से बना ली, पब्लिश कर दी, ओपन सोर्स है, आप उसे यूज़ कर लें, आपके काम आ भी सकती है या आपको थोड़ा सा वो मॉडिफाई करनी पड़ेगी। These are main steps of whole exome data analysis task। जब आप whole exome और whole genome आपके पास डेटा आता है तो उसमें मेजर काम जो होता है उसमें आपने वेरिएंट्स और SNPs, these are not actually interchangeable terms, there is a little bit difference between these two terms। तो वेरिएंट्स को आपने आइडेंटिफाई करना होता है। तो फर्स्ट स्टेप इज क्वालिटी कंट्रोल। आपने अपने डेटा की क्वालिटी चेक करनी है। व्हाट द इश्यूज यू मे फेस इन द NGS डेटा और होल जीनोम और होल एक्सोम डेटा। जब लाइब्रेरी प्रिपेयर करते हैं तो उसमें कुछ इश्यूज आ सकते हैं। आपने DNA सही तरह एक्सट्रैक्ट नहीं हो सका, उसमें कंटेमिनेशन आ गई, और ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ लाइब्रेरी वहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम आ गए, और ड्यूरिंग द जनरेशन ऑफ डेटा NGS
मशीन्स और प्लेटफॉर्म्स इटसेल्फ, उनमें कोई मसला आ गया तो इस तरह के क्वालिटी इश्यूज आ जाते हैं। तो उनको सबसे पहले, जैसे मैंने इन केस ऑफ अलाइनमेंट कहा, ये भी, इसमें भी एक अलाइनमेंट का प्रोसेस है। मैंने प्रीवियस वर्कशॉप में भी दिखाया था, हमारे पास काफ़ी डिजीज़ का डेटा है, 7-8 कैमल स्पीशीज़ का डेटा है। तो इन ये 100 GBs में डेटा है, यानी अगर आप बात करें तो ऑन द एवरेज 150-140 अराउंड दिस जो GBs डेटा है। अब इतना आपने डेटा लिया, मेहनत की, एंड विदाउट आपने क्वालिटी चेकिंग उसको आपने काम शुरू कर दिया, बाद में रिजल्ट्स ठीक नहीं आएंगे। तो सबसे पहले आपने उसकी क्वालिटी चेक करनी है। उसके बाद सीक्वेंस अलाइनमेंट होगी रेफरेंस जीनोम के साथ। हम अपने रीड्स की पोजीशन चेक करते हैं कि हमारा रीड कहाँ कहाँ पे वो अलाइन कर रहा है। फिर पोस्ट अलाइनमेंट प्रोसेसिंग में अगेन आप एक किस्म की क्वालिटी चेक कर रहे होते हैं। देन आपके पास आफ्टर परफॉर्मिंग पोस्ट अलाइनमेंट प्रोसेसिंग स्टेप्स यू हैव एक्चुअली एनालिसिस वेरिएंट कॉलिंग डेटा। फिर आपके पास वो एक डेटा बनता है जिसके आप वेरिएंट्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद डाउन स्ट्रीम एनालिसिस है। अब आपने वेरिएंट्स को प्रायोरिटाइज करना है, उसको आपने इम्पैक्ट देखना है, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ वेरिएंट्स ऑन डिजीज, what variants are pathogenic and what variants are non-pathogenic. So these are 5 steps. First one is quality control, then sequence alignment, post alignment processing. Quality control before starting actual work, आप इसमें क्वालिटी चेक करते हैं, एंड पोस्ट अलाइनमेंट प्रोसेसिंग अगेन आप क्वालिटी देखते हैं। तो उसके बाद वेरिएंट डिस्कवरी है और डाउन स्ट्रीम एनालिसिस है। So this is pictorial representation of the whole process of genetic variant calling. अब सबसे ऊपर आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड पे फास्ट क्यू फाइल है, डेटा है। लेफ्ट साइड पे जो क्वालिटी कंट्रोल के नीचे बिल्कुल एक ट्रायंगल है, इसमें फास्ट क्यू, दिस इज अ फॉर्मेट जस्ट लाइक फास्टा फॉर्मेट। आपने डीएनए प्रोटीन के डेटा के साथ आपने काम किया होगा, एनजीएस डेटा के साथ कम लोगों ने काम किया होगा। तो जिस तरह फास्टा फॉर्मेट है, जीन बैंक फॉर्मेट है और दूसरे बहुत से हैं, इसी तरह का जब आपके पास एनजीएस डेटा आता है तो दैट डेटा इज इन द फॉर्म ऑफ फास्ट क्यू। अब उस पर आपने क्वालिटी कंट्रोल किया। द मोस्ट फेमस टूल इन दिस कॉन्टेक्स्ट इज फास्ट क्यूसी। इसको थोड़ा सा आगे देखते हैं, फास्ट क्यूसी टूल क्या है, किस तरह की इसकी आउटपुट होती है। फिर उसके बाद आपके पास डेटा आ गया, क्वालिटी ओके है, तो अब आप अलाइनमेंट की तरफ आ जाएंगे। नहीं है तो फिर दोबारा क्वालिटी चेक कर सकते हैं। यानी अगर क्वालिटी चेक करने के बाद आपके पास जो डेटा आया है, आप उसकी दोबारा फास्ट क्यूसी सिर्फ आपको रिपोर्ट देता है कि व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ योर डेटा। ये आपके डेटा की क्वालिटी ठीक नहीं करता। फास्ट क्यूसी यूज करके आपने डेटा की क्वालिटी देखी, इफ इट इज ओके यू मे जज, यू कैन मूव टू द अलाइनमेंट प्रोसेस। अदरवाइज टूल्स अवेलेबल हैं जिस तरह यहाँ पे लिस्ट डाउन किए हुए हैं फर्स्ट कॉलम पे, लास्ट पे। तो ये टूल्स यूज करके यू कैन रिमूव अडॉप्टर्स, लो क्वालिटी बेसिस, आप ट्रिमिंग कर सकते हैं। उसके बाद दोबारा आप क्वालिटी उसमें देख सकते हैं कि अब क्वालिटी कैसी है। ये अलाइनमेंट प्रोसेस में आप टूल यूज करते हैं, ये BWA, बोटाए टूल, ये नोवा लाइन, दीज आर टूल्स फॉर अलाइनमेंट। जैसे मैंने अभी बात की क्लस्टर डब्ल्यू की, माफ्ट की, मसल की, दैट दोज टूल्स आर यूज फॉर अलाइनिंग normal protein or DNA data. These tools are used for generating alignment of NGS data. आपको जो फाइल मिलेगी वो सेम फॉर्म में मिलेगी, सीक्वेंस अलाइनमेंट मैप सेम फॉर्म में। दिस फॉर्मेट इज ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट। आप इस सेम फाइल को आप देखें, आप इसको पढ़ सकते हैं, आप इसको समझ सकते हैं, बट
द डेटा स्टोर्ड इन दिस फॉर्मेट इज नॉट एफिशिएंट। बाकी जो इसके बाद आप जितने एनालिसिस के काम करेंगे उस पर आपको बैम फाइल चाहिए होती है, उसमें फिर सेम फाइल को आप बैम में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद पोस्ट प्रोसेसिंग है, जैसे आपने पीसीआर डुप्लीकेट्स आपने आइडेंटिफाई करने हैं या मार्क करने हैं। फिर उसके बाद आपने क्वालिटी स्कोर की इम्प्रूवमेंट करनी है। देन यू विल हैव एनालिसिस रेडी रीड्स बैम फॉर्म में। तो उसके बाद आपने वेरिएंट कॉलिंग करनी है। वीसीएफ जैसे फास्टा फॉर्मेट, अभी फास्ट क्यूसी की बात हुई है, तो वीसीएफ इज अ फॉर्मेट हैविंग वेरिएंट्स ऑफ योर डेटा। इस फाइल में आपके पास वेरिएंट्स आ जाते हैं। उसके बाद फिर आप उन वेरिएंट्स का फर्दर एनालिसिस करते हैं कि वो वेरिएंट्स पैथोजेनिक है, नॉन पैथोजेनिक है, उनका इम्पैक्ट क्या है प्रोटीन पे, डीएनए पे, फंक्शन पे, प्रोटीन के स्ट्रक्चर पे। तो ये मैं थोड़ा सा आपको हैंड्स ऑन भी करवाऊंगा। दिस इज द फॉर्म ऑफ फास्ट क्यू फॉर्मेट। जब आपके पास एनजीएस डेटा आता है फास्ट क्यू फॉर्मेट में आता है, तो इसमें डेटा ब्लॉक्स की फॉर्म में आता है। फर्स्ट जो रो है ये एक ब्लॉक है जो आप यहाँ पे स्क्रीन पे यू आर सीइंग। तो फर्स्ट रो एट द रेट ऑफ सिंबल से शुरू हो रही है। इसमें रीड या सीक्वेंस, व्हाट इज रीड? सीक्वेंस, डीएनए प्रोटीन सीक्वेंस। इन context of NGS data we call sequence as a read, यानी डीएनए का एक सीक्वेंस को हम रीड कहेंगे। तो उस रीड का आइडेंटिफायर है, मशीन का नेम है, जिसमें वो आगे लेन में वो ग्लास पे वो डेटा लगता है, उसकी इंफॉर्मेशन होती है, जो कि हमारे लिए या आम यूज़र के लिए कोई इतनी समझने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद दूसरी लाइन में एक्चुअल रीड है। आप देख रहे हैं कि ये डीएनए की फॉर्म में एक डेटा है, दिस इज एक्चुअल रीड। उसके बाद प्लस सिंबल, प्लस सिंबल या तो ऐसे ही सिर्फ जस्ट अलोन जैसे आप देख रहे हैं, और हैविंग द सेम इंफॉर्मेशन विच इज कमिंग आफ्टर एट द रेट ऑफ सिंबल इन फर्स्ट रिकॉर्ड अ रो। तो प्लस सिंबल के बाद भी वो सेम इंफॉर्मेशन हो सकती है। उसके बाद ये जो नीचे एस की करैक्टर्स दिखाए गए हैं आपको, ये हर बेस की क्वालिटी है इसमें। अब इनकी वैल्यूज क्या है ये आपको नेट से लिटरेचर से मिल जाएंगी कि जो पहला सिंबल है वो 5, 10, 15, 20, 30 क्या उसकी वैल्यू आई है। उसके बाद बाकी सिंबल्स हैं, लेकिन इनको आप क्वालिटी देखना चाहते हैं तो आपके लिए वेरी इजी सोल्यूशन है, यू शुड यूज अ टूल। तो जैसे हम फास्ट क्यूसी की बात कर रहे हैं वो हम यूज कर सकते हैं। This is the actually accuracy measure parameter of NGS data. फ्रेड स्कोर, जैसे अभी हमने प्रीवियस स्लाइड पे देखा कि जो फोर्थ लाइन थी आफ्टर प्लस सिंबल, उसमें कुछ एस की करैक्टर्स थे, तो उनके कुछ वैल्यूज हैं इन फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज वो कुछ रखते हैं। तो उनमें वो अगर एक सीक्वेंस का स्कोर 10 की रिप्रेजेंट कर रहा है तो 90% एक्यूरेसी है। अगर वो स्कोर 20 है तो 99% एक्यूरेसी आपके रीड की या सीक्वेंस की। अगर 30 उसका फ्रेड स्कोर है, जो कि एक आप एनजीएस प्लेटफॉर्म्स का वैसे जाएं इल्यूमिना की वेबसाइट पे या वैसे आप इसको थोड़ा सा देखें तो वहाँ पे 30 स्कोर को एक थ्रेशोल्ड कहा जाता है फॉर डेटा हैविंग गुड क्वालिटी, कि अगर 30 स्कोर आ गया तो ये आपका डेटा ठीक है। तो वो उसकी एक्यूरेसी, व्हाट डज मीन बाय 30 फ्रेड स्कोर, कि एक्यूरेसी इज 99.9%। ये एनजीएस प्लेटफॉर्म्स के बारे में भी हम बात करते हैं कि अगर किसी की डेटा की क्वालिटी 30 है तो इट मीन्स द आउटपुट ऑफ दैट एनजीएस प्लेटफॉर्म और मशीन इज गुड। इसमें डेटा क्वालिटी में द मोस्ट फेमस टूल इज फास्ट क्यूसी। अदर
Then fast QC, there are a number of tools: fast QP, NGS, QC toolkit, and many other tools are available. But the most famous and popular tool is fast QC. इसको थोड़ा सा समझना भी आसान है as compared to other tools. और ये इसके आप गैलेक्सी अगर किसी ने आप में से यूज की है, गैलेक्सी एक पाइपलाइन है, ऑनलाइन पाइपलाइन है, तो उसमें भी ये टूल एम्बेड है फास्ट QC. इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, अपने सिस्टम पे इंस्टॉल कर सकते हैं, स्टैंड अलोन टूल के तौर पे भी अवेलेबल है. यू कैन आल्सो इंटीग्रेट दिस फास्ट QC टूल्स इन योर ओन एप्लीकेशन. अगर आप कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं या आप खुद अपनी एक पाइपलाइन बना रहे हैं, तो आप इस टूल्स को उसमें भी एम्बेड कर सकते हैं. इट इज रिटन इन जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. This is the output of fast QC. आप देख रहे हैं कि plot boxes that are in yellow colors are falling rapidly when you move from left to right side, from 5 prime end to 3 prime end. इस फिगर को देखें और इसके साथ जो लेफ्ट साइड पे उन्होंने टिक मार्क दिए हुए हैं, क्रॉस मार्क्स दिए हुए हैं, ये आपको ईच जो है पैरामीटर कह ले या कोई दूसरे उन सीक्वेंस के हिसाब से या बेसिस के हिसाब से या दूसरे जीसी कंटेंट के हिसाब से वो दिखाई हुई हैं. तो इसमें आप देख रहे हैं कि तकरीबन देयर इज अ मिक्सचर ऑफ टिक मार्क, क्रॉस मार्क एंड वार्निंग्स. तो ये डेटा भी क्वालिटी के हिसाब से मीडियम से इसकी क्वालिटी है. ठीक है, अब मैं इस वेबसाइट पे जाके आपको डेटा की क्वालिटी के बारे में बताता हूं कि अगर गुड डेटा है तो उसकी ये वाली पिक्चर जो अभी हमने देखी है वो कैसे नजर आती है. इफ देयर इज अ बैड डेटा तो उसकी ये पिक्चर कैसे नजर आएगी. ठीक है, तो वो वैसे जैसे मैंने पहले बताया, यहां पे ये एक फिगर rather than to go to various state of this output, आप ये एक फिगर देख के आप अंदाजा कर सकते हैं कि you should move next or not. आप डिसाइड कर सकते हैं. ये एक है इन्होंने दी हुई गुड लुमिना डेटा की एग्जांपल और बैड की. अब देखें गुड क्या कह रहा है. अब हमें अंदाजा हुआ कि जो हमने प्रीवियस फिगर देखी थी और इसको देखें, अगर ये गुड है, अब देखें इसके सारे के सारे जो बाकी पैरामीटर सारे के सारे वो टिक मार्क लगाए हुए हैं. वेरी गुड क्वालिटी डेटा. इस दूसरी इस फिगर में देखें, देयर आर 3 पोर्शंस. अपर वन इज ग्रीन, देन येलो, देन पर्पल. 3 पार्ट्स हैं और इसी पार्ट्स के हिसाब से आपको वो फास्ट QC आउटपुट दिखा रहा है कि अगर आपका डेटा सारा का सारा उसकी जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ग्रीन पार्ट में आए तो दैट इज गुड क्वालिटी और ऑटोमेटिकल जो बाकी पैरामीटर्स हैं वो भी गुड हो जाते हैं. अगर वो डेटा नीचे फॉल कर रहा है येलो पार्ट में तो क्वालिटी मीडियम लेवल की है या फॉल कर गई है, और नीचे अगर पर्पल रीजन में आ जाएगा डेटा तो वो सारा का सारा फिर वो डेटा खराब होगा. यहाँ तो आपको अगेन एक साइकिल रिपीट करना पड़ता है कि दोबारा सैम्पलिंग करो, NGS करवाओ, या फिर आपको टूल यूज करके आपको डेटा ज्यादा क्वालिटी में ट्रिम करना पड़ेगा, जो कि यूजफुल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता. ये देख लें. अब राइट साइड पे सारा का सारा डेटा लो क्वालिटी डेटा है, स्पेशली वो डेटा नीचे यहाँ पे उसने रीड्स शो किए हुए ये वाले, ये क्वालिटी स्कोर है 0 to 34. ये क्वालिटी स्कोर है. अगर वो जो बिहेवियरेबल क्वालिटी है 20 तक है, जैसे मैंने कहा कि पर्पल रीजन में डेटा आपका नहीं आना चाहिए.
अगर आपके डेटा की क्वालिटी, जैसे वी सॉ इन प्रीवियस स्लाइड के फ्रेड स्कोर कितना होना चाहिए, 30। व्हाट डज मीन बाय 30? 99%, 99.9% क्वालिटी है, तो वो तो बहुत अच्छी क्वालिटी होगी। लेकिन अगर 20 तक भी है तो आप मूव कर सकते हैं, बियरेबल है, मुनासिब है क्वालिटी। इससे कम है तो फिर वो अगेन, जैसे मैंने पहले बात की, अगर ज़्यादा डेटा आपका फॉल कर रहा है इन पर्पल रीजन, तो आपने डिसाइड करना है कि आपने सैम्पलिंग एनजीएस डेटा जनरेशन पे दोबारा जाना है, या आपने डेटा इतना ज़्यादा ट्रिम करके आपका काम उसमें हो सकता है। These are some steps to be performed in case of quality control for NGS data. Adapters, you people know better कि adapters क्यों लगाए जाते हैं। वो एक्चुअल सीक्वेंस का पार्ट नहीं होते, वो हमारे जब डेटा हमारे पास आता है वहाँ भी मौजूद नहीं होने चाहिए, तो इनको हमने रिमूव करना होता है। In addition to adapter, removal trimming can be performed to discard any low quality reads. जैसे अभी हमने फिगर्स में देखा है कि जो रीड्स फॉल कर रहे हैं पर्पल रीजन में, तो उनको हमने रिमूव करना होता है, अडॉप्टर्स को और लो क्वालिटी रीड्स को। ये टूल्स हैं। फास्ट क्यूसी का पर्पस क्या था? सिर्फ क्वालिटी को विजुलाइज करना है, क्वालिटी देखनी है। अगर तो आपके डेटा की क्वालिटी ठीक आई है तो आपको ये वाले टूल्स यूज करने की जरूरत नहीं है। जैसे हमने गुड इल्यूमिना डेटा की एग्जांपल देखी है, बट इफ क्वालिटी इज लो तो आप इन टूल्स को यूज कर सकते हैं। इसमें वो टूल अभी लिस्ट डाउन नहीं किया हुआ जो हम यूज कर रहे हैं आफ्टर क्यूसी। तो ऑटोमेटिक पैरामीटर्स भी सेट होते हैं। आप लोगों ने देखा है क्लस्टर डब्ल्यू जब यूज़ कर रहे हैं तो पैरामीटर्स टूल्स ने खुद दिए होते हैं, जो बेस्ड अपॉन लिटरेचर सर्वे एक्सपर्ट्स वो कहते हैं जी बाय डिफॉल्ट पैरामीटर्स ये, इससे भी आप काम चलाएं। बट इफ़ यू वांट टू चेंज दीज पैरामीटर्स आप चेंज कर सकते हैं मैनुअली भी। तो उसके बाद ट्रिमोमैटिक टूल्स इज यूजिंग इन द डोमेन ऑफ बायोमेट्रिक्स डेटा एनालिसिस, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। दूसरे काफ़ी सारे टूल्स हैं। इन तमाम टूल्स की वेबसाइट पे जाएं तो आपको इसकी यू में ऑब्टेन कह लें कि डॉक्यूमेंटेशन और मैनुअल टू यूज़ these tools or to interpret results of these tools. In addition to these tools, there are some और packages for QC such as Pika and Short Read. ये भी आप आर में, अगर आप एक्सपर्ट हैं, आर में काम कर रहे हैं, तो ये पैकेजेस यूज करके यू कैन राइट योर ओन स्क्रिप्ट फॉर रिमूविंग अडॉप्टर्स और अनवांटेड रीड्स और बेसिस। This is our second step, as we saw in the previous slides. What was first one? QC, quality control, जो कि हमने देख ली है कि अगर हमारे डेटा की क्वालिटी अच्छी है तो फिर हम इस स्टेप पे आएंगे, अदरवाइज इस स्टेप पे नहीं आएंगे, यानी आगे आप मजीद फर्दर मूव नहीं करेंगे। दिस इज द सेम concept in form of NGS data क्वालिटी अलाइनमेंट। जैसे कि आपने प्रोटीन और DNA की अलाइनमेंट की है, तो ये भी सेम कॉन्सेप्ट सेम है कि आप अपने रीड्स की इसके साथ अलाइनमेंट करके एक्चुअली व्हाट आर यू सर्चिंग और फाइंडिंग द पोजीशन ऑफ योर रीड्स ऑफ योर डेटा, कि कहाँ कहाँ पे वो एक रेफरेंस जीनोम में आ रहा है, तो उसको अलाइन करते हैं। अगेन एफिशिएंसी एंड एक्यूरेसी और क्रूशियल स्टेप इन दिस स्टेप। जब हम DNA या प्रोटीन की अलाइनमेंट की बात करते हैं, दैट डेटा इज यूजुअली स्मॉल इन वॉल्यूम। आपको 5 मिनट में, 1 मिनट में, या इससे भी कम वक्त में, या थोड़े से और ज़्यादा वक्त में, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ योर डेटा, यू कैन ऑब्टेन अलाइनमेंट। बट इन केस ऑफ NGS डेटा, जैसे मैंने पहले बताया, ये यूजुअली
100 GB से ज़्यादा होता है। होल एग्जाम करवा रहे हैं तो वो अराउंड 100 GB डेटा होगा। अगर आपने होल एग्जाम करवा रहे हैं तो, अगर होल जीनोम करवाया तो इससे भी ज़्यादा होगा। तो उसमें फिर अलाइनमेंट, जैसे पहले बात हुई है, इफ़ यू हैव गुड कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तो आपको रिजल्ट्स या अलाइनमेंट आपको जल्दी मिल जाएगी, अदरवाइज यू मे हैव टू वेट फॉर सेवरल डेज, मे बी वीक्स, 1 वीक 2 वीक या इससे भी ज़्यादा, अराउंड डिपेंडिंग अपॉन योर कंप्यूटिंग मशीन्स, दैट इज एक्चुअली डूइंग अलाइनमेंट। इस वक्त ह्यूमन में ह्यूमन जीनोम 19, रेफरेंस जीनोम यूज़ हो रहा है और 38 यूज़ हो रहा है। GRCH जीनोम रेफरेंस कंसोर्शियम 37 ह्यूमन जीनोम रेफरेंस जीनोम है और दूसरा 38 है। अभी व्हेन वी विल बी परफॉर्मिंग स्निप एनालिसिस, तो कुछ टूल्स अभी भी जो ह्यूमन जीनोम 19 है या 37 है, कुछ उसको सपोर्ट कर रहे हैं, वो 38 को सपोर्ट नहीं कर रहे, कुछ 38 को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये दोनों पैरेलल साथ चल रही हैं। टूल्स फॉर द अलाइनमेंट ऑफ NGS रीड्स, Barrow's Wheeler aligner BWA, Botae to Novoline and Mummer. These are most popular famous tools for generating alignment of NGS data. When you perform alignment, तो जो फाइल आपको मिलती है, what is that file? SAM, ह्यूमन रीडेबल फाइल होती है, सैम मिलती है, लेकिन सैम पे हम काम करते नहीं है। यानी अलाइनमेंट जनरेट करने के बाद जैसे पोस्ट अलाइनमेंट प्रोसेसिंग स्टेप्स देखे या और इसके काफ़ी सारे स्टेप्स करने पड़ते हैं। रिसर्चर्स ने या बायोइन्फॉर्मेटिक्स जो एनालिसिस हैं उन्होंने अपने अपने डेटा के हिसाब से या लैब के हिसाब से पाइपलाइंस बनाई हुई हैं। जैसे मैंने गैलेक्सी का नाम लिया, गैलेक्सी इज़ अ बायोइन्फॉर्मेटिक्स पाइपलाइन, या जीनोम एनालिसिस टूल किट है, इसके अलावा भी बहुत सारी हैं। तो ये एक्चुअली ग्राफिकल फॉर्म है ऑफ अ सेट ऑफ कमांड्स। जैसे मैंने बात की ना कि पाइपलाइन क्या है, कि पाइपलाइन आप एक ही दफ़ा डेटा दें, उसी वेबसाइट पे या उसी इंटरफेस पे तमाम स्टेप्स परफॉर्म हो और आपको एंड पे एक रिजल्ट मिल जाए। तो ये आपने डेटा दिया और आपको उसका रिजल्ट्स मिल गए, दरमियान में यू मे हैव टू यूज अ नंबर ऑफ कमांड्स। यानी यहाँ तो वो कमांड्स, वो जो नंबर ऑफ कमांड्स हैं और सेट ऑफ कमांड्स हैं, दीज कमांड्स आर दिस कलेक्शन ऑफ कमांड्स इज कॉल्ड पाइपलाइन। यहाँ तो वो आप मैन्युअली, इफ यू आर एक्सपर्ट इन यूजिंग बायोइन्फॉर्मेटिक्स टूल्स कह लें या कमांड्स कह लें, और मोस्टली जो कमांड्स हैं वो यूनिक्स पे रन होती हैं, यूनिक्स बेस हैं, तो आप इंडिविजुअली कमांड्स आफ्टर डूइंग लिटरेचर, एक पेपर पढ़ें, दूसरी वेबसाइट पे जाएं, तीसरी पे जाएं, आप खुद अपनी कमांड्स बना सकते हैं। ठीक है ना, आप पढ़ेंगे जी इस काम के लिए, जैसे मैंने कहा जी हम आफ्टर QC यूज कर रहे हैं फॉर रिमूविंग अडॉप्टर्स और ट्रिमिंग द डेटा। आपको कोई और टूल अच्छा लगता है यूज करने के हवाले से, या मे बी आफ्टर QC आज ज्यादा उसकी एफिशिएंसी है, ज्यादा एक्यूरेसी है, तो कल कोई और टूल आ गया वो क्लेम कर रहा है, उसने रिजल्ट्स दिखाए हैं कि हमारे टूल के आफ्टर QC से ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स हैं, एंड सो ऑन। तो आप खुद अपना एक सेट बना सकते हैं कमांड्स का फॉर एनालाइजिंग होल जीनोम और होल एक्सोम डेटा। तो ये जो सेट है, ये सेट यानी जैसे गैलेक्सी है उस पे इंटरफेस दे दिया, बैकएंड पे ये कमांड्स ही रन कर रही हैं, हमें वो कमांड्स देने नहीं पड़ते, या आप वो कमांड्स खुद मैन्युअली दे के भी ये सारा काम कर सकते हैं। तो सैम फाइल फिर बैम में कन्वर्ट की जाती है। बैम बाइनरी अलाइनमेंट मैप, सैम जो होती है ये आप ले सकते हैं वेब से, आप लिख लें सैम फॉर्मेट, आपको वो सारा उसका एक हेडर सेक्शन होता है, फिर उसके बाद अलाइनमेंट सेक्शन आ जाता है।
तो जब आप बैम को देखेंगे तो बैम आपसे नहीं पढ़ी जाएगी, वो ह्यूमन रीडेबल नहीं होती, लेकिन वो एफिशिएंट ज़्यादा होती है। उसमें इंडेक्सिंग करते हैं, जिस तरह आपने इंडेक्सिंग के पढ़े हैं कि यू कैन गो डायरेक्टली टू सम सेक्शन इन द फाइल और योर डेटा। तो उसके बाद फिर सारे जो जितना भी आपका डाउन स्ट्रीम एनालिसिस होता है उसमें बैम फाइल यूज़ हो रही होती है। After having alignment file, you may perform some post-alignment processing steps. What are those? Majorly, you do actually 2 steps in this post-alignment processing domain में आपने 2 steps करने होते हैं। PCR duplicates को रिमूव करना होता है या कम से कम मार्क करना होता है। उसके बाद आपने रिकैलिब्रेशन ऑफ बेस क्वालिटी स्कोर्स करनी होती है। व्हाट आर पीसीआर डुप्लीकेट्स? पीसीआर डुप्लीकेट्स जब एम्पलीफिकेशन का प्रोसेस होता है तो एक ही रीड की मल्टीपल कॉपीज जनरेट हो जाती हैं जो कि अनवांटेड होती है। उससे क्या होता है, इसका नुकसान क्या होता है? अगर आप पीसीआर डुप्लीकेट्स को मार्क नहीं करते या रिमूव नहीं करते, आप जब वेरिएंट कॉल करते हैं, अभी हमने वेरिएंट कॉल नहीं किए, क्वालिटी कंट्रोल किया, उसके बाद हमने अलाइनमेंट की है। अब हम उसकी अलाइनमेंट आने के बाद हम पोस्ट अलाइनमेंट प्रोसेसिंग स्टेप्स कर रहे हैं। अगर आप पीसीआर डुप्लीकेट से रिमूव नहीं करते तो बहुत से वेरिएंट्स आपके पास ऐसे आ जाएंगे जो कि नहीं आने चाहिए थे। वेरिएंट्स भी तो उसी हिसाब से आएंगे ना जिस हिसाब से आपके डेटा में रीड्स होंगे, तो इनको रिमूव करना होता है। और उसके बाद आपने जो स्कोर्स है, फ्रेड स्कोर्स का मैंने आपको पहले बताया कि उसमें आपने उस स्कोर्स की रिकैलिब्रेशन करनी होती है। ठीक है, ओके। व्हाट डज मीन बाय 30% और 70% ऑफ योर रीड्स? व्हेन यू गेट द रीड बैक, you find that several percent, sometimes even 30% or 70% of your reads are identical copies of each other. These are actually the results of a PCR duplication. इतना ज़्यादा डेटा आपके पास वो रेप्लिकेट होके आ जाता है जिसको रिमूव करना ज़रूरी होता है। ये टूल है मार्क डुप्लीकेट्स। PCR डुप्लीकेट्स को आपने मार्क करना है। Marking duplicates constitutes a major bottleneck since it involves making a large number of comparisons between all reads. This is another computing or bioinformatics bottleneck or problem. कि जब आप PCR duplicates को रिमूव करते हैं, जैसे मैंने अलाइनमेंट के केस में बताया कि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो ये भी एक टाइम कंज्यूमिंग काम है। और इसके लिए भी आपके पास इफ़ यू हैव गुड कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तो ये स्टेप थोड़ा सा एफिशिएंट हो जाएगा। तो thus the majority of the effort in optimizing the runtime of reads to variance workflow is focused on this step. कि PCR डुप्लीकेट्स अगर आप रिमूव नहीं करते तो आपका के रिजल्ट्स ठीक नहीं आएंगे, उसमें वेरिएंट्स ज़्यादा आ जाएंगे। वेरिएंट्स ज़्यादा हो जाएंगे तो आपको नेक्स्ट इसके बाद वाले जितने भी स्टेप्स हैं वो एक किस्म की रेपिटेशन चल रही है। कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास वेरिएंट्स एक्चुअली 1 मिलियन आने चाहिए थे तो इसकी बेस पे लगा लें कि अगर 70% डेटा ज़्यादा आ गया तो वो उस हिसाब से वेरिएंट्स भी ज़्यादा आ जाएंगे। This is the step of improving quality scores of the reads, which is performed actually after aligning NGS data. This is a machine learning approach, which based upon empirical data, millions of reads, millions of variants की बेस पे फिर जो क्वालिटी अभी हमने प्रीवियस स्लाइड्स पे देखी है फ्रेड स्कोर की फॉर्म में,
30%, 20% एंड सो ऑन, तो ये क्वालिटी फिर वो उसको एडजस्ट करता है रीड्स की, और उसकी बेस पे फिर वो जो वेरिएंट कॉलिंग का स्टेप्स है वो ज़्यादा एक्यूरेट हो जाता है। अब हमारे पास नाउ वी हैव एनालिसिस रेडी बैम फाइल। थोड़ा सा इसको हम समराइज करें अब तक की टॉक को, तो कितने स्टेप्स हमने परफॉर्म किए आफ्टर हैविंग एनजीएस डेटा इन फॉर्म ऑफ रीड्स। फर्स्ट हमने क्वालिटी चेक की, क्वालिटी चेक करने के लिए हमने फास्ट क्यूसी यूज़ किया। फास्ट क्यूसी सिर्फ आपको क्वालिटी दिखाता है, क्वालिटी इम्प्रूव नहीं करता, ये बात याद रखनी है, ठीक है। अगर आप अपने डेटा के रिजल्ट्स देख के यू फील कि दैट द क्वालिटी ऑफ डेटा इज लिटिल बिट लो, यू नीड टू रिमूव अडॉप्टर्स और हैव टू ट्रिम योर डेटा, तो फिर आपने वो टिमोमैटिक और जैसे मैंने कहा कि आफ्टर क्यूसी टूल यूज़ करना है। तो उसके बाद अगेन यू शुड चेक द क्वालिटी ऑफ योर डेटा। यानी ऐसा नहीं है कि आपने वो क्वालिटी इम्प्रूव की, आपने आफ्टर क्यूसी यूज़ किया और आपने ट्रिमोमैटिक यूज़ किया, उसके बाद आप डायरेक्टली विदाउट सीइंग क्वालिटी ऑफ योर डेटा आप अलाइनमेंट पे चले जाएं। ऐसी बात नहीं है, दोबारा आपने क्वालिटी चेक करनी। उसके बाद अलाइनमेंट की हमने। अलाइनमेंट के लिए काफ़ी सारे टूल्स हैं, VWA, Barrows, Wheeler, Aligner is the most famous tool in context of NGS data alignment। तो अलाइनमेंट करने के बाद फिर जो स्टेप्स आते हैं, सैम को बैम में कन्वर्ट किया, उसके बाद अपने पोस्ट अलाइनमेंट प्रोसेसिंग स्टेप्स किए। देयर आर 2 मेजर स्टेप्स, मार्किंग PCR डुप्लीकेट्स और रिकैलिब्रेशन ऑफ क्वालिटी स्कोर। कि क्वालिटी स्कोर्स को आपने एडजस्ट करना है कि जो NGS मशीन्स हैं उनमें भी क्वालिटी जनरेट करते वक्त, क्वालिटी स्कोर जनरेट करते वक्त कुछ इश्यूज हो सकते हैं। तो फिर वो मशीन लर्निंग टूल्स क्या करते हैं, मशीन लर्निंग टूल्स जैसे आपने वेदर के आप यूज़ करते हैं अपने मोबाइल पे, तो वो ऐप कहाँ से कैसे आपको की प्रिडिक्शन करती है कि आज बारिश होगी या नहीं होगी या मौसम कैसा होगा, बेस्ड अपॉन हिस्टोरिकल डेटा ऑफ 100 ईयर्स। थोड़ा सा मशीन लर्निंग के बारे में जस्ट इनकी जो काम है वो बताने के लिए कि मशीन लर्निंग आज से 20-30 साल पहले क्यों नहीं इतनी पॉपुलर हुई जो आज हो गई है। आज आप देखें कि कंप्यूटर साइंस के लोग मशीन लर्निंग में पब्लिकेशन भी कर रहे हैं, मशीन लर्निंग पे काम भी कर रहे हैं, और तकरीबन हर बंदा ही आप सुनेंगे कि ये मशीन लर्निंग पे ये काम कर रहा है। तो आज से 20-30 साल पहले क्यों नहीं पॉपुलर हुई? उस वक्त भी टूल्स थे, उस वक्त भी एल्गोरिदम्स थे मशीन लर्निंग के, लेकिन वो यूजफुल या पॉपुलर इसलिए नहीं हुए कि हमारे पास जो उस वक्त डेटा नहीं था। यानी मशीन लर्निंग टूल के पास जितना डेटा होगा लर्न करने के लिए, जैसे हम ह्यूमन लर्न करते हैं, एक ऑब्जर्वेशन, दूसरी ऑब्जर्वेशन, तीसरी ऑब्जर्वेशन, फिर हम कहेंगे कि बेस्ड अपॉन 2, 3, 4, 6, 10 ऑब्जर्वेशन ये काम अब ऐसा ही होगा। हम भी प्रेडिक्शन कर देते हैं कि मुझे पता है ऐसा ही होगा। तो इसीलिए इसी तरह मशीन लर्निंग टूल्स काम करते हैं। अगर मशीन लर्निंग एल्गोरिदम के पास डेटा कम है तो उनकी प्रेडिक्शन भी एक्यूरेट नहीं होगी। अगर वो ट्रेन किए गए हैं ज़्यादा डेटा के साथ तो वो उनकी एक्यूरेशन भी उतनी ही ज़्यादा होगी। फिर मशीन लर्निंग टूल जब आप उससे कोई डेटा दे के प्रेडिक्ट करवाते हैं तो वो उससे भी लर्न कर रहा है, जस्ट लाइक ह्यूमन कि हम भी हर वक्त लर्न करते हैं, तो मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स और टूल्स वो भी हर वक्त लर्न कर रहे होते हैं। तो ये जो है कैलिब्रेशन ऑफ क्वालिटी स्कोर्स, इस पे भी अब क्योंकि डेटा बहुत ज़्यादा हो गया तो वो रादर दैन के अब हम अगर क्वालिटी स्कोर कम आए हैं तो उसमें जाने के बजाय बैक जाएं या कुछ और काम करें, तो फिर वो ये वाले एल्गोरिदम्स मशीन लर्निंग के हमारे स्कोर को एडजस्ट करते हैं, क्वालिटी ठीक करते हैं, या कुछ आपको रीड्स हाईलाइट कर देंगे कि ये वाले उसमें यूज़ नहीं होंगे। तो ये 2 स्टेप्स करने के बाद हमारे पास अब एक फाइल आ गई है जिसके हम यूज़ कर सकते हैं फॉर वेरिएंट कॉलिंग। अब नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे वेरिएंट कॉलिंग का।
Variant calling is the process of identifying difference between the sequence reads resulting from NGS experiments and a reference genome. यानी आपके पास जो डेटा आया है उसको आपने अलाइन किया है या अलाइन करना है किसके साथ, रेफरेंस जीनोम के साथ। ह्यूमन का है तो ह्यूमन, अगर कोई और कोई एनिमल की स्पीशीज है उसका रेफरेंस जीनोम चाहिए होगा, अगर कोई प्लांट है तो उसका रेफरेंस जीनोम चाहिए होगा। उसके साथ कंपेयर करके फिर आप डिफरेंसेस निकालते हैं कि जो आपका डेटा है यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है। तो जो डिफरेंस होगा वो लाजमी बात है कि वो एक बेस की फॉर्म में डिफरेंस होगा कि फॉर एग्जांपल रेफरेंस जीनोम में जी आ रहा है तो आपके पास टी आ रहा है, रेफरेंस जीनोम में ए आ रहा है तो आपके पास सी आ रहा है। कुछ इस तरह का कुछ डिलीशंस भी हो सकती है कि है ही नहीं, रेफरेंस जीनोम में वो एक बेस है, यहाँ पे नहीं है। तो वो जो डिफरेंस आ रहे हैं उसे हम वेरिएंट्स कहते हैं। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वेरिएंट कॉलिंग कि आप एक चीज को दूसरी चीज जो एक रेफरेंस है एक बिल्ड की गई है आफ्टर स्ट्रगल ऑफ सेवरल ईयर्स, आफ्टर इनकॉर्पोरेटिंग सेवरल इंफॉर्मेशन, तो उसके साथ जब आप कंपेयर करके डिफरेंस निकालते हैं तो दिस इज वेरिएंट कॉलिंग। तो ये उसके टूल्स हैं वेरिएंट कॉलिंग के। ये जैसे मैंने कहा जी ये जीनोम एनालिसिस टूल किट का है, हैप्लोटाइप कॉलर, सोप, स्निप, सैम टूल्स, बीसीएफ टूल्स। ये वेरिएंट कॉलिंग भी एक ऐसा स्टेप नहीं है कि आप एक टूल को देंगे तो वो वेरिएंट कॉलिंग दे देगा। हो सकता है कि आप एक ही टूल से अलाइनमेंट एंड पोस्ट प्रोसेसिंग करने के बाद वेरिएंट्स ले लें या आपको कुछ और भी स्टेप्स करने पड़े। ठीक है, तो मशीन लर्निंग भी एक कॉन्सेप्ट है इंसेंबल लर्निंग का। यहाँ पे जो रिकमेंडेशन लिखी है ये भी लिखी है कि ज्यादा बेहतर ये है कि आप दो वेरिएंट कॉलिंग टूल्स यूज करें, उनके जो वेरिएंट्स आए फिर कोई ऐसी अप्रोच यूज करें कि वो कॉमन वेरिएंट्स आपको बता दे। अब देखें ना, एक टूल ने आपको वेरिएंट्स बताए फॉर एग्जांपल 5 मिलियन, दूसरे टूल ने बता दिए 450 मिलियन। एक तो ये 50.5 मिलियन का डिफरेंस आ गया। दूसरा डिफरेंस क्या हो सकता है कि टूल ए ने जो वेरिएंट्स बताए वो थोड़ी सी पोजीशन डिफरेंट है, टूल बी ने जो बताए वो थोड़ी सी पोजीशन डिफरेंट है। तो अब इन दोनों का रिजल्ट्स आप कंबाइन करके एक फाइल बनाएं, VCF फाइल, जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा है। तो दैट फाइल will be more robust or accurate as compared to कि आपने एक सिंगल टूल यूज किया। मैं इंसेंबल लर्निंग की बात कर रहा था, तो मशीन लर्निंग में भी आजकल जो एक हॉट अप्रोच यूज हो रही है इंसेंबल लर्निंग की, उसमें भी यही है कि एक टूल की प्रेडिक्शन पे ना जाएं आप। टूल है ना, प्रेडिक्शन कर रहा है, गलत भी हो सकती है सही भी हो सकती है। तो अगर एक ही चीज को 2-3 टूल्स रिकमेंड कर रहे हैं तो फिर उसका कॉन्फिडेंशियल लेवल हाई होगा। अभी हम इसमें स्निप एनालिसिस के केस में भी देखेंगे कि जब आप स्निप एनालिसिस करते हैं तो उसमें एक्चुअली यू आर परफॉर्मिंग और यू आर कैलकुलेटिंग, कंप्यूटिंग, आइडेंटिफाइंग पैथोजेनिसिटी ऑफ स्निप्स, कि आपके पास जो स्निप आई है या वेरिएंट आई है उसकी पैथोजेनिसिटी क्या है, उसका इम्पैक्ट क्या है प्रोटीन पे, डीएनए पे, प्रोटीन के स्ट्रक्चर पे, प्रोटीन के फंक्शन पे। तो होल एक्सोम एनालिसिस, अगर तो आप कोई पाइपलाइन यूज कर रहे हैं, सारा का सारा प्रोसेस यूज कर रहे हैं, तो स्निप एनालिसिस का टास्क इसमें भी जो हमारा 5th टास्क था डाउन स्ट्रीम एनालिसिस का वो यही है। तो उसमें भी ये हो जाता है, उसमें भी हम एक टूल यूज नहीं करते। सिफ्ट का आपने नाम सुना होगा, पॉलीफेन का सुना होगा, आई म्यूटेंट है, PhD स्निप है, देयर आर डजन्स ऑफ स्निप एनालिसिस टूल्स। तो जब आप मोर एक्यूरेसी चाह रहे होते हैं, कॉन्फिडेंशियल लेवल ज्यादा हाई चाह रहे होते हैं, ज्यादा अच्छे रिजल्ट देना चाह रहे होते हैं, तो आप एक स्निप को कोई 5, 6, 7, 8, 10 टूल से गुजारते हैं। अगर उस एक स्निप को फॉर एग्जांपल 10 के 10 टूल्स आर डिक्लेयरिंग दैट दिस स्निप इज पैथोजेनिक है, अगर उस स्निप को कुछ टूल्स कह रहे हैं पैथोजेनिक और कुछ कह रहे हैं बिनाइन या नॉन पैथोजेनिक, तो फिर आप उसको छोड़ ही देते हैं कि इट मीन्स कि ये रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं हैं। फिल्ट्रेशन है, फिल्ट्रेशन ऑफ वेरिएंट्स।
आप करते हैं जब आपके पास VCF फाइल आ गई तो उसमें आपने उन वेरिएंट्स को फिल्टर करना है कि डिपेंडिंग अपॉन योर डेटा क्वालिटी या पोस्ट प्रोसेस स्टेप्स या अदर आपके पास कौन सा है। इसमें भी फिल्टर करने के 2 स्टेप्स है, हार्ड फिल्टर्स टू द डेटा एंड वेरिएंट क्वालिटी स्कोर रिकैलिब्रेशन। जैसे हमने कैलिब्रेशन इन केस ऑफ क्वालिटी हमने चेक की थी, तो उस केस में भी हमारे पास रिकैलिब्रेशन किसको करते हैं, क्वालिटी को। तो इस केस में हम वेरिएंट्स की क्वालिटी को हम कैलिब्रेट कर रहे हैं। अगेन जो सेकंड अप्रोच है वेरिएंट क्वालिटी स्कोर रिकैलिब्रेशन, इट इज एक्चुअली अ मशीन लर्निंग अप्रोच। हार्ड फिल्टरिंग, व्हाट इज हार्ड फिल्टरिंग, इज अप्लाइड बाय फिल्टरिंग वाया थ्रेशोल्ड्स फॉर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स इसके लिए बने होते हैं, थ्रेशोल्ड है, इसमें आप वेरिएंट्स की फिल्टर करने के लिए या फाइनल फाइल बनाने के लिए आप एक थ्रेशोल्ड डिफाइन कर देते हैं, खुद डिफाइन करते हैं, टूल को बताते हैं कि ये एक थ्रेशोल्ड है, इसकी बेस पे आप मुझे फिल्टर करके दे दो, फिल्टर कर देता है। लेकिन इन केस ऑफ सेकंड अप्रोच VQSR जो है, on the other hand, relies on machine learning to identify annotation profiles of variants that are likely to be real. It requires a large training data set. जैसे मैंने आपको एक machine learning algorithms की tools की history बताई है कि these machine learning approaches were also available several years ago. लेकिन उस वक्त ये useful नहीं थी क्योंकि डेटा हमारे पास कम था। तो मिनिमम 30 होल एग्जाम डेटा, यानी ये आपने जो VQSR अप्लाई करनी है, वेरिएंट की आपने कैलिब्रेशन करनी है, फिल्टर करना है कोई मशीन लर्निंग टूल यूज करके, तो उसमें वो टूल और एल्गोरिदम जिसके पास 30 होल एग्जाम डेटा होगा, यानी इस डेटा से उससे ट्रेन किया गया है, उससे मशीन लर्निंग टूल को ट्रेन करते हैं कि ये वाली चीज आए तो आपने इससे वेरिएंट को अच्छा लेना है, रखना है, ये वाली इस तरह का कोई डेटा आ जाए तो आपने उसे स्किप कर देना है, डिस्कार्ड कर देना है। तो ये 30 होल एग्जाम डेटा, जैसे मैंने आपको कहा जी होल एग्जाम डेटा सेट यूजुअली मोर देन 100 GB में होता है, तो ये तकरीबन काफी सारा डेटा ये बन जाता है। And well curated sets of known variants. Curated mean manually experts ने variants फाइनल किए हैं। डेटा जैसे आप ब्लास्ट करते हैं तो ब्लास्ट क्या है कि आपके क्वेरी सीक्वेंस को वो डेटाबेस के साथ मैच करता है, ठीक है। डेटाबेस में सारी की सारी इंफॉर्मेशन होती है। इसी तरह ये जो क्यूरेटेड सेट्स ऑफ नॉन वेरिएंट्स हैं, तो नॉन वेरिएंट्स की डेटाबेस मौजूद हैं, उनकी एनोटेशन, उनकी इंफॉर्मेशन, उनकी क्वालिटी एंड सो ऑन, तो आप उसकी बेस पे फिर अपने वेरिएंट्स को वो फिल्टर कर रहे होते हैं यूजिंग VQSR। The accuracy of variant calling is affected by coverage. Tools for assessing coverage information include genome analysis toolkit, bed tools, and so on. Coverage is defined in two contexts. कवरेज एक आप उस वक्त कवरेज की डिफाइन करते हैं जब आप NGS डेटा ले रहे होते हैं या आपने लेना है, आप कहते हैं मुझे 30x कवरेज का डेटा चाहिए, मुझे 70x कवरेज का डेटा चाहिए। ये कवरेज यूज हो रही है कि आपके पास अब डेटा आ गया है, तो उसमें जो कवरेज है वो अफेक्ट करती है वेरिएंट कॉलिंग की एक्यूरेसी पे। I have written coverage definition in both contexts. Coverage is defined as the number of sample nucleotide bases sequence aligned to a specific locus in a reference genome. यानी आपके पास रेफरेंस जीनोम है, अब उस रेफरेंस जीनोम की एक पोजीशन टर्म बोली जाती है इन फॉर्म ऑफ अलाइनमेंट। पोजीशन क्या? कॉलम। यानी अगर आपके पास ये लिखा हुआ ना दी नंबर बिफोर व्हाट द पोजीशन ऑफ टी, जो दी के साथ टी आया पहला, उसकी पोजीशन फॉर एग्जांपल 1 है, एच की पोजीशन 2 है, ई की पोजीशन 3 है एंड सो ऑन।
तो वो एक पोजीशन पे जितने बेसिस आपके अलाइन कर जाएं वो उसकी कवरेज है. दिस कवरेज इज बेस्ड ऑन द कवरेज व्हेन यू obtain the NGS data. The number before the X is the coverage. The average number of times your genome will be sequenced. आप जब कवरेज देते हैं एट द टाइम ऑफ जनरेटिंग NGS डेटा तो आप बताते हैं कि मुझे इतनी कवरेज चाहिए. मीन कि हर रीड की कॉपी मुझे 30 कॉपीज चाहिए, 40 कॉपीज चाहिए, कितनी कॉपी चाहिए, वो एक कवरेज है. वेरिएंट एनोटेशन. व्हाट इज एनोटेशन? एनोटेशन कभी आपने लफ्ज सुना, पढ़ा? व्हाट डज इट मीन बाय? सबमिट करवाना, एनोटेट करवाना कि बाकी ये एक रेफरेंस बन जाए कि वो इस सीक्वेंस हुआ डेटा. आपने पर्टिकुलर सीक्वेंस को एक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिलवाना कि हाँ ये फलां बंदे ने फलां टाइम पे सीक्वेंस किया था. एनोटेशन. अच्छा मैं बताता हूँ. एनोटेट करना डेटा को. आपके पास मसलन आपने, मैंने भी कई फिगर्स देखी होती हैं. अगर एक जीन है ना, एक मार्क लगा होता है कि स्टार्ट को डाउन. अच्छा, दूसरा मार्क आ गया ओपन रीडिंग फ्रेम. तीसरा मार्क आ गया स्टॉप को डाउन. फिर एक मार्क आ गया जीन. अब अगर ये मार्क्स ना लगे हों, लेबलिंग कह लें, लेबलिंग ना हुई हो तो हमें नहीं पता किस डेटा में क्या है. जो हमारे पास डेटा आता है वो तो एक स्ट्रिंग की फॉर्म में होता है. अब बाय सीइंग अ स्ट्रिंग आप क्या बता सकते हैं? कुछ नहीं बता सकते. तो उसको हम लेबल कर देते हैं, मीन एनोटेट करते हैं. हम उसके एक सीक्वेंस के हर पार्ट को हम बताते हैं कि सीक्वेंस का कौन सा पार्ट, उसका क्या नाम है, क्या फायदा है, वो चीज क्या है. तो वो वेरिएंट एनोटेशन मीन कि एक वेरिएंट किस जीन का है और किन किन जीन्स में पाया जाता है, उसका इम्पैक्ट क्या है, वो कौन सी डिजीज कॉज कर सकता है, उसका प्रोटीन स्ट्रक्चर पे क्या इम्पैक्ट होगा, प्रोटीन के फंक्शन पे क्या इम्पैक्ट होगा. एंड देयर मे बी सेवरल यूजफुल इंफॉर्मेशन अबाउट अ सिंगल वेरिएंट. तो इस चीज को हम वेरिएंट एनोटेशन कहते हैं. पोजीशन, पोजीशन हाँ जी आएगी, पोजीशन आ जाएगी उस पर. पोजीशन हाँ जी, कैरेक्टराइजेशन कह सकते हैं, मेटा डेटा कहते हैं. इन आप एक सीक्वेंस, एक वेरिएंट को के बारे में आप इंफॉर्मेशन पढ़ के आप समझ लें कि ये चीज क्या है. ठीक है ना. जैसे सर ने नाम लिया कैरेक्टराइजेशन, या इन टर्म ऑफ, मैं अगर डीबी की बात करूं कंप्यूटर साइंस फील्ड में तो मेटा डेटा बोला जाता है कि डेटा के बारे में इंफॉर्मेशन जो होती है. इसी तरह का कॉन्सेप्ट एनोटेशन का है. एनोटेट करते हैं. एनोटेशन के बगैर आप अपने वेरिएंट को के इम्पैक्ट को आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, आप समझ नहीं सकते, आपको उसका फायदा ही नहीं है. कोरिलेशन ऑफ द वेरिएंट विद नॉन जीनोमिक एनोटेशंस. डेटाबेस के साथ, जैसे मैंने ब्लास्ट की एग्जांपल दी, डेटाबेस के साथ वो सर्च करके उसके सारी इंफॉर्मेशन, जी NCBI में ये इसकी है, क्लिनवार में ये कह रहा है, और बहुत सारी वेरिएंट की DB स्निपिक डेटाबेस है, उसके वहाँ पे ये फला इंफॉर्मेशन है. The severity and impact of these consequences are often indicated using qualifiers low, moderate, high. This is all about the impact of a variant.
आज हम इसका थोड़ा सा करेंगे हैंड्स ऑन। उसमें आपको हीट मैप आपने देखा होगा, या एक कोई और बार कह लें कि यूजुअली ये होता है कि जब आप वेरिएंट का इम्पैक्ट बताते हैं तो उसमें वो आप बताते हैं कि इसका हाई है, लो है या मीडियम है। तो उसके लिए ये टूल्स हैं, सारे के सारे टूल्स फॉर द प्रिडिक्शन ऑफ सिंगल न्यूक्लियोटाइड वेरिएंट्स, टू नेम अ फ्यू, शिफ्ट है, पॉलीफेन 2 है, LRT है, म्यूटेशन टेस्टर है। ये जैसे मैंने आपको बताया, दीज आर ऑल टूल्स फॉर प्रिडिक्टिंग इम्पैक्ट ऑफ स्निप। ये टूल्स का मैंने अपने सेकंड और थर्ड स्लाइड में मैंने एक रिसर्च एरिया लिखा था, कंपैरिजन ऑफ पैथोजेनिसिटी टूल्स, यानी वो टूल जो स्निप या वेरिएंट की पैथोजेनिसिटी प्रिडिक्ट करते हैं, उनका आप कंपैरिजन करें। ये टूल्स हैं वो जिनका आप कंपैरिजन कर सकते हैं। ये भी मैं थोड़ा सा बताऊंगा कि कैसे कंपैरिजन करना है। वेरिएंट एनोटेशन टूल्स आ गए, एनोवार, स्निप, एफ, वेरिएंट इफेक्ट प्रिडिक्टर। जैसे मैंने आपको कहा ना कि ये जो हम सारा आज हम देख रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, एग्जाम डेटा एनालिसिस और होल जीनोम डेटा एनालिसिस, तो ये सारा का सारा उसमें आपको कमांड्स टूल्स यूज करने पड़ते हैं फाइनल रिजल्ट्स लेने के लिए। जी, सोमैटिक जीनोमिक वेरिएशंस, अभी हमने जर्म लाइन म्यूटेशंस के बारे में पढ़ा था। तो देयर इज अ लिटिल बिट डिफरेंस बिटवीन एनालिसिस ऑफ सोमैटिक जीनोमिक वेरिएशंस एंड जर्म लाइन वेरिएशंस। तकरीबन 70 to 80% काम सेम है, सेम वर्क फ्लो है, लेकिन फर्क कहाँ पे आता है, की डिफरेंस क्या है? सिक्वेंसिंग बोथ ट्यूमर टिश्यू एंड अ मैच्ड नॉर्मल सैंपल, दोनों आप सीक्वेंस करेंगे। इन दैट केस आप एक सैंपल लेते हैं, इन केस ऑफ सोमैटिक जीनोमिक वेरिएशंस आप दो सैंपल लेंगे, एक कोरोस्पोंडिंग नॉर्मल कोई टिश्यू का सैंपल लेंगे और एक जो अफेक्टेड टिश्यू उसका सैंपल लेंगे। तो अब उसके बाद फिर ये बाकी सारे स्टेप्स सेम है, यानी पैरेलल अब आप दो काम कर रहे हैं। इन एडिशन टू रेफरेंस जीनोम, रेफरेंस जीनोम वो तो आना ही आना है, अलाइनमेंट आपने दोनों की करनी है। लेकिन इन केस ऑफ जर्म लाइन म्यूटेशंस वी डू वर्क ओनली ऑन अ सिंगल sample, but in case of somatic mutations we work on two samples, एक affected और दूसरा normal. Variant column में what is difference? Where both the tumor and normal process data are utilized to identify, दोनों में आप variants call करेंगे, the variants that are present in the tumor but not in the normal। फिर वो variants call किए, आपने उनको compare किया रेफरेंस जीनोम के साथ, वो आपने अलाइनमेंट करनी है, फिर दोनों की वेरिएंट कॉलम की, फिर आपने देखा कि ये जो अफेक्टेड है वहाँ पे कौन सी वेरिएशंस आ रही हैं और नॉर्मल में वो वेरिएशन हैं या नहीं है। ये आपने एक ये वाली जो वर्क फ्लो था या एक आपने पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देखी थी एक्सोमिक डेटा एनालिसिस की, उसमें और इसमें कोई फर्क आपको नजर आ रहा है? कोई बता सकता है कि क्या फर्क है? सिर्फ ये फर्क है कि दोनों वो पैरेलल साथ चल रहे हैं, नॉर्मल भी है और ट्यूमर भी है, स्टेप्स वही है दोनों में के आप सेम स्टेप्स करेंगे। सेम का ये टूल्स हैं उसके लिए। नंबर ऑफ टूल्स फॉर कैंसर स्पेसिफिक एनोटेशन, कैंसर के लिए कोई स्पेसिफिक ज्यादा काम हो रहा है कैंसर पे, कैंसर जीनोमिक के नाम से एक डोमेन बन गई, एक जैसे बायोइन्फॉर्मेटिक्स आस्ता
जब काम बढ़ा, डेटा आया, तो ये एक डोमेन इवॉल्व हुई, इमर्ज हुई। इस तरह कैंसर के नाम से कैंसर पे मशीन लर्निंग टूल्स भी बनाए जा रहे हैं, कैंसर स्पेसिफिक अलहदा से पाइपलाइंस बन रही हैं, अलहदा से वेबसाइट्स बनी हुई हैं, अलहदा से इनके कंसोर्शियम बने हुए हैं ड्यू टू इम्पोर्टेंस ऑफ दिस डिसीज। स्ट्रक्चरल वेरिएशंस, जर्मलाइन की हमने, सोमैटिक की, स्ट्रक्चरल वेरिएशंस साइज इनका बड़ा होता है एज कंपेयर टू जर्मलाइन और सोमैटिक म्यूटेशंस। Most important are copy number variations. Copy number variation is a frequent form of critical genetic variation that results in an abnormal number of copies of large genomic regions. ठीक है, ये आप लोगों को पता होगा सारा कि क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट्स और कॉपी नंबर वेरिएशंस एक सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ योर जीनोम डिलीट होता है, इंसर्ट होता है, या एक जगह से दूसरी जगह कॉपी हो जाता है। अच्छा जी, क्लिनिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ जीनोमिक वेरिएशंस। One of the most challenging process in analyzing whole exome or whole genome data is the clinical interpretation of the genomic variations. That is important in form of monogenic or complex disorders and personalized treatment of such disorders. It is still a challenging task. Clinical interpretation is actually driving us towards the personalized medicine. पाकिस्तान में भी कुछ काम शुरू हुआ इस पे कि सीक्वेंस बेस रिपोर्ट्स दी जाएं। अभी हम क्लिनिकल रिपोर्ट्स लेते हैं ना, जैसे आप सीबीसी की, एलएफटी की, आरएफटी की या दूसरी रिपोर्ट्स लेते हैं, तो अब कुछ लैब्स ने जो कमर्शियल डायग्नोस्टिक लेबॉर्टरीज हैं उन्होंने इस पे काम शुरू कर दिया है। अभी शायद वो इसको पब्लिक में लेके नहीं आ रहे, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि इसके लिए आपके पास कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर होना बहुत ज़रूरी है, अच्छा कि हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग मशीन्स हो, और दूसरा वो आपके पास एक्सपर्ट्स भी हों। तो इस पे काम कर रहे हैं कि अब हम पब्लिक को सीक्वेंस बेस रिपोर्ट्स दें कि जैसे हमने यहाँ सारा का सारा काम किया है, वो आपका ब्लड सैंपल लेंगे, एनजीएस करेंगे और आपके जीनोम में डिफरेंसेस बताएंगे, उसमें करंट जो आपका जीनोम क्या कह रहा है, क्या डिजीजेस हैं, फ्यूचर में क्या प्रेडिक्शन हो सकती हैं, क्या आप किस डिजीज़ का आप शिकार हो सकते हैं। इस वक्त भी काफ़ी सारा मशीन लर्निंग टूल्स हैं जो करते हैं आपकी फ्यूचर डिजीज़ या हेल्थ के हवाले से प्रेडिक्शन करते हैं। तो इसमें क्लिनिकल जब आप इसकी सिग्निफिकेंस या इंटरप्रिटेशन करेंगे ऑफ वेरिएंट्स, तो लाजिम बात है फिर वो पर्सनलाइज मेडिसिन वाला काम विल बी वेरी वेरी यूजफुल एंड ईजी। इसके लिए क्लिनिकल इंटरप्रिटेशन करने के लिए ये 3 गाइडलाइंस हैं। अमेरिकन कॉलेज ऑफ मेडिकल जेनेटिक्स एंड जीनोमिक्स वालों ने एक डॉक्यूमेंट दिया हुआ है, वो आप पढ़ सकते हैं, सर्च करें, गूगल से मिल जाएगा आपको। तो वो सारा उसके के वेरिएंट्स सारा इस तरह का होगा, तो क्या उसकी आपने कैसे इंटरप्रेट करना है। यूरोजेनेटिस्ट एंड यूरोपियन सोसाइटी ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स गाइडलाइंस हैं। ये 3 किस्म के कंसोर्शियम्स हैं और कह लें कि लेबॉर्टरीज हैं या इंस्टीट्यूशंस हैं जो आपको गाइड करते हैं कि आपने कैसे क्लिनिकल इंटरप्रिटेशन करनी है। These provides standards and guidelines for the interpretation of genomic variations and include evidence-based recommendations on aspects including the use of literature and database and the use of in silico tools, criteria for variant interpretation and reporting। यानी ये जो इन्होंने गाइडलाइंस दी हुई हैं लिटरेचर की बेस पे, फिर डेटाबेस की बेस पे, जैसे हमने वेरिएंट एनोटेशन का अभी हमने देखा, तो इस तरह वो वहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन आपको बताई है, और दूसरा टूल्स यूज करके आपको बताया कि आपने कैसे उसकी इंटरप्रिटेशन करनी है।
Following are required for the interpretation of genomic variants, variant dependent annotation such as allele frequency. उसके लिए 1000 genomes, exact genome, AD ये databases हैं, tools हैं जो यूज होते हैं वेरिएंट की या alleles की frequency calculate करने के लिए. The predictive effect on protein and evolutionary conservation, conserved regions में अगर कोई म्यूटेशन हुई है या वहाँ पे उसका इम्पैक्ट क्या आया एक वेरिएंट का. उसके बाद डिजीज डिपेंडेंट इंक्वायरीज सच एज मोड ऑफ इनहेरिटेंस, डिजीज के पर्सपेक्टिव से क्या उसका इम्पैक्ट है. कोस एग्रीगेशन ऑफ वेरिएंट विद डिजीज विद इन फैमिलीज, फैमिली के अंदर जो एक डिजीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन आ रही है तो उसका आपने इंटरप्रेट करना है. प्रायर एसोसिएशन ऑफ द वेरिएंट जीन विद डिजीज, देन पाथवे एनालिसिस. Pathway analysis has a significant or important role in interpreting variants. तो pathway analysis क्या है कि sometimes ऐसा होता है कि आपको जो जिस जीन में वेरिएंट मिला है वो उसका इम्पैक्ट नहीं है, वो जीन डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है. अब देखना चाहते हैं कि कितने जीन्स हैं जो कि इन कॉम्बिनेशन एक कॉम्प्लेक्स बना के काम कर रहे हैं और किस तरह हमारी वो उस डिजीज को इम्पैक्ट कर रहे हैं. ये पाथवे एनालिसिस बताता है. तो उसके लिए ये डेटाबेसेस हैं, क्लिनवार है, ह्यूमन जीनोम वेरिएंट डेटाबेसेस हैं, ओमिम, कॉस्मिक, सिविक और एक्सीलेंट रिसोर्सेस. ये सारा इंटरप्रिटेशन या वेरिएंट एनोटेशन या आपका इम्पैक्ट फाइंड आउट करने के लिए ये सारी डेटाबेसेस हैं. टूल्स इन इंटरप्रिटेशन ऑफ दीज वेरिएंट्स, ये सारे टूल्स दिए गए हैं. फॉर पर्सनलाइज ऑन्कोलॉजी पर्पस न्यूमरस कैंसर स्पेसिफिक टूल्स एग्जिस्ट. We have only 2 or 3 slides. Then after that, my theory lecture will be finished and we will have tea break. After that, we will have, inshallah, hands-on. Pathway analysis is another powerful component for interpreting genomic variations. It is a group of methods incorporating biological information from public databases to simplify analysis by grouping a long list of genes. नंबर ऑफ टेक्निक्स एंड नंबर ऑफ जीन्स, आप सबका उनका एक कॉम्प्लेक्स को एनालाइज करते हैं कि कैसे वो जीन्स एक दूसरे से इंटरेक्ट करके डिजीज को अफेक्ट कर रहे हैं. ये टूल्स हैं पाथवे एनालिसिस के लिए. जी थैंक यू. ये वाला जो स्लाइड है, दिस स्लाइड इज रेलेवेंट टू एनालिसिस ऑफ स्निप. ठीक है, इसका हम आफ्टर ट्री ब्रेक इसका हैंड्स ऑन करेंगे. मैंने आपको स्निप्स का डेटा लेना डेटाबेसेस से और स्निप टूल को यूज़ करना और क्लिनवार को यूज़ करना, फिर टूल्स की पैथोजेनिसिटी की क्वालिटी देखना, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह पर आफ्टर ट्री ब्रेक करेंगे. थैंक यू वेरी मच.
Excuse me. Let me start. अभी ड्यूरिंग टी मेरे पास एक दो कोलीग्स आए, कहते सर आपका लेक्चर बड़ा मज़ेदार है, तो लेकिन अभी हम जीनोमिक्स तरफ मूव नहीं किया। तो मैंने कहा जी आप अंदर चलें, मैं बताता हूँ। बताना मैंने क्या है कि टेक होम मैसेज है, आप इस पे काम करेंगे ना घर जाके, जस्ट 1 या 2 दिन, उसके बाद नहीं भूलेंगे, एंड इट विल बी वेरी वेरी यूजफुल फॉर यू पीपल। मेरा अपना एक्सपीरियंस है, आई एम एक्चुअली कंप्यूटर साइंटिस्ट, नॉट बायोलॉजिकल साइंटिस्ट, लेकिन मैंने सैंपल लेके सीक्वेंसिंग करवाई, सारे प्रोसेस में से मैंने गुजरा। फॉर एग्जांपल कल कोई बात हो रही थी मोरिंगा ओलिफेरा का, इसका हमने होल जीनोम सीक्वेंसिंग करवा के इसकी जीनोम असेंबली खुद बनाई और अल्हम्दुलिल्लाह एनसीबीआई में हमने सबमिट कर दी है। फ्रॉम पाकिस्तान वी आर द फर्स्ट वन जिन्होंने ये काम किया है। थैंक यू वेरी मच। तो उसमें इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टी हमें आई कि वो प्रोजेक्ट कोई साल का ही था, लेकिन 2 से 3 साल लग गए। एक तो उसमें कोरोना कोविड आ गया, ये भी एक वजह बनी। सीक्वेंसिंग होगी, डेटा उन्होंने सीक्वेंस कर लिया, जो हमारे वेंडर्स थे तो वो हमसे पैसे मांग रहे थे, पैसे इन फॉर्म ऑफ डॉलर ट्रांसफ़र होने थे, एंड हमारा नया पाकिस्तान वो हमें डॉलर बाहर नहीं भेजने दे रहा था। तो इस वजह से काफ़ी देर लगी उसमें। और उसके बाद जब डेटा हमारे पास आ गया, तो जो मैंने 2 मेजर चैलेंजेस कहे हैं इन फील्ड ऑफ बायोमेट्रिक्स, वन इज कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, लैक ऑफ कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, सेकंड इज कैपेबिलिटी। तो हमने लर्न किया, लम्स वालों से हमने हेल्प ली, शायद को नस्ट वालों से भी हमने थोड़ी सी हेल्प ली। बहरहाल वो हम उसमें सक्सेसफुल हो गए, लेकिन उसमें इतना ज़्यादा टाइम लगा। और मैं सारा एक्चुअली वेट लैब के हवाले से बता रहा हूँ, लेकिन इन केस ऑफ बायोमेट्रिक्स अभी मैं दिखाऊंगा आपको, मैक्सिमम 2 महीने का काम होता है, महीने से 2 महीने का काम, और आपकी 2 से 3 इम्पैक्ट फैक्टर की पब्लिकेशन तैयार होती है। लेकिन आप देख लें कि अगर आपने दूसरा वेट लैब वाला प्रोसेस इन्वॉल्व कर लें, तो उसमें सैंपल लें, सीक्वेंसिंग करवाई, कोई एरर्स आ गई, सैंपल ठीक नहीं था, कंटेमिनेशन आ गई, दोबारा साइकिल में चले गए, और फिर पैसा भी लगता है, और फिर जाके आप काबिल होते हैं क्योंकि पब्लिकेशन करवा सके। तो ये एक टेक होम मैसेज है कि आप आज जो टूल लर्न करेंगे घर जाके ज़रूर करें। आप के स्टूडेंट्स या आप खुद इसमें काम कर रहे हैं, वी विल बी ऑलवेज अवेलेबल फॉर कोलैबोरेशन एंड हेल्पिंग योर स्टूडेंट्स। तो उसके लिए हमारे पास मुनासिब सा कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, और अल्हम्दुलिल्लाह कैपेबिलिटी तो हमारे पास ठीक है कि RNA-seq एनालिसिस, एक्सोम एनालिसिस, होल जीनोम एनालिसिस, पाथवे एनालिसिस, फिर उसके बाद मोलेकुलर डायनामिक सिमुलेशन एंड मैनी अदर्स। तो आज ये स्लाइड जो आपको शो कर रही है, ये एक एक्चुअली पेपर है जो पब्लिश हुआ है प्लस 1 में। प्लस 1 आप जनरल जानते हैं, इस वक्त मेरा 4 के करीब इम्पैक्ट फैक्टर है इसका। तो ये भी सारा का सारा काम मैंने उस आर्टिकल से ये इमेज लिया है। इट विल टेक अराउंड 1 मंथ और 45-60 डेज, ज़्यादा से ज़्यादा ये 60 डेज का काम है। और यू विल नॉट हैव टू मूव एनी अदर प्लेस। घर में बैठ के, AC में बैठ के, अच्छे माहौल में बैठ के काम करें, डेटा अवेलेबल है, गाइडेंस भी मिल जाएगी, कोई इतना मसला नहीं होता। तो इसमें फर्स्ट स्टेप क्या है, एक्विजिशन ऑफ स्निप डेटा फ्रॉम DB-SNP एंड प्रोटीन स्ट्रक्चर फ्रॉम PDB। ये आपने सिलेक्ट करना है किसका, एक जीन का, यानी इससे ऊपर काम जो आता है ना, जीन आता है। आपने सबसे पहले जीन सिलेक्ट करना है कि किस जीन की स्निप्स को आपने एनालाइज करना है। ठीक है, जीन फाइनल कर लिया, कोई भी जीन फाइनल हो गया आपका।
उसके बाद आपने NCBI की वेबसाइट पे जाना है, DB SNP डेटाबेस सेलेक्ट करनी है और वो जीन का नाम देंगे तो वो आपको सारी की सारी स्निप्स दिखा देगा। तो उसके बाद जो मेजर काम हो रहा है, जैसे कि आप इस फिगर में यू आर सीइंग दैट देयर आर टू पार्ट्स ऑफ दिस रिसर्च वर्क, वन इज ऑन द लेफ्ट साइड एंड द अदर इज ऑन द राइट साइड। जो लेफ्ट साइड पे काम है ज्यादा, a number of articles, dozens of articles are published on this research work. जीन डिफरेंट हैं, काम या वर्क फ्लो या स्टेप्स यही हैं। मसलन मैंने जीन ए पे काम किया है, आप सेम काम जीन बी पे कर ले, कोई तीसरा बंदा सेम स्टेप्स हैं, सेम वर्क फ्लो है, कोई तीसरा चौथा जीन ले लें, जीन चेंज करना है। तो ये जो राइट साइड वाला है अनट्रांसलेटेड रीजन्स वेरिएंट्स, ये कुछ कोई लोग इंक्लूड करते हैं, कोई नहीं करते, शायद ये लेस इंपॉर्टेंट है। ज्यादा इंपॉर्टेंट वेरिएंट्स हमारे हैं कोडिंग मिससेंस वेरिएंट्स। इनका जो मिससेंस वेरिएंट्स होते हैं या नॉन सिनोनिमस वेरिएंट्स कहते हैं, NS स्निप्स। आप सर्च करें ना गूगल पे, इन सिलिको एनालिसिस ऑफ स्निप्स एसोसिएटेड विद, आगे जीन का नाम लिख दें तो वो यूजुअली सारे के सारे मिससेंस स्निप्स को एनालाइज करते हैं या नॉन सिनोनिमस स्निप्स को एनालाइज करते हैं। तो उसमें आगे दो चीजें आ जाती हैं, एक सीक्वेंस होमोलॉजी और दूसरा स्ट्रक्चरल होमोलॉजी बेस्ड टूल्स बने हुए हैं। नीचे इसने इस स्टडी में 3 tools have been used for analyzing SNPs. When I will be talking about the analysis of SNPs, it means that we are identifying or highlighting impact of SNPs on protein structure or function. तो SIFT है, polyphen 2 है, I mutant suite है। These 3 tools are used in this study. कुछ स्टडीज ने 5-6 टूल्स यूज किए हैं, कुछ ने ज्यादा टूल यूज किए हैं। एक मैंने इसी स्टडी पे काम देखा था, नेचर का वो जर्नल था, उसको 5-6 इम्पैक्ट फैक्टर था, इससे कुछ 2-3 ज्यादा था। साइंटिफिक रिपोर्ट्स जर्नल है, ठीक है। उसमें आथर ने कोई 20 टूल यूज किए हुए थे इसी काम पे। ये जो 3 टूल्स है ना ऊपर वाले, इसी पे। अब देखें ना, ये सीक्वेंस होमोलॉजी का कोई एक टूल नहीं होगा, ज्यादा टूल है। स्ट्रक्चर होमोलॉजी पे 2 टूल्स नहीं है, सिर्फ ज्यादा होंगे। उसने मशीन लर्निंग बेस भी टूल ले लिए, यानी उसने टूल्स के सेट बना दिए कि सीक्वेंस होमोलॉजी के मैंने ये 3 टूल यूज किए हैं, स्ट्रक्चरल होमोलॉजी के मैंने ये 3 टूल्स यूज किए हैं, अच्छा मशीन लर्निंग के मैंने ये 3 टूल्स यूज करने हैं, डीप लर्निंग के मैंने, उसने एक टूल्स का सेट बना लिया, हर सेट में उसने 3-3, 4-4 टूल्स ले लिए। तो इस तरह कोई 15-20 टूल्स बन गए। उन्होंने टूल्स को भी डिस्कस किया, यानी वो एक आपके पास डेटा हो प्लस वॉल्यूम ज्यादा हो तो फिर वो किसी अच्छी जगह पब्लिश भी हो जाता है। अच्छा, ये जो 3 टूल्स हैं, दीज टूल्स विल टेल the pathogenicity of the variants. After having the impact of variants, अब आपने उन variants को देखना है कि ये conserved position में लाए कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। You should have better knowledge कि अगर कोई SNP या variant conserved region में लाए कर रही है तो उसका impact ज्यादा होगा, उसको फिर आगे लेके चलते हैं। यानी तीसरा फिल्टर उसने लगा लिया। अब 3 टूल यूज किए, 3 टूल यूज करके उसने जीन एक है उसकी स्निप्स ली, स्निप्स लेके उसने सिफ्ट, पोलीफेन, आई म्यूटेंट स्वीट्स, ये तीनों की पैथोजेनिसिटी ली। लेने के बाद उसने कॉमन वेरिएंट्स निकाल लिए। कॉमन वेरिएंट्स मीन द वेरिएंट्स डिक्लेयर्ड पैथोजेनिक बाय दीज 3 टूल्स, यानी इन तीनों टूल्स ने जिन वेरिएंट्स को पैथोजेनिक कहा वो फिल्टर कर लीजिए। आप देखेंगे कि इफ यू हैव फॉर एग्जांपल 500 स्निप्स, तो आफ्टर दिस स्टेप्स यू विल हैव ओनली
5, 6, 7 स्निप्स इतनी की रह जाती हैं। उसके बाद फिर उसने कॉन्सेप्ट टूल यूज किया। ये कंजर्व्ड रीजन बताता है स्निप के बारे में कि जो आप स्निप आपने आइडेंटिफाई की है ये कंजर्व्ड रीजन में है या नहीं है। अगर हैं तो फिर वो और थोड़ा सा फिल्टर हो जाती हैं। उसके बाद मोलेकुलर मॉडलिंग की, जो ऊपर सबसे स्टेप्स है, एक्विजिशन ऑफ डीबी स्निप डेटा फ्रॉम डीबी स्निप एंड प्रोटीन स्ट्रक्चर फ्रॉम पीडीबी। ये प्रोटीन स्ट्रक्चर किसका है? उस जीन का, उस जीन की प्रोटीन का जिसको आप स्टडी कर रहे हैं। अब जब आपने मोलेकुलर मॉडलिंग की, व्हाट डज मीन बाय मोलेकुलर मॉडलिंग? कंप्यूटेशनल मॉडलिंग, होमोलॉजी मॉडलिंग, यानी एक ऐसा सीक्वेंस जिसका मॉडल या प्रोटीन 3D स्ट्रक्चर इज नॉट अवेलेबल, देन यू चूज मोलेकुलर मॉडलिंग टेक्निक। पीडीबी क्या है? प्रोटीन डेटा बैंक, जिसमें प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स अवेलेबल हैं, आइडेंटिफाइड थ्रू एक्सपेरिमेंट्स, जैसे एनएमआर है, क्रिस्टलोग्राफी है। ये एक्सपेरिमेंट्स की बेस पे जो प्रोटीन स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई किए जाते हैं वो उसकी डेटाबेस प्रोटीन डेटा बैंक है। ये जो मोलेकुलर मॉडलिंग है, आप देखें ना, आपके पास एक प्रोटीन सीक्वेंस है, उसमें एक जगह पे वेरिएशन है, अब उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा एज कंपेयर टू वाइल्ड टाइप अलील कह लें या प्रोटीन सीक्वेंस कह लें या ओरिजिनल सीक्वेंस कह लें। तो अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाने के बाद जो आप मॉलिक्यूलर मॉडलिंग कर रहे हैं वो आप उस सीक्वेंस की कर रहे हैं जिसमें म्यूटेशन आई है, या म्यूटेंट सीक्वेंस की कर रहे हैं, आप ऐसा कह लें। यू आर एक्चुअली डूइंग मोलेकुलर मॉडलिंग ऑफ म्यूटेंट सीक्वेंस। अब आप कंपेयर करेंगे, देयर आर नंबर ऑफ टूल्स which provide you facility of visualization by rotating protein structure position। फॉर एग्जाम्पल 206 पे म्यूटेशन है या उसका स्ट्रक्चर या उसमें किस तरह का लग रहा है, और जो ओरिजिनल सीक्वेंस था उसका स्ट्रक्चर आपको पीडीबी से मिल गया, तो वो आप उसका स्ट्रक्चर कंपेयर करेंगे। उसके बाद फिर आप मोलेकुलर डायनामिक सिमुलेशन यूज करके आप उसका जो वेरिएशन आई है या जो म्यूटेशन अकर हुई है उसका आप थ्रू सिमुलेशन इम्पैक्ट स्टडी करते हैं। कि वैसे तो अगर हमारे जिस्म के अंदर को वेरिएशन आए तो हम किसी न किसी डिजीज का शिकार हो जाते हैं, ठीक है। अब उसको सिमुलेट करना है आपने कि अगर जीन के फलां पोजीशन पे इफ देयर इज सम म्यूटेशन, देयर इज सम वेरिएशन, तो क्या इम्पैक्ट होगा, तो वो फिर सिमुलेशन आपको बताती है। तो ये स्टेप्स हैं, कॉमन स्टेप्स हैं तकरीबन तमाम स्टडीज में जो कि हम करते हैं। मैं इसमें इन टुडेज टॉक आई विल टेल यू द मेथडोलॉजी टू कलेक्ट डेटा अबाउट SNPs and usage of SIFT or polyfen, and then I will show you the CleanWar database that have reference SNPs or validated SNPs for analyzing pathogenicity tools. NCBI first let me show the SIFT tool, SIFT. SIFT predict effects of non-synonymous missense variants। इसे आप ओपन कर लें। यहाँ पे SIFT non-synonymous सिंगल न्यूक्लियोटाइड वेरिएंट्स, ये वाला आपने इस टूल को ओपन कर लें। ये आ गया इसका इंटरफेस, वेयर यू विल एक्चुअली गिव योर SNP डेटा।
अब यहाँ पे आपने डेटा देना है, आपने स्निप देनी है विच यू आर गोइंग टू एनालाइज, विच यू आर गोइंग टू हाईलाइट इट्स इम्पैक्ट ऑन प्रोटीन स्ट्रक्चर और फंक्शन। किस फॉर्मेट में देनी है, ये उसने सैंपल फॉर्मेट दिया हुआ है। इसमें 1 फर्स्ट जो डिजिट है इज शोइंग द क्रोमोसोम नंबर। These are comma separated values. First value, first digit or numerical value is showing chromosome number. Second position कि क्रोमोसोम नंबर 2 पे, 3 पे, 4 पे कोई भी है, उसकी किस पोजीशन पे चेंज आई है। थर्ड जो न्यूमेरिकल वैल्यू है दैट शोज फॉरवर्ड ओरिएंटेशन और रिवर्स ओरिएंटेशन। 4th and 5 ये वाइल्ड टाइप अलील और म्यूटेंट अलील के लिए है कि पहले सी था, अब वहां पे जी आ गया। अगर इफ वी आर टॉक अबाउट फर्स्ट रिकॉर्ड, सेकंड में क्या था कि क्रोमोसोम नंबर 1, देन पोजीशन, देन फॉरवर्ड ओरिएंटेशन, देन वहां पे म्यूटेशन क्या आई, वेरिएशन क्या आई कि पहले ए था अब जी आ गया। थर्ड में क्या हुआ, पहले ए था अब सी आ गया। अब ये वैल्यूज हमने कलेक्ट करनी है शिफ्ट को रन करने के लिए, ठीक है। इसके लिए आप एनसीबीआई पे जाएं, यहां से आपने डीबी स्निप डेटाबेस सिलेक्ट करनी है। ये स्निप डेटाबेस आ गई। यहाँ पे कोई भी जीन का नेम दे दें। फॉर एग्जाम्पल आई विल गिव CYP11B2। बताएं। उसको को नाम में BI 3 BNIP3। ये देखें जी, व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ स्निप्स रिपोर्टेड टिल नाउ इन दिस जीन, 6616। ठीक है। वी हैव टू कलेक्ट ओनली मिससेंस स्निप्स और वेरिएंट्स। आप यहाँ पे लेफ्ट साइड पे देयर आर फिल्टर्स दैट यू कैन अप्लाई। मैं यहाँ पे मिससेंस को सिलेक्ट कर लेता हूँ कि मुझे मिससेंस वेरिएशन दिखाएं इस जीन में। Now there are only 159 genes. तकरीबन 7,000 जो स्निप्स थी वो कम हो के मिससेंस वेरिएंट्स इसमें 159 है। कोई दूसरे जीन्स होंगे तो उसमें मिससेंस वेरिएंट्स इससे ज़्यादा रिपोर्टेड हुए होंगे। अच्छा, इसमें ये सारा पेज आपको मिससेंस वेरिएशन दिखा रहा है सारा का सारा। जिंदगी करते जाएं, नेक्स्ट करते जाएं। ये उनके फील्ड्स हैं। अगर आप देखें फर्स्ट वन, ये वाला जो है, ये वाला RS1050740, it is ID of this variant. Reference SNP, RS stands for reference SNPs। आगे उसके कोई numerical values जो एक उसने ID बनाया हुआ है। जिस तरह accession ID आप जानते हैं in case of DNA, that uniquely identify a protein or DNA sequence, accession ID. In case of DB SNP database की फॉर्म में आपको RSID मिलेगा। उसके बाद वेरिएंट टाइप है, फिर एलील्स बताए हैं कि T था, A और C रिपोर्ट हुआ है कि नहीं। एक स्टडी में T की जगह पे एक रिपोर्ट हुआ है, किसी दूसरी स्टडी में
टी की जगह पे सी रिपोर्ट हुआ है। क्रोमोसोम नंबर हैं। इन केस ऑफ 38 रेफरेंस जीनोम 10 क्रोमोसोम और उसकी पोजीशन दी गई है। वही क्रोमोसोम या पोजीशन इन केस ऑफ 37 रेफरेंस जीनोम वो पोजीशन दी गई है, एंड सो ऑन। लेकिन अगर आप इस RSID को क्लिक करें, यू विल गो टू द नेक्स्ट पेज हैविंग डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वेरिएंट। ये अब DB स्नीप की डेटाबेस में आप एंटर हो गए हैं, इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन है। तो ऑल अलील्स आर रिपोर्टेड इन द फॉरवर्ड ओरिएंटेशन। देखिए ये वाले जो पैरामीटर हैं आपको आज के लेक्चर में कह लें कि 15-20 मिनट में मिल रहे हैं, और हमने काफी स्ट्रगल के बाद ये सब कुछ फाइंड आउट किए थे। फॉरवर्ड ओरिएंटेशन, जहां पे मैंने आपको इन केस ऑफ शिफ्ट दिखाया था थर्ड पैरामीटर, ये वाला जो मैंने सिलेक्ट किया हुआ है 1 विल बी इन केस ऑफ फॉरवर्ड ओरिएंटेशन एंड 0 विल बी इन केस ऑफ रिवर्स ओरिएंटेशन। अगर वहां पे जो हमने इस पेज पे देखा है फॉरवर्ड ओरिएंटेशन, अगर यहाँ पे ये लिखा होता कि ये रिवर्स ओरिएंटेशन में स्निप्स हैं ये, तो फिर हमने वहां पे 0 लिखना है। यहाँ पे अब मैं आपको शिफ्ट के लिए पैरामीटर लिस्ट बना के दिखा रहा हूँ कि कैसे आपने डेटा कलेक्ट करना है। अच्छा, अगर मैं नोटपैड फाइल ओपन कर लूं, साथ साथ मैं ये लिखता जाता हूं। अच्छा, एक और देखें, इसमें मैं अगर बैक आऊं तो जो मैंने आपको पहले बताया था, शिफ्ट इज सपोर्टिंग ओनली 37 रेफरेंस जीनोम, नॉट 38। अब हमने वहां से वेबसाइट से 37 जीनोम के रेलेवेंट डेटा कलेक्ट करना है। ये 38 का दिया हुआ है। अच्छा, अगर मैं इसकी क्लासिक साइट में जाऊं, कुछ डेटा वहां से मिल जाता है। ये मिल गया आपको 37 का भी। ये जो इंटीग्रेटेड मैप्स, ये वाला जो कॉलम आपको नजर आ रहा है, ये वाला जो मैंने सेलेक्ट कर लिया है, इसके नीचे जो टेबल है दैट इज शोइंग डेटा ऑफ 37 रेफरेंस जीनोम एज वेल। क्रोमोसोम नंबर क्या है? 10। पोजीशन ये है। पोजीशन को मैं कॉपी करता हूं यहां से। एक दफा मैं कर लूं, फिर दोबारा मैं आपको सारा करके दिखाऊंगा। क्रोमोसोम नंबर 10, कॉमा डाला, पोजीशन मैंने वहां से ले ली। ओरिएंटेशन इसकी क्या थी? फॉरवर्ड। 1 आ गया। अलील क्या थे इसके? अच्छा, मैं बैक आ जाता हूँ, वहां पे वो टॉप पे T&A। अच्छा, अगर मैं यहां से आया था जी, मैं स्विच टू क्लासिक साइट, इसको क्लिक किया तो हम इस पेज पे आ गए थे।
ये भी लिखा हुआ है रेफ स्निपलीज AGT और उसके बाद एंसेस्ट्रॉल ए लिखा हुआ है। अच्छा जी, ये T to A आप लिख लें। T, A, यही फॉर्मेट है स्विफ्ट का। स्लैश है। अब ये मैंने एक स्निप के पैरामीटर सेलेक्ट किए हैं। अब आप इसको शिफ्ट को दे के शिफ्ट को रन कर लेते हैं। हम उस वक्त आपको कोई दूसरा कर लेते हैं डिस्कस। यहाँ कॉपी कर ले और अपलोड फाइल कंटेनिंग क्रोमोसोम कोऑर्डिनेट्स एंड न्यूक्लियोटाइड सब्स्टिट्यूशंस, या एक आप फाइल बना लें। जैसे मैं अब ये फाइल बना रहा हूँ ना, ये वाली, ये मैं फाइल बना रहा हूँ। ये मैंने एक स्निप का लिया, फिर एंटर की प्रेस करें, दूसरी स्निप के लिखें, फिर तीसरी के, फिर चौथी के। इस तरह आप एक फाइल बना के भी आप फाइल अपलोड कर सकते हैं स्विफ्ट के इंटरफेस पे। तो अभी आप इसको कॉपी करके आप यहाँ पेस्ट कर दें इस बॉक्स में। बाकी डिफॉल्ट पैरामीटर्स रहने दें, या आप इसमें से देखें अगर आपको कुछ चाहिए, और सबमिट बटन क्लिक कर दें। मिस सेंस जी, मिस सेंस जी जी। दिस इज वेरी लेबोरियस जॉब। ये अपने पॉइंट सही हाईलाइट किया। इसमें मेहनत करनी पड़ती है। जैसे मैंने बैठेंगे आप एसी वाले कमरे में हाँ जी, इसमें मेहनत करनी पड़ेगी। उसका तो आप यानी स्टूडेंट साथ इन्वॉल्व कर सकते हैं। असाइनमेंट दे देंगे, ये जीन्स डिवाइड कर दें तो वो जो काम महीने में होना वो हफ्ते में हो जाएगा। तो ये काम करना पड़ेगा। ये रिजल्ट्स आ गए जी स्विफ्ट ने। लकीली स्विफ्ट ने जल्दी रिजल्ट्स दे दिए हैं, लेकिन समटाइम्स ये भी तो एक सेटअप है ना। हमने क्वेरी की, दूसरे लोग पूरी दुनिया से क्वेरी कर रहे हैं, तो फिर वो क्वेरी लाइन में लग जाती है। हो सकता है आपको घंटे बाद रिजल्ट्स मिले, या आपको इससे भी थोड़ी सी ज़्यादा देर लग जाए। अब यहाँ पे ये रिजल्ट्स आ गए हैं। हमारे लिए काम की चीज़ ये है ज़्यादा। टॉलरेटेड 100%, डैमेजिंग 0। What does it mean by this variant is benign? इसका कोई नुकसान नहीं है, नॉन डैमेजिंग है, टॉलरेटेड है। अब आपने एक एक्सेल फाइल बना लें, वर्ड में टेबल बना लें, हेडिंग दें, शिफ्ट के रिजल्ट्स आ रहे हैं, साथ वो RSID लिखते जाएं और उसके साथ रिजल्ट्स लिखते जाएं, कि और पैरामीटर भी आपके जहन में आ सकता है जो कि आपको बाद में हेल्पफुल रहे रिजल्ट्स को एनालाइज करने में। तो इस तरह आप एक फाइल बनाते जाएंगे। ये अभी हम एक टूल के रिजल्ट्स ले रहे हैं। मैंने बताया था, मैंने उसी वक्त ही बताया था कि वाइल्ड टाइप एलील T है, A भी रिपोर्ट हुआ है, C भी रिपोर्ट हुआ है। नहीं नहीं नहीं, वो फिर आपको दूसरा बनाना पड़ेगा, फिर आपको C के साथ बनाना पड़ेगा। हाँ, C का करना पड़ेगा। वो फिर आपको अपने आर्टिकल में या थीसिस में बताना पड़ेगा कि ये एक अलील के कोरस्पॉन्डिंग 2 रिपोर्ट हो गए हैं। वो अलहदा से आप बता देंगे।
ये वाला ये वाला, ये फॉरवर्ड और रिवर्स ओरिएंटेशन के लिए है। ये मैंने यहाँ आपको दिखाया था कि जब आप इस पेज पे आए ना, ये ऊपर सबसे लिखा हुआ है ऑल लीड्स आर रिपोर्टेड इन द फॉरवर्ड ओरिएंटेशन। तो आपने फॉरवर्ड ओरिएंटेशन की जगह पे वहां पे 1 लिखना है। अगर यहाँ पे 0 ओरिएंटेशन होता फिर आपने वहां पे 0 सॉरी रिवर्स ओरिएंटेशन होता तो फिर आपने वहां पे 0 लिखना था। 1 0 जी, यानी व्हेन यू एक्चुअली कलेक्टिंग पैरामीटर्स फॉर शिफ्ट, तो पहले क्या आएगा, क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम पोजीशन, फिर फॉरवर्ड और रिवर्स ओरिएंटेशन के लिए 1 और 0, फिर उसके बाद अलीज यानी वो स्लैश डाल के वाइल्ड टाइप स्लैश म्यूटेंट एलील। तो ये आप जो आपका क्वेश्चन था कि 159 स्निप्स के लिए सारा काम करेंगे। जी जी, वो उस बॉक्स में आप पेस्ट भी कर सकते सारे के सारे एक दफे बना के। नहीं, ये जो ना शिफ्ट ये ऐसे बताता है कि जी अलग-अलग वो देगा, सारा अलग-अलग देगा। हाँ जी, ये वो आपको ऐसे वो टेबल बना के कुछ स्पेस देगा या लाइन लगा के तमाम वेरिएंट्स के रिजल्ट्स दे देगा, वो ऐसे इकट्ठे दे देगा। फिर मैं एक दफा दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ये मैंने जीन का नेम कॉपी कर लिया। अब मैं सारी विंडोज क्लोज कर रहा हूँ। NCBI पे जाना है। यहां से आपने डेटाबेस स्निप सिलेक्ट करनी है। Here you will write the name of gene. यहाँ पे मिस सेंस से पहले का सिलेक्ट उसने लिया हुआ है, इसलिए 59 शो कर रहा है। अगर मैं मिस सेंस को अनसिलेक्ट कर दूं तो वो टोटल वेरिएंट्स शो कर देगा जो कि उसने पहले हमने देखे थे। अच्छा, मैंने दोबारा मिस सेंस को क्लिक किया। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक फाइल में, यानी रादर देन टू रिमेन ऑन दिस पेज, या आपने बाद में काम करना है या आपको एक फाइल में रिजल्ट चाहिए, तो ये जो ना सेंड टू, इसको क्लिक करें, ये सारे के सारे कॉपी कर देगा या फाइल बना लें। फाइल डाउनलोड 159 आइटम्स, फॉर्मेट, ये समरी एक्सएमएल टैब, मसला समरी लेके देख लेते हैं। सॉर्ट बाय स्निप आईडी, यानी वो जो RS मैंने अभी बताया, क्रिएट फाइल। ये उसने सारे दे दिए, वहां पे आपके पास एक फाइल में आ गया है, यानी बार बार आपका उस पेज पे नहीं जाना पड़ेगा। आप इस नोटपैड फाइल को में से वो लेके तो काम कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हमने RSID को क्लिक किया था। RSID, ये तमाम स्निप्स का अपना अपना RSID होता है, रेफरेंस स्निप ID। RS स्टैंड्स फॉर रेफरेंस स्निप। ये आप नीचे देख रहे हैं, ये दूसरी स्निप आ गई, यूज का ID है, तीसरी का ID है। तो इस तरह आपने इसे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको ओरिएंटेशन का पैरामीटर मिल जाएगा, 1 लगाना या 0 लगाना है।
ये आपको अलीस मिल गए हैं 37 बिकॉज शिफ्ट स्पोर्ट्स 37 रेफरेंस जीनोम, तो 37 का डेटा आपको यहां से मिल जाएगा। ये क्रोमोसोम नंबर, ये उसकी पोजीशन और अलीस भी मिल गए हमें, उसकी ओरिएंटेशन भी मिल गई। ये 4-5 पैरामीटर्स है। आप एक ही दफ़ा एक फाइल बना के भी शिफ्ट को दे सकते हैं, उसके बाद आप बैठ के रिजल्ट्स को थोड़ा सा आप ऑर्डर कर लें। अच्छा, एक और इसका व्यू है यहाँ पे, जीन व्यू। ये हम इसकी क्लासिक वेबसाइट पे आए हुए हैं, यहां से जीन व्यू को क्लिक करें तो ये इनका एक ओल्डर एक वेबसाइट थी जो एनसीबीआई कई सालों से कह रही थी कि हम इसे अब डिलीट कर देंगे, लेकिन अभी तक ये दिखा रही है। जीन व्यू को क्लिक किया तो उसने क्लिनिकल सोर्स आपने स्निप का लेना है, इन जीन रीजन लेना है, अच्छा सी स्निप लेनी है, या हैज फ्रीक्वेंसी कुछ लेना है, डबल हिट सोन। तो आप कर लें जी मुझे कोडिंग, सी फॉर कोडिंग स्निप, आप गो कर दें। अब आपको ये एक नए पेज पे लेके आ जाएगा जिसमें वो तमाम स्निप्स एक टेबुलर फॉर्मेट में आपको दैट इज मोर रीडेबल एज कंपेयर टू द होम पेज ऑफ एनसीबीआई। तो यहाँ पे वो आप ऊपर देख सकते हैं, यहाँ भी आपको काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। क्रोमोसोम पोजीशन है, एमआरएनए पोजीशन है, ये आरएसआईडी है, उसके बाद इसका फंक्शन क्या, कौन सी स्निप है, मिससेंस है, डीबी स्निप, अलील, वेरिएंट, ये सारे आपको वो दिखा रहा है। अमीनो एसिड पोजीशन, यहाँ से भी आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। अच्छा जी, अब मैं आपको पॉलीफेन का दिखाता हूँ। पॉलीफेन 2, ये इसका इंटरफेस है। इसमें भी आपको हर स्निप के लिए डेटा लेना पड़ेगा। या तो हमें प्रोटीन और स्निप आइडेंटिफायर चाहिए, या आप प्रोटीन सीक्वेंस इन फास्टा फॉर्मेट देंगे, उसके बाद पोजीशन देनी है, वाइल्ड टाइप अलील है, फिर म्यूटेंट अलील है। तो कुछ आप कमेंट्स या अपनी कोई याद रखने के लिए चीज़ क्वेरी डिस्क्रिप्शन में लिखना चाहते हैं तो साथ लिख दें, अदरवाइज दिस फील्ड दैट इज द लास्ट फील्ड, क्वेरी डिस्क्रिप्शन इज ऑप्शनल। तो इसके पैरामीटर्स कैसे लेने आपने, ये वहां पे हमने क्रोमोसोम कोऑर्डिनेट्स लिए थे इन केस ऑफ शिफ्ट, इन केस ऑफ पॉलीफेन हमने प्रोटीन का डेटा लेना है। यहाँ पे थे हम, मैं फिर अगेन उस पेज पे आ गया हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा इसमें रिविजिट कर लें। इसको क्लिक किया आपने, हमें अब आप पॉलीफेन देख रहे हैं ना, प्रोटीन सीक्वेंस चाहिए, पोजीशन चाहिए, अलील चाहिए। तो उसके लिए टी और ए, टी और सी तो हमारे पास है। पोजीशन अच्छा, क्लासिक पेज पे चले जाएं, क्लासिक, स्विच टू क्लासिक साइट।
ये एक पार्ट है जो यहाँ हमारे पॉलीफेन के लिए इंपॉर्टेंट है। ये वाला यहाँ पे लिखा हुआ है, हमें प्रोटीन का डेटा चाहिए ना यहाँ पे इन केस ऑफ पॉलीफेन। तो एक्सेक्शन आईडी है प्रोटीन का, इसको राइट क्लिक करके आई ओपन इन एन अदर विंडो। अच्छा, तो पोजीशन क्या है 143, मैं यहाँ पे दे देता हूँ 143। एलीड्स क्या थे प्रोटीन के, आर यानी वो दोनों सेम ही हैं। तो चले मैं अगर कोई और सिलेक्ट करूं वो दिखा दूं। ये मैं दूसरी स्निप पे जा रहा हूं। जस्ट टू शो सेम आ गया ना, तो आर की जगह पे कोई और भी आ सकता है। हाँ जी, देखिए ना यहाँ पे डिफरेंट आ गया ना, एल क्यू आ गया। तो पोजीशन इसकी 113। यहाँ पे आप एल सिलेक्ट करें और क्यू आया था, क्यू यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करना उसने दिए हुए हैं अम्यूनो एसिड दोनों, A1 अम्यूनो एसिड 1, A2 अम्यूनो एसिड 2, यानी फर्स्ट वाला आपने वाइल्ड टाइप, सेकंड वाला म्यूटेंट, वो दोनों आपने सिलेक्ट कर लिए, पोजीशन दे ली। अब आपने यहाँ पे सीक्वेंस देना है। तो सीक्वेंस जैसे मैंने आपको यहाँ दिखाया था कि ये वाला जो आईडी, इसे आप राइट क्लिक किया, मैंने एक नए विंडो पे चला गया, यहाँ पे वो अब दे रहा है फास्टा फॉर्मेट। इसको कॉपी कर लें आप, ये वाला यहाँ से आपने कॉपी करना है। फास्टा फॉर्मेट मीन पॉलीफेन क्या कह रहा है, फास्टा फॉर्मेट में चाहिए। तो हाउ पॉलीफेन विल रिकॉग्नाइज दैट द गिवन सीक्वेंस इज इन फास्टा फॉर्मेट विद दिस ग्रेटर देन सिंबल, वो हमने सारा लेना है। ये आ गए। अब ये हमारे पैरामीटर पूरे हो गए हैं। क्वेरी सबमिट कर दें, ये बटन क्लिक कर दें, वो आपकी मर्जी है, वो ऑप्शनल है वो। इसी तरह ये थोड़ी देर बाद रिजल्ट देखते हैं इसके। इसी तरह आई म्यूटेंट है। एक मैंने टूल आपको दिखाया जिसमें आपने डीएनए सीक्वेंस की बेस पे आपने पैरामीटर दिए। एक मैंने पॉलीफेन दिखा दिया आपको जिसमें आपने प्रोटीन सीक्वेंस की बेस पे आपने डेटा दिया है। तो इसी तरह ही आप 5, 6, 7 जब टूल यूज़ करते हैं तो मोर एंड लेस थोड़े से फ़र्क के साथ सेम पैरामीटर होते हैं। तो बाकी आप काम खुद कर सकते हैं। आप गूगल पे सर्च करेंगे इन सिलिको एनालिसिस ऑफ NS SNPs एसोसिएटेड विद, आगे जीन का नेम लिखेंगे,
आपको काफ़ी सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको यहाँ पे एक सारी पेडागोजी और प्रोटोकॉल शो किया था फॉर एनालाइजिंग स्निप्स के स्टेप्स क्या हैं, आप कोई भी ले लें उसमें आप काम कर सकते हैं। ये रिजल्ट्स आ गए जी इसके, कंप्लीटेड व्यू ये आ गए। दिस म्यूटेशन इज प्रिडिक्टेड टू बी प्रोबेबली डैमेजिंग। अब आप इसकी जो हीट मैप आप देख रहे हैं, ये उसकी सीवियरिटी लेवल शो कर रहा है, हीट मैप जो है। यानी अगर आप लेफ्ट साइड से चले तो वो ग्रीन है, उसके बाद रेड होता जाता है, तो एंड पे यानी इसकी वो 0.99 आगे वो स्पेसिफिसिटी सेंसिटिविटी बता रहा है, तो ये डैमेजिंग है। आप इसी का डेटा लें, शिफ्ट को दें, वो देखें वो क्या कहता है। फॉर एग्जांपल अगर तो उसने कह दिया पैथोजेनिक है तो फिर तो ठीक है, आप आगे चलेंगे। अगर उसने कह दिया नहीं ये वाला स्निप नॉन पैथोजेनिक है तो फिर आप छोड़ देंगे। जैसे मैंने पहले बात की, तो यूजुअली आप 5-6 टूल्स यूज करके स्निप्स को एनालाइज करते हैं, और वो स्निप्स लेते हैं जिनको या तो तमाम टूल्स ने पैथोजेनिक कह दिया है या मैक्सिमम ने पैथोजेनिक कहा है। फिर आगे आप उसका फर्दर एनालिसिस करते हैं। जैसे मैंने आपको पहले कहा था, कौन सा यूज कर लें, उसकी मॉडलिंग करें, फिर उसके बाद उसकी मोलेकुलर डायनामिक सिमुलेशन कर लें। डैमेजिंग डैमेजिंग उसमें जाने की जरूरत नहीं है। एक हीट मैप देखें, वो देखना, अगर ये जो ब्लैक बार हीट मैप पे आ रही है वो बिल्कुल एंड से थोड़ी सी पहले है, थोड़ी सी आगे भी हो सकती थी, सीवियरिटी लेवल और उसका बढ़ गया, लेकिन आप इसे अपनी स्टडी में डैमेज लिख सकते हैं। ग्रीन तक उसने भी डैमेजिंग नहीं कहना था इसे, हाँ उसने भी नहीं कहना था। वो ग्रीन बॉल क्रॉस किया तो वो डैमेजिंग की तरफ मूव करना शुरू किया उसने। अच्छा, अब ये शिफ्ट पॉलीफेन टू आई म्यूटेंट, जैसे मैंने आपको पहले कहा, एक हमने सारा देखा कि आपने खुद सीक्वेंसिंग करवाई है। सीक्वेंसिंग करवाने के बाद आपने वेरिएंट्स कॉल किए हैं या आइडेंटिफाई किए हैं। अब वेरिएंट कॉल और आइडेंटिफाई करने के बाद आप ये स्टेप करते हैं जो हम कर रहे हैं, ठीक है। वो जो पाइपलाइंस हैं वो आपको करके दे देती हैं। आप देखेंगे उसमें शिफ्ट के रिजल्ट बताए होंगे, आई म्यूटेंट या पॉलीफेन के रिजल्ट बताए होंगे। एक वो था एरिया, रिसर्च एरिया, जो मैंने आपको पहली या दूसरी स्लाइड में दिखाया था कि टुडे वी विल वर्क ऑन 3 रिसर्च एरिया। एक आपके पास रॉ डेटा है, आपने वेरिएंट कॉल किए, और उसमें आपके पास 2 अपॉर्चुनिटीज होती हैं कि आप यूनिक स्निप आपको मिल जाती है, ऐसी स्निप मिल जाती है जो पहले रिपोर्ट नहीं हुई एज ए डैमेजिंग, तो उस पर एक पब्लिकेशन हो सकती है, या आप एक जीन ही न्यू आइडेंटिफाई कर लेते हैं वो सारा प्रोसेस फॉलो करने के बाद। और दूसरा, ये एक स्टैंड अलोन है। इन केस ऑफ दिस रिसर्च वर्क यू डोंट हैव टू गो टू वेट लैब। उस केस में तो वेट लैब में आपने जाना है, या आपने होल एक्सोम एनालिसिस करना है या होल जीनोम, वो सैंपल लिया, उसका आपने एनजीएस करवाया, फिर बाकी सारा काम हुआ। इस केस में आपके पास डेटा अवेलेबल है, टूल्स अवेलेबल हैं, आप काम कर सकते हैं। अच्छा, तीसरा काम ये है कि अब आपने देखना है कि शिफ्ट है
आई म्यूटेंट है, पॉलीफेन है, PhD स्निप है, काफी सारे टूल्स हैं। उनमें से कौन सा टूल ज्यादा एक्यूरेट है? ये टूल्स का कंपैरिजन इज वन ऑफ द गुड स्टडी। इसमें वैसे तो जो अच्छी स्टडी होती है उसमें आपने 3 पर्सपेक्टिव से उनका कंपैरिजन करना होता है। एक कंपैरिजन ऑफ मेमोरी यूज्ड बाय द टूल्स। फॉर एग्जांपल स्विफ्ट अगर 7 GB मेमोरी यूज कर रहा है तो पॉलीफेन 5 GB यूज कर रहा है, आई म्यूटेंट 3 GB यूज कर रहा है। तो इस तरह आप एक कंपैरिजन देते हैं कि मेमोरी के हिसाब से कौन सा टूल ज्यादा एफिशिएंट है। उसके बाद एफिशिएंसी, जैसे भी आपने देखा स्विफ्ट ने 4 रिजल्ट दे दिया, पॉलीफेन ने भी दे दिया, लेकिन फर्क होगा दोनों में फिर भी, तो वो आप एफिशिएंसी। तीसरा एक्यूरेसी के हिसाब से, ठीक है, कि कौन सा टूल ज्यादा एक्यूरेट है। अब ज्यादा जब हम बात करते हैं कि विच टूल इज मोर एक्यूरेट, इट मींस वी शुड हैव सम रेफरेंस डेटा। रेफरेंस डेटा मीन कि हमारे पास ऐसी स्निप्स होने चाहिए जो कि या तो ये डिक्लेयर्ड हैं कि दीज स्निप्स आर पैथोजेनिक, प्रूवन, फिर हम वो प्रूवन स्निप्स इन टूल्स को देंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास 100 पैथोजेनिक स्निप्स हैं, ठीक है। अब हमने 100 दी स्विफ्ट को, स्विफ्ट ने कहा ये इसमें से 90 पैथोजेनिक है, 10 को उसने टॉलरेटेड कह दिया। अच्छा, पॉलीफेन को दी, पॉलीफेन में उसमें से 95 को पैथोजेनिक कहा। आई म्यूटेंट को दी, उसने 85 को कहा। आई एम कोटिंग जस्ट एग्जांपल्स। तो अब इसकी बेस पे आप उनकी एक्यूरेसी आप बताएंगे कि जिस टूल ने वो 100 जो प्रूवन पैथोजेनिक डिक्लेयर्ड स्निप्स थी, जिस टूल ने उस डेटा में से ज्यादा स्निप्स को पैथोजेनिक ही कहा, इट मींस दैट टूल इज मोर एक्यूरेट। अब हमने ये रेफरेंस डेटा कहाँ से लेना है? तो ये मेरा थर्ड एक था आज के लेक्चर में। क्लीन वार आप लिखेंगे ना यहाँ पे, ये एक डेटाबेस है, वेब पोर्टल है, जहां पे उन्होंने ये स्निप्स रखी हुई हैं। अच्छा, वैसे तो आप क्वेरी बना सकते हैं, इसकी आप हेल्प में चले जाएं, उन्होंने एक क्वेरी बनाना सिखलाई हुई है। मैं आज ये चीज़ साथ लेके आया था, मैं ये वाली, इसको मैंने कॉपी कर दिया सर्च बार में। आप इस क्वेरी को देखेंगे ना, यहाँ पे पैथोजेनिक लिखा हुआ है, तो यहाँ पे उसने पैथोजेनिक के रिजल्ट ही दिखाए हैं 13,364 ये वाले। अच्छा, अब नीचे आप ये ना सारे फिल्टर लगाते जाएं नैरो डाउन करने के लिए, ये बहुत ज़्यादा डेटा है और हमें कोई अच्छा किस्म का डेटा चाहिए। मोलेकुलर कॉन्सिक्वेंस मिसेंस विंसेंस ले लें, इसको आप सिलेक्ट कर लें। वेरिएशन टाइप में आप सिंगल ले लें, यानी हमने डिलीशन, डुप्लीकेशन, इंडर, इंसर्शन चाहिए भी नहीं, हम सिंगल स्निप पे हमारा फोकस है, इसको सिलेक्ट कर लें। उसके बाद वेरिएंट लेंथ लेस देन 51, लेस देन 51 कर लें। इसका ज्यादा यहाँ पे जाकर फर्क पड़ेगा रिव्यू स्टेटस में। रिव्यू स्टेटस मीन आपने जिन्होंने को थोड़ा सा काम किया होगा बायोइन्फॉर्मेटिक्स में, एक टर्म बोली जाती है मैन्युअली क्यूरेटेड डेटाबेसेस और मैन्युअली क्यूरेटेड अलाइनमेंट। व्हाट डज इट मीन बाय, जब हम अलाइनमेंट करते हैं using cluster W or some other tool, that alignment is not accurate नहीं होती, हमारा काम आसान करती है।
ठीक है, उसके बाद फिर एक्सपर्ट्स उस अलाइनमेंट को खुद ठीक करते हैं, टाइम बचता है बहुत इन टर्म ऑफ एफर्ट्स, टाइम एंड मनी। तो उसको फिर जब वो एक्सपर्ट्स उस अलाइनमेंट को ठीक करते हैं, दैट इज कॉल्ड मैन्युअली क्यूरेटेड अलाइनमेंट या कोई और डेटा। तो इन स्निप्स को जब हम रिव्यू स्टेटस में जाते हैं तो यहाँ पे एक्सपर्ट पैनल है, यानी ये जो डेटाबेस है जिन्होंने बनाए हैं, NCBI की एक डेटाबेस है और एक्सपर्ट्स ने मिल के फिर इन स्निप्स को वैलिडेट किया है कि ये वाकई जो रिजल्ट्स हैं ये ठीक है, पैथोजेनिक ही है। आप इसको क्लिक करें, अब आपके पास जो 13,000 आ रही थी वो आपके पास 522 रह गई है। ठीक है, इसको मजीद आप नैरो डाउन कर सकते हैं ये फिल्टर यूज करके। आप फॉर एग्जांपल आप डिनोवो यहाँ से सिलेक्ट कर लें तो ये 56 रह जाएंगी। उसके बाद मेथड टाइम में अगर कर लें तो वो इस तरह करके, तो ये आपको जो टेबल अब दिखा रहा है क्लीन वार, दीज आर द स्निप्स दैट आर वैलिडेटेड बाय एक्सपर्ट पैनल ऑफ NCBI। ठीक है, अब अगेन आप यहाँ से देखें क्रोमोसोम पोजीशन दी हुई है, 1 क्रोमोसोम नंबर है, ये पोजीशन है। ठीक है, ये नंबर वो 37 के हिसाब से था, ये 38 पे है। उसके बाद ये जीन दिया हुआ है, उसके बाद आप इसको क्लिक करें, you will have some more information on this SNP. ये इसका आईडी है, जीन है, फिर वो क्रोमोसोम, ये साथ अलील आगे पोजीशन के साथ, ये TC, ये उसका आईडी आ गया। अच्छा, ये DB SNP आईडी आ गया जहां पे हम पहले थे। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आप DB SNP में चले जाएंगे, जहां पे आपको प्रोटीन सीक्वेंस भी हमने गेट किया, हमने वहां पे पोजीशन भी ली, क्रोमोसोम कोऑर्डिनेट्स भी सारे के सारे बना लिए। इस तरह ये आप यू विल कलेक्ट data of these 512 SNPs। अब ये एक रेफरेंस डेटा सेट है ऑफ SNPs या प्रूवन SNPs हैं। अब ये सारे के सारे SNPs आप देंगे स्विफ्ट को, पॉलीफेन को या आई म्यूटेंट को, तो वहाँ से आपको इनकी एक्यूरेसी मिलती जाएगी। इस पे भी कुछ आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं। अगेन देयर इज स्कोप। ये जो डेवलपर होते हैं ये इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं कि हमारे टूल के बारे में ये कुछ कह रहे हैं, हमें गाइड कर रहे हैं कि हमारे टूल की एक्यूरेसी कितनी है, ये एफिशिएंसी कितनी है, मेमोरी के हिसाब से और टाइम के हिसाब से। जी, किसी के पास और जवाब है इस सवाल का? मैंने बता अच्छा, नहीं, मैंने पहले बताया था कि ये जो टूल्स हैं स्विफ्ट, आई म्यूटेंट या पॉलीफेन, इवन के अलाइनमेंट जनरेटिंग टूल्स हैं, क्लस्टर W, माफ्ट, मसल टूल्स हमें 100% एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देते। एक तो ये बात है, हमारी हेल्प करते हैं, हमारे काम को एक्सपीडाइट करते हैं। उसके लिए जब मैंने कहा जी स्विफ्ट हमें 100% नहीं कह रहा कि ये जो हमने उसे स्निप दी है दैट स्निप इज पैथोजेनिक, अब हम स्विफ्ट पे एतबार कर लें कि स्विफ्ट ने सही कहा है, पॉलीफेन ने किसी को कह दिया कि नॉन पैथोजेनिक है तो हम उस पर यकीन कर लें कि पॉलीफेन ठीक कह रहा है। व्हाट इज द एक्यूरेसी लेवल ऑफ दीज टूल्स?
तो ये मैंने कहा था कि ये भी एक स्टडी है कि आप टूल्स की एक्यूरेसी चेक करें। एक्यूरेसी हम कैसे चेक कर सकते हैं कि जब हमारे पास रेफरेंस डेटा हो, यानी वो डेटा हो जो या तो पैथोजेनिक है या नॉन पैथोजेनिक है। अब हमने इसमें पैथोजेनिक डेटा लिया, ये हमें पता कि सारा का सारा स्निप्स पैथोजेनिक है। अब अगर शिफ्ट इज 100% करेक्ट, देन शिफ्ट शुड डिक्लेयर ऑल द स्निप्स एज पैथोजेनिक। फिर तो उसे किसी को नॉन पैथोजेनिक डिक्लेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन शिफ्ट करेगा नॉन पैथोजेनिक। यानी 512 स्निप्स में से हो सकता है कि शिफ्ट 20 को कहे कि ये नॉन पैथोजेनिक है। सेम केस इज विद अदर टूल्स पॉलीफेन और आइम्यूटेंट, तो वो भी सारे को नहीं कहेंगे, फर्क होगा। अब आप उनकी फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव, ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, प्रिसीजन, सेंसिटिविटी, जो स्टैटिस्टिक्स पैरामीटर्स है, इसकी बेस पे आप उनकी एक्यूरेसी आप बताएंगे। जैसे मैंने कहा इन केस ऑफ क्लस्टर डब्ल्यू कि हम अपने टीचर से या अपने कुलीग से, अपने क्लास फेलो से सुन के हम भी क्लस्टर डब्ल्यू यूज कर रहे हैं, लेकिन क्लस्टर डब्ल्यू की एक्यूरेसी 7वें 8वें नंबर पे रैंक हो रही है, सबसे टॉप पे प्रोब कौन की हो रही है। तो अब आप ने 2 ट्रीज बनाने हैं, फाइलोजेनेटिक ट्री। एक आपने बनाया क्लस्टर डब्ल्यू से अलाइनमेंट लेने के बाद, एक आपने ट्री बनाया प्रोब काउंट से अलाइनमेंट जनरेट करने के बाद। तो विच ट्री विल बी मोस्ट एक्यूरेट, जो प्रोब काउंट से आया। अच्छा, इसी तरह जब आप आगे उनकी होमोलॉजी मॉडलिंग करेंगी, उस अलाइनमेंट की जो प्रोब काउंट से हुई है और उस अलाइनमेंट की जो क्लस्टर डब्ल्यू से हुई है, तो विच मॉडल विल बी मोर एक्यूरेट, जो प्रोब काउंट से हुआ है। और इस तरह बहुत से दूसरे काम है जो अलाइनमेंट पे बेस कर रहे होते हैं। तो इसी तरह ये है कि चीज़ मैं शिफ्ट यूज कर रहा हूँ, मैं शिफ्ट की बेस पे कह दूं कि ये जो अलील है, वेरिएंट है, ये पैथोजेनिक है, या मैं उसे कह दूं कि ये नॉन पैथोजेनिक है। मेरे पास नॉलेज तो होना चाहिए ना कि शिफ्ट कितना कैकुरेट है या पॉलीफन कितना कैकुरेट है। ये एक तीसरी स्टडी थी जी, मुझे भी चिट मिल गई है। तो नहीं, हाँ जी, जी, हाँ जी, जी जी, ऐसा ही मैंने कहा जी। आपने हमें इन केस ऑफ सिलेक्टेड जीन हमें 159 स्निप्स मिली थी। आप 4-5 टूल्स उस पर लगाएं तो आपके पास 3-4 स्निप्स रह जाएंगे फॉर फर्दर एनालिसिस। पहले स्टेप में आपके मोर देन 150 स्निप्स निकल जाएंगे। मैंने यही कहा ना कि आप फिर उस जो स्निप आपको मिली है, आप उसका एक कंप्लीट एनालिसिस करने के बाद, एनोटेशन करने के बाद, फिर आपको पता चलेगा कि ये नॉवल है या नहीं है। अगर नॉवल नहीं है तो फिर तो वो हाँ जी, फिर ये आपकी कंट्रीब्यूशन है। हाँ जी, जी जी, जी जी, हाँ जी, आपकी कंट्रीब्यूशन है ये। जी जी, ऐसे ही। ये काम जो हमने होल एग्जाम डेटा एनालिसिस का किया ना, उसमें ये आपको नॉवल स्निप्स मिलेंगी जी। हाँ जी, फिर इट मींस के नॉन पैथोजेनिक स्निप्स लिए तो फिर टूल्स को नॉन पैथोजेनिक कहना चाहिए। आप अलाइनमेंट एक्यूरेसी की बात कर रही ना, टूल्स की एक्यूरेसी की, फिर उन्हें नॉन पैथोजेनिक कहना चाहिए। फिर आप उस पर्सपेक्टिव से करेंगे स्टडी। हाँ जी, जी जी जी, ऐसे
जी, थैंक यू। Thank you so much, sir, for a very informative session. Ladies and gentlemen, this brings us to end of the first session of the day. Now we will be taking the 1 hour break, lunch break and prayer break, and we'll resume the session at 2 p.m. sharp. Thank you.
Hello. Assalamu alaikum. Good afternoon. Is anyone on the other side? N.A. Muzammil Sahab, are you there? You're the only person whose voice I can hear. Dr. Talmeet here. Assalamu alaikum, sir. How are you? I'm fine. जी. I think lunch break चल रही है, तो that's why Okay. वापस join नहीं किया. No problem, no You have problem. to wait a Bilkul. bit, please. Thank you for telling me. Shukriya. Okay, madam. Thank you. Assalamu alaikum. Bismillah. Assalamu alaikum. Yes, very much so. I'm here. Assalamu alaikum. This is Samar Mumtaz from Auric. How are you? I'm Assalamu alaikum, Samar. How are you? I'm good. Very nice to meet you. Oh, same here. Okay, let's start our second session of the day. Are we 5 minutes early? Log lunch break se aa gaye? Let's wait for 5 minutes. Okay. How was the morning session? How did it go? Kaisa chal raha hai? This is day 2, right? Yes, it is day 2 and it was very informative. Mhm. And participants learned a lot. And it Zabardast. was also activity based. Excellent. Very nice. Very nice. Yes. Zabardast. So basically, from my understanding, jo colleagues abhi isko sun rahe hain, I can see they're all sitting in an auditorium very nicely. Aram se mera khayal hai lunch break ke baad sab bahut comfortably baithe hue hain. It's very nice to see you all. So from my understanding, kuch colleagues jo hain wo auditorium mein baithe hue hain aur kuch colleagues online sun rahe hain. How is it working? Madiha, we have physical participants at auditorium here in Virgil University, and okay. our other participants from other stations are on Zoom. They're on Zoom. ठीक है. So if I want to ask a question or if I want to interact with colleagues, what is the best way? Can Yes, you can ask question and we have a mic, so you can talk anyone. Perfect. तो जो auditorium में colleagues बैठे हुए हैं, उन सबको मेरी आवाज आ रही है? Yes. Give me a wave, everyone. Okay, fantastic. और अगर मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछूं, आप में से कोई भी एक शाउट आउट करे मुझे, तो क्या मुझे आवाज आएगी आपकी? फॉर एग्जांपल इफ आई आस्क यू आपने खाने में क्या खाया लंच में, तो कैन यू टेल मी? नहीं, ऐसे नहीं आएगी. ऑडिटोरियम माइक जाना पड़ेगा. ओके. Who will be brave to tell me उन्होंने लंच में क्या खाया है? We had biryani. Very nice, biryani. Amazing. And Good kebabs too. start. We can't And forget kebabs. Zabardast. Excellent. That means a good start to the workshop already. And I think we had sweet rice too. Was it halwa? Halwa. Halwa as well. Amazing. Behtareen. That means virtual university is looking after you very nicely. Biryani and kebab and whatnot, huh?
Zabardast. Summer, can I quickly share my screen just to make sure that everything is working well, and then we can make a start in about 2 minutes? Sure, Media. Okay. You can. Please let me know when you can see this. Okay. Yes, we are viewing it. Okay, fantastic. So we will give it maybe another minute and then we can start. Let me know when you are ready to start and then we'll just make a start. Okay? Okay, I will start. I will introduce you, then you will continue. Perfect. Thank you. Whoops, I think I did something. Which screen you can see? Can you see academic writing skills? Yes. Yes, Media, we can see. And can you see this slide 1 of 55 or no? There's no number on slide. Okay, so only thing you can see is this big slide, right? Yes, academic writing skills. Perfect. Okay, ladies and gentlemen, welcome back. We will now resume our second session of the day. Our speaker of this session is Ms. Madiha Sajid. She's a fellow of the Higher Education Academy UK and works at Imperial College London in the capacity of undergraduate education manager. Her profile includes working on regional, national, and international projects on education, career development, women in leadership, and sport for families. Ms. Madiha, and she has previously worked in a varied roles at UCL. She sits on several working groups, including the Gender Equality Committee, Springboard for Women Committee, and UCL Ethna Forum. She also co-leads the university-wide initiative of Ethna Swan, which is an award in recognition of the university's commitment to advancing women's career in science, technology, engineering, maths, and medicine, that is STEM. Madiha is also the founder and chair of UCL Parents and Careers Together network, for which she has won the prestigious UCL Excellence Award for showing exceptional leadership skills in supporting parents at UCL. Today, she will deliver her talk on teaching academic writing and critical appraisal to undergraduate students. I welcome you, Madiha, on behalf of Virtual University of Pakistan. Please proceed for your presentation. Thank you very much, Samar. बहुत shukriya aapka और warm welcome and my salams to everyone who is listening. जितने colleagues auditorium में बैठे हुए हैं, जितने colleagues ने virtually join किया है, उन सबको my great welcome and thank you for coming to this session after your lunch break, because I know कि खाने के बाद किसी session में बैठना कितना heavy काम होता है. So I think first things first, thank you very much for being here today. आज आपसे मेरी जो बातचीत होगी, that will be around an hour 45 minutes. We will see how it goes, and I will be talking to you about academic writing skills and critical appraisal skills for undergraduate students. Because of the layout of today, मेरा ख्याल है कुछ लोग auditorium में हैं, कुछ लोग online हैं, so I will try to ask you as many questions as possible. और अगर possible हो तो आप अपने आप को जो ऑनलाइन लोग हैं वो अनम्यूट करके जरूर मुझसे बात करें, और जो ऑडिटोरियम में बैठे हुए हैं प्लीज टेक द माइक एंड डू स्पीक विद मी बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी अ टू वे कॉन्वर्सेशन. सो Madiha, जो ऑनलाइन है they cannot unmute themselves. Okay. They can put question in QA section. Sure, no problem at all. So basically,
You will see on this slide, it says Imperial College London at the top. This is where I work. But you will also see my Twitter, which says Madiha Sajid UCL. This is because मुझे Twitter पे कोई ऐसा नाम नहीं मिल रहा था जो Imperial College का available होता, तो I just stayed with what it is. So, my name is Madiha. I am the education lead for upsign, and मैं आपसे upsign के बारे में बात करूंगी in a minute. I am also the gender equality lead for my institution. Academically, my background is in education, gender, and international development. Professionally, my expertise is in educational leadership, inequality, diversity, and inclusion, and in supporting students. And I'm also professionally very, very interested in gender equality, improving the career progression for men and women. Outside of my professional sort of zone, I'm also a mother. मेरी बेटी है, she is 17 years old, आज वो स्कूल गई हुई है. My family, I've been born and bred in Pakistan. I moved to England about 16 years ago. मेरी education कुछ यहाँ पे हुई. Allah Ta'ala has been kind to me. मुझे अच्छे मौके मिले, and today I'm so pleased that I bear the Pakistan flag when I work at Imperial College London, which is actually one of the best universities in the world. तो जो आज की हमारी conversation है, today I'm also wearing another hat of upsign, and I will tell you about upsign in a minute. Today's conversation is roughly going to be in 3 parts. The first part is going to be a brief introduction to upsign, because I am also wearing the hat of upsign today. We will then move on to critical appraisal skills, and then we will move on to academic writing skills. Agar zarurat mehsoos hui, to we will stop halfway through, we'll take a 5-minute break, and we will just see how it goes. Just to quickly tell you that Imperial College London mein meri jo position hai, what it is about supporting undergraduate students and their education. And that includes everything right from day one, jab wo apni pehli jo question hai wo bhejte hain about admission, ki hame admission kaise milega, and talking to them, helping them choose the right degree. When they start to apply for the place, then supporting them with their application, with their statements. When they arrive into the UK, helping them settle into university life. And उसके बाद उनके साथ उनको इंटरनेशनल रिसर्च के साथ उनको अवेयर करना, उनकी असेसमेंट्स का, उनके लेक्चर्स का ख्याल करना, everything in between. After that, when they graduate, then they become part of the alumni network. So my job is to look after their student journey right from day one all the way up to graduation. And it's a very interesting position because every day I get to meet different kinds of students from all parts of the world. पूरी दुनिया से बच्चे अमेरिका से आते हैं, मलेशिया से, चाइना से, पाकिस्तान से, इंडिया से, श्रीलंका से, यूके के बीच से. So every day is a different day. Every day I learn something from them. हर दिन मुझे उनसे कुछ सीखने को मिलता है, because it's a very very international world we'll all live in. और एक चीज जो मैंने हमेशा देखी है वो ये देखी है कि जब हमारे बच्चे जो हमारे बच्चे से मुराद जो हमारे पाकिस्तान से बच्चे आते हैं, particularly undergraduate बच्चे आते हैं, they have to work harder to get up to the mark about their research skills. क्योंकि पाकिस्तान में जो रिसर्च स्किल्स हैं उनको सिखाने का तरीका डिफरेंट है, उनको सिखाने का फ्रेमवर्क डिफरेंट है. यूके में जो रिसर्च स्किल्स हैं उनको सिखाने का तरीका डिफरेंट है. इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग इज कंप्लीटली डिफरेंट. सो टुडेज कॉन्वर्सेशन इज गोइंग टू बी अ बिट अबाउट जो कोर स्किल्स आप अपने अंडरग्रेजुएट स्टूडेंट्स को सिखा सकते हैं, how to do critical appraisals and how to do academic writing. Is everyone with me? If you are with me, just give me a thumbs up so I know everyone is listening to me. Good. I can see people. I hope जो online सुन रहे हैं वो भी thumbs up कर रहे हैं. Cool. Okay. So moving on, the first part which I want to quickly talk about is upsign network. Upsign stands for UK Pakistan Science and Innovation Global Network. Today, I'm here representing the upsign network and Imperial College London. So upsign network, I just told you in the beginning that I'm the education lead for upsign. Upsign kya hai? Upsign is a network of researchers, academics, professional policymakers, practitioners, thinkers, solution makers. We are basically a network based in the UK
और जो हमारा काम है वो ये है कि हम यूके के एकेडमिक्स को और पाकिस्तान के एकेडमिक्स को कनेक्ट करते हैं. We work to address the social and economic challenges of Pakistan and Pakistani diaspora here in the UK. और जो हमारा काम है, most of our objectives, they are framed around the United Nations Sustainable Development Goals, the UN SDGs. I'm sure you are familiar with these. सारा जो हमारा काम है, it is based on these 17 goals. Particularly, I am the lead for goal number 4 and 5. Number 4 is quality education. And number 5 is gender equality. I'm an educationist by profession. मेरा vested interest है education को बेहतर बनाने में, पाकिस्तान और UK के दरमियान links share करने में, so that जो पाकिस्तान में best practice है, that we bring it here, और जो UK में best practice है, we bring it to Pakistan. Hence this workshop today. Number 5, gender equality, made a personal interest. Like I told you, I'm a woman. I'm born and bred in Pakistan. I have a daughter. मैं चाहती हूँ कि अब के 10 साल के बाद, 20 साल के बाद, जब मेरी बेटी working world में आए, तो the world is a slightly better place for her in terms of gender equality, and that she also gets paid the same money that men get paid. So same, no gender pay gap. How does upsign work? Overseas, जो हम जिस तरह काम करते हैं, we are addressing Pakistan's global challenges. We work with Pakistani stakeholders, government के साथ, universities के साथ, public-private organizations के साथ, NGOs के साथ. For example, today's conversation, today's session is also part of how we work with Pakistani universities. And we want to facilitate knowledge transfer, and we want to do capacity building of professionals and academics in Pakistan. In the UK, we do a lot of mentoring and supporting UK-based British Pakistanis. क्योंकि यहाँ पे जो Pakistani population है, they need a lot of mentoring, particularly जो हमारे बच्चे हैं. I think ये हमारी जिम्मेदारी है to give them the roots and the recognition that their homeland is Pakistan, and they have strong links with Pakistan. We have a team. I think ये जो आप slide देख रहे हैं, there are 8 core people who are sort of part of the core team. The female Professor Parveen Ali, number 2, she is the chair of upsign, and she is an amazing woman. She is the first female professor in the UK for nursing. I think it's a big honor for Pakistan. Pakistan से जो एक academic है, she is now a professor here. Already यहाँ पे female professors की तादाद बहुत कम है. So quickly giving you some examples, maybe you came across this. Pichle saal we launched a training program, Pakistan's Global Graduates. The idea was कि जो Pakistan के graduate students हैं, we train them to give them the skills to come up to the same standard as on an international platform, to make them ready for global research. और उसमें 6 sessions थे: critical thinking, academic writing, intercultural competence, networking skills, presentation skills, CV writing, etc. We are also doing something about PhD doctoral supervision. There are 4 segments to it: supervision, industry partnership, governance, interpersonal skills, etc. We are in the process of planning this. Few other things that we have done, हम effective personal tutoring के plans or ideas develop कर रहे हैं. We are working on giving excellent feedback to students. How does formative and summative assessments work? What is the feedback loop, etc. And then my personal favorite is we are also planning programs about women in leadership. बहुत सी ख़वातीन यहाँ मुझे दिखाई दे रही हैं auditorium में. I'm sure online भी हैं. So this is my personal, my baby, because this is something I feel very, very vested into, to facilitate the career progression of women and help them to become successful leaders. So we have a website. You may want to take a picture of this slide. We have a Twitter account. We have YouTube. We are on LinkedIn. Then on WhatsApp, we have subject-specific groups. If you are interested in education, आप education का group join कर सकते हैं. If you are interested in agriculture, we have a group for agriculture. If you are interested in gender equality, there's a group for that also. There are many ways to stay in touch with us. So please do feel free to stay in touch with us. Any questions so far? Any comments, any questions? Because this is the first thing done.
Any comments? It doesn't need to be a question. It can be a comment. ऐसा कोई comment जो आप देना चाहें, कोई बात share करना चाहें? Thank you so much. I'm Dr. Uzma Hanif from Government College University, Lahore. I just want to know that how I will add myself in WhatsApp group regarding the environment. So can you elaborate this? जी जी. If you go to the website, वो जो upsign.org.uk है, उसी पे you will find links that click here to join this group, click here to join this group. The easiest way is to go on the website and click on the links to join subject specific groups. Is that okay? Thank you so much. Thank you, Usman. Thank you very much. Okay, so this is done. This was the first part of my conversation with you today. We will now move on to part number 2, which is critical appraisal skills, जिसके लिए आज हम सब यहाँ जमा हुए हैं. So before I even go further, I would like to ask you, when I say critical appraisal skills, what comes to your mind? आपके ज़हन में क्या आता है? Who will be brave enough to tell us? What I feel from the critical appraisal skill, I think you need to identify some critical point and you need to tell them in some way that it is encouraging, it is an appraisal. Correct. Yeah. I'm not Yeah. wrong. So You're critique in absolutely a right. better way. Bilkul, bilkul. Critique in a better way. Bilkul. Somebody else? Good afternoon. Good Hello, afternoon, Madina. ma'am. How are you? Nice to Very hear well. from you. I'm from Connect College, Department of Biochemistry. Nice to hear from you. बताइए, please. What do you think critical appraisal skills are? I believe critical appraisal skills would be it would be something in which you are giving feedback, keeping in Correct. view the pros and cons of the analysis which a student with respect to if you're talking about a student. So we would be critically analyzing the assessment of that student with its pros and cons and then giving a feedback of how she can improve on it. Exactly. So that's Absolutely. Yeah, you're absolutely right. Or I think it's important to remember कि जितने लोग आज conversation में जमा हैं, am I right in thinking that you are all teaching undergraduate students? If yes, just raise your hand, please. Are you all teaching undergraduate students or postgraduate students for that matter? Or any students, any university students? Right, okay. So the conversation today is actually directed at giving these skills to undergraduate, postgraduate students, not a problem. जो दो examples हमने सुनी हैं, they are absolutely right. Critical appraisal skills are to give your critique or to evaluate something. And let's take a very quick example. अभी आप सब ने lunch में बिरयानी खाई है, right? किसने नहीं खाई? Okay, सब ने खाई है, right? Let's critically appraise the biryani. सबसे पहले critical appraisal का मतलब ये है कि हमने उस चीज की तारीफ नहीं करनी है. अगर अच्छी है तो जरूर तारीफ करें, उसके प्लस पॉइंट्स बताएं, क्या बिरयानी में क्या अच्छा था. Who will tell us what was the good thing about biryani? सर आपने खाई है तो बताएं ना प्लीज. चले बिरयानी नहीं कुछ और कबाबों का बता दें. Tell us something. How was the lunch? Let's put it this way. What was the good thing about the lunch? बिरयानी जो थी वो स्पाइसी काफी थी, ये उसकी अच्छी बात थी. और जो था वो कबाब जो था वो मुझे थोड़ा सा कम स्पाइसी मिला. नहीं, मैंने 2 खाए लेकिन वो कम स्पाइसी लगे बस. Perfect. Okay. So basically आपने ये lunch का एक अपना critical analysis दिया है. आपने evaluate किया बिरयानी को. ठीक है? Somebody else wants to take a go? How was the lunch? How was biryani? How was kebab? Someone tell us please. Critically analyze करना है आपने. जी मैम बताएं. Okay, let me pick somebody then. Sir, आप front पे बैठे हुए हैं, row number 2 में. आप बताएं please. How was the biryani? I hope you had it. जी अस्सलाम वालेकुम. Assalamu Thank alaikum, you sir. very much. जी वालेकुम सलाम. How to say? Biryani was okay.
Okay is good. Okay is good enough. Fantastic. So basically आपने क्या किया है? आपने analytical eye से यानी कि critical eye से evaluate किया है. जी जी? एक्सक्यूज मी, सॉरी टू इंटरप्ट, मैं भी थोड़ा सा क्रिटिकली एनालाइज करना चाहूंगी। Please do एक बताएं. तो वो कबाब जो है ना लेट आए थे और वो उनकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं थी, वो उसी वाली थाली में रख दिए थे जिसमें चावल थे पहले। Perfect. So, I mean, 100%. This is your critical analysis. ठीक है? This is your job is not only to do तारीफें. Your job is to critically evaluate उसका taste कैसा था, उसकी presentation कैसी थी, उसका जो delivery थी वो कैसी थी, did it fulfill your needs, did it fulfill your taste buds, whatever that was. So this is critical appraisal. अभी हमने 1 मिनट 2 मिनट के अंदर अंदर जो आज का lunch service थी उसको हमने critically evaluate किया है, यानी कि analytically हमने उसको critique दी अपनी. Is everyone with me so far? Okay, so this is in short words यही चीज critical appraisal है. अब बिरयानी का critical appraisal करना is a completely different thing, और scientific paper का critical appraisal करना, it is a completely different thing, but the idea is the same, that you are critically, analytically assessing something. The critical appraisal skills, they enable you to systematically assess the trustworthiness, the relevance, and the result of scientific papers, scientific studies. क्या वो trustworthy हैं? कौन से source से आ रहे हैं? क्या वो किसी unknown country के किसी unknown publisher ने वो research study जो है वो publish की हुई है, इसका कोई international ranking नहीं है, उसकी relevance क्या है, उसके results क्या है, how much you can trust a finding, how much you can trust a research study, how much you can trust the biryani, right? This is critical evaluation. Another definition of critical appraisal skills, systematic process to identify the strengths and weaknesses of a research article in order to assess the usefulness and validity of the research findings. जैसे अभी हमने बिरयानी की strengths और weaknesses हमने point out की, किसी के लिए जो उसका spiciness थी वो it was a strength, हो सकता है किसी और के लिए वो उसकी weakness हो. इसी तरह एक research article की जो हमने strengths और weaknesses जो analyze करनी है, so that we can assess its usefulness, that is critical appraisal skills. And it is an essential part of putting theory into practice, because learning critical appraisal skills for your undergraduate students, it allows you to determine whether findings should influence your decision making. And it closes the gap between research and practice. जो आप जो एक पेपर पढ़ रहे हैं, आप I'm sure अगर अभी नहीं आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, तो very soon they will start reading academic papers, they will start reading research studies. What you have to teach them as their teachers is how to critically appraise a scientific study, how to critically analyze the findings of a research study. Why do we need critical appraisal skills? क्या जरूरत है इसकी? इसके बगैर भी तो काम हो सकता है. Why do you think? And actually, let me unshare my screen because there are some questions coming here as well. Oh, okay. So how to join WhatsApp group, feedback, it's something like feedback on work. Fantastic. Yes. जो लोग online सुन रहे हैं, sorry, I've just seen your comments now. That's absolutely fine. So tell me, why do we need critical appraisal skills? For improvement? Yes, correct. जो auditorium में मेरे colleagues बैठे हुए हैं, please do tell me, why do we need, क्या जरूरत है इस सारे झंझट की क्या जरूरत है? इसके बगैर भी तो जिंदगी गुजर रही है. Because we want to move onward for the future. We want to move onward for the future, correct? Yes, someone else? To uncover the hidden aspects of the research which were not covered in that specific paper. Absolutely. To uncover the things that were not there, जो कि research में cover नहीं हुई. जी, आप बताइए. To identify the gaps of the research and their improvement. बिल्कुल, to identify the gaps and to figure out कि ये is it needed, is it trustworthy, is the research even genuine? जैसे मिसाल के तौर पे आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आप उनसे आप जब डॉक्टर के आप अपनी कोशिश करते हैं कि बेहतरीन से बेहतरीन डॉक्टर के पास जाएं जो आप अफोर्ड कर सकते हैं. आपको कैसे पता चलेगा कि that doctor is genuine and trustworthy? You will do your research. आप किसी से पूछेंगे आगे पीछे, आपको शायद कोई कहेगा नहीं, I know that doctor is a very competent doctor. So you want to establish the trustworthiness, the reliability
of that doctor. And sorry, there are just some comments here in the question answer. For research and development, for future suggestions, yes. And I'm going to show you this slide. ये बताएं कि अभी कोविड-19 जो है वो एक टॉक ऑफ द टाउन है, हम सब इस चीज में से गुजर रहे हैं इकट्ठे। और मैंने 2 छोटे से क्लिप्स आपसे मैं यहाँ शेयर कर रही हूँ, ये आप जो स्लाइड पे देख रहे हैं। एक तो ये है ब्रेकिंग कोविड-19 कोरोना वायरस न्यूज, जो सेकंड है इट इज अबाउट can eating garlic help to prevent the infections. This is just an example कि medicine में you get information from left, right, center. It is so important to establish कि ये information कहाँ से आ रही है, इसका source क्या है, इसकी research study के methods क्या हैं, is it even valuable, is it even true, इसकी reliability क्या है. And this is why we need critical appraisal skills. So that whatever decision हो सकता है उस research study की basis पे आपने आगे एक और research study create करनी हो, लेकिन अगर आपके पास वो basis ठीक नहीं है तो आपकी अगली जो research study का design है वो impact होगा. This example is only to show you that we need critical appraisal skills to understand कि garlic खाने से for example COVID-19 से बचा जा सकता है या नहीं बचा जा सकता है. Can you tell me? There is a suggestion because if we quote here about ginger, so we can have many evidences that because ginger is used in different decoctions, which is commonly called as kahwa, which is definitely cure your cough, which clear your throat, and definitely help in the recovery of the person from the COVID. So I think Correct. about garlic, I have no Exactly. idea. Absolutely. I mean, कौन से रेमेडीज कोविड के टाइम पे आना शुरू हो गई थी. किसी ने बोला कि आप अदरक का कहवा ले लें, किसी ने बोला आप रोज गार्लिक खाएं, किसी ने बोला वो अजवाइन कुछ करें. So from everywhere we were getting all of these kind of suggestions कि ये करेंगे तो कोविड नहीं होगा, ये करेंगे तो कोविड नहीं होगा. And this is why critical appraisal is so important कि we need to understand कि ये जो information हमें दी जा रही है, is it even reliable or what source it is coming from. We need to find the context in which our own research will take place. What has been done before? जो आपके बच्चे research करेंगे, will that be original or will that be almost similar to or a copy of जो research पहले हो चुकी है? Can we use what they have learned in their study instead of reinventing the wheel? Critical appraisal skills आप जब use करते हैं तो आपको अपनी study का context मिलता है. अपने जो आपके जो students हैं जब आप उनको सिखा रहे हैं, वो जब अपनी research study करेंगे, they can find their own context. Can we improve upon the methodology? Can we replicate an important finding? What has been done before already? Basically, when we teach critical appraisal skills to students, we teach them to understand what has been done in that field previously so that they don't end up replicating that. As humans, the second reason we need to do critical appraisal is because as humans, we all have a trusting nature. हम सब की जो nature होती है by default, हम बहुत trusting होते हैं. We believe what we read in newspapers. हम जो TV पे खबरें सुनते हैं, हम उसको यकीन कर लेते हैं. I remember my mother, she always says कि जब मैं खबरें सुनती हूँ तो लगता है इतनी मुल्क कौम पे मुश्किल वक्त आ गया है कि शायद कल का दिन आना ही नहीं है. But that is where the critical appraisal skills come in कि कौन सी information हमने on board लेनी है और कौन सी information we have to park. So what we read in reputable journals and articles, we have to be more critical and more analytical in our approach. We also need to appreciate the good research, the good stuff when we see it. जैसे एक जो हमारे colleague बैठे हुए हैं, उनको spicy biryani अच्छी लगी थी. So you appreciate the good stuff that you see, and you critically evaluate the stuff that you are not sure about. Critical appraisal, it allows us to reduce information overload by eliminating weak studies, जो कि आपका criteria meet नहीं करती. Critical appraisal allows you to identify the most relevant papers. You can distinguish evidence from opinions. जो fact-based information है और जो किसी का opinion है, उसके बीच में हमें distinguish करने के लिए critical appraisal skills चाहिए. We can assess the validity of the study. उसकी जो strength थी वो कितनी थी, उसका sample size कितना था, उसकी जो findings हैं वो किस हद तक
amplify की जा सकती हैं on big populations. Critical appraisal skills, particularly, they help to assess the usefulness and the clinical applicability of a study, particularly in life sciences, जो biochem के लोग यहाँ बैठे हुए हैं. And critical appraisal allows us to recognize any potential for bias. By bias, I mean wo research findings that favor a specific group of people. For example, हमारे यहाँ एक चीज है कि अगर बुजुर्ग खवातीन हैं तो automatically assume कर लिया जाएगा कि they are not that capable of performing a task without even asking them, without even consulting them. और छोटे-छोटे everyday tasks, कोई मैं massive चीजों की बात नहीं कर रही. But when we look at it critically, when we hold our judgments in check, अगर उसको हम एक बिल्कुल unbiased position से critically evaluate करें, that means that we can recognize कि हमारी जो biased हैं, जो हमारी prejudgments हैं, वो कहाँ पे आ रही हैं. I'll quickly look at the question and answers here. Future suggestions, immunity, etc. Okay. So we have figured out कि हमें critical appraisal skills क्यों चाहिए और हमें वो कैसे help करते हैं. I do want to say कि it's really hard to talk about critical appraisal skills in an online workshop, for 1 hour, 2 hours, but it is only, imagine it is a tip of an iceberg, and we are only discussing this for the benefit of your understanding. How you take that into classrooms, that is a separate conversation. How do we do critical appraisal skills? We start with defining our research. Then we do the relevant searches, the relevant papers hai. Then we appraise them or we analyze them, and then we evaluate them. The common questions to ask: is the study question relevant to my field? Does the study add anything new to the evidence that already exists in my field? What type of research question is being asked? What is the study design? It is appropriate for the research question. Is it a qualitative study? Is it a quantitative study? Is it a mixed methods approach? Did the methodology address important potential sources of bias? Like I gave you an example कि हमारे यहाँ जो female जो elderly हैं उनके लिए एक bias हो जाती है. Does the study even address that? And then talking about finding the papers that you want to read. You start off with doing a literature search. We use the web, internet web, we use PubMed, we use Web of Knowledge, Coach Train database, etc. Depending on the field, जिस field में आप हैं, कुछ अगर यहाँ पे chem के लोग हैं, कुछ bio के लोग हैं, कुछ मेरा ख्याल है clinical के लोग होंगे. So it's important to understand कि आपने जो online tools use करने हैं research studies को find करने के लिए, which are those web tools that you are using for the literature search. After that, you generate a search by deciding the questions you want to ask. You use keywords, you use the criteria, you use the limits, for example, not more than 50 years old, not less than 30 years old, etc. And I think it's important to remember that when you are finding the papers you want to reach, आप एक भी word Google में enter करेंगे, there will be hundreds of titles जो कि आपकी Google search में वापस आएंगे. Then you have to start refining those search terms with tighter questions. अपने criteria को limit करते जाएं. Just go through, skim through the titles and exclude the irrelevant titles that don't relate to your research study, that don't relate to your students' research study. Quickly read through the abstracts. I think a good teacher will always know that you don't have to read the entire 4-page article. You can quickly read the abstract and you can figure out कि ये आपके student के लिए या आपकी study के लिए ये useful होगा या नहीं होगा. You can start reading, and if it is not relevant, you can just exclude it. And this is also, by the way, we will talk about that in a minute. It's also highlighting the importance of writing a good title and an abstract, which is a part of academic writing. So basically, finding the papers you actually want to read, जिस पे आपकी research study, आपके student की research study base होगी, that is really important. And I think when you teach critical appraisal skills to your students, teach them how to save their searches, whether they are downloading them, we are noting the citations, whether they are making notes, whether they're using any referencing software, whatever they are using, teach them how to get to the papers they actually want to read.
सो पहला स्टेप हो गया, हमने पेपर्स आइडेंटिफाई कर लिए कि कौन से पेपर्स रीड करके हमने उनको क्रिटिकली एनालाइज करना है, एंड देन दे विल बी यूजफुल फॉर आवर ओन रिसर्च स्टडी. Now we move on to appraising a paper, evaluating a paper. And I think really important to start with the basics. Are the right things in the right places? जैसे भी colleague ने कहा था कि कबाब जो थे वो उसी dish में आ गए थे, उनकी presentation ठीक नहीं थी. They were in the same dish as the rice. So literally first impressions. Are the sections correct? Are there any grammatical errors? Are there any spelling errors? Usually जो research articles का जो एक format होता है, it starts with an introduction or a background, then it moves on to methods or setting or the materials used, then there are results, then there's discussion, and then there's a conclusion or the implications. So check that are all these things in place in order. If yes, it's a good start. Is the presentation good? Is it easy to read? Is it a flowing article, good prose, appropriate tone, logical flow? Are there any subsections if needed? Does it tell the story of the study? What is the house style? Are there headings required? Are there lines on the tables, etc.? Tables and figures are a really easy way to critically analyze a paper. Are they clearly labeled? Do you understand them? Or are they difficult to follow? And then usually there's a list of sort of critical appraisal questions that we ask. The first one is the question relevant to your own research study? And by when I say your own, I mean the research study that your student is doing. So is the question relevant to the study that your student is doing? Does the study add anything new to that? What type of research question is being asked? Is the study design appropriate for the question, or is it not? Did the study methods they address the most important biases, or is it an unbiased, non-judgmental approach? Was the study carried out as planned, or were there any challenges they faced? And if they faced challenges, how did they overcome or respond to those challenges? Normally, recruitment, we see there's a lot of challenges when it comes to recruiting participants for studies. Does the study test a stated hypothesis? If yes, what is the finding? And if no, what is the finding? Were the stats correct? Does the data justify the conclusions? Are there any conflicts of interest? Are there any sort of shared liabilities somewhere? So these questions are really important to consider when you are teaching your students to critically appraise a scientific study or a scientific paper. And then when you are writing a critical review, I think you have to, जैसे अभी हमने बिरयानी की example से start किया, you have to remember to be fair. It's not only about giving praise all the time. It is not only about saying yes, or being negative all the time. It has to be fair. It has to highlight the positives. It has to highlight the negatives. You have to provide a balanced critique, a balanced evaluation. And whatever you say, make sure your comments are defensible. I think one of you said that the biryani was okay. So okay is a very hard comment to defend. Either you like it, or it's very spicy, or it's not spicy, or you don't like it, it was very bland. Be prepared to provide defense for your comments or whatever opinions you are making on that critical review. And then don't forget to consider the wider circumstances of scientific progression. How does the study that you are appraising and your own research study, how does that contribute to the wider circumstances of scientific progress? And I appreciate that you may feel that ye jo critical appraisal skills hain, they probably are not that relevant to you or to your students, but you have to remember that for the purpose of today's conversation, this is what we are here for. And these are some of the basic scientific research skills that we have to teach our students so that they can be on the same level as a global platform, at an international platform. And I'm sure कि आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो कि अभी बिल्कुल students के साथ start कर रहे हैं. If the students are new, probably कुछ ऐसे लोग होंगे जिनके students final years में हैं, जो कि अपना mostly degree कर चुके हैं. But these academic skills, these critical review, academic, they are so important.
So important, particularly at the next stage of the students' careers, जब वो scientific world में enter होते हैं, when they want to work with international collaborators, when they want to work on international platforms, it is so important to remember कि ये skills जो हैं, चाहे वो critical evaluation करने के हों, चाहे वो academic writing के हों, चाहे वो referencing के हों, चाहे वो plagiarism के हों, they are really important. So if you want to take away one thing from the critical appraisal, remember the biryani example. It is absolutely one concept that you are critically analyzing any given research study. You have to figure out, is it trustworthy? You have to look at different criteria. You have to figure out, is it relevant and useful for your own use? And you have to figure out if it is going to help you with your own research. This is the end of critical appraisal skills. I want to open the floor for comments and questions and suggestions, and I will quickly look at this here. Okay, no new questions. आप बताइए, for how many of you this is a completely new concept? Critical appraisal skills. जी डॉक्टर साहब, मेरा एक जी सर. क्वेश्चन ये है कि critical review, critical appraisals depend on the personality. Personality of who? जो कमेंट कर रहा है. Okay, the person who is doing the critical appraisal. Yes. Okay. It depends on the like and dislike. And what is the criteria to judge it? Either my critical review is okay or not. Exactly. For example, I don't like biryani. And some other person like very much. Some person doesn't matter that it is very well presented. For me, it is very well presented, but I don't like it. You don't like it, absolutely. But some other person, if the biryani is much spicy, Ji. and he likes spice, but the presentation is not good. So how you will? You're absolutely right. और critical appraisal की एक बड़ी खूबसूरत बात ये है कि ये बहुत individual होता है. ये हर एक का अपना individual take होता है. जैसे आपने भी बताया, you don't like biryani. The person sitting on your left, maybe they like biryani. And this is why, जो वो bias की मैं बात कर रही थी, you have to understand that there are like set criteria, there are set ways to assess the paper. It doesn't matter कि आपको वो subject या वो topic पसंद है कि नहीं है. What matters is कि वो reliable है कि नहीं है. So, for example, ये जो हम garlic की और ginger की बात कर रहे हैं, it doesn't matter कि what you think कि इनसे COVID cure होता है या नहीं होता है. What matters is कि ये information कहाँ से आ रही है. Is it only, you know, एक वो जो grapevine होती है, जो एक वो जो क्या बोलते हैं उसको, जो एक सरगोशी हो रही होती है या जो without any evidence बात हो रही होती है. Is it like that, or is it coming from a scientifically proven study? That is what is important. So it's so important to keep your biases on one side when you critically appraise a paper, and understand the positives and the negatives of a paper. अगर आप बिरयानी की example लेते हैं, तो personally you might not like biryani, but that doesn't mean that you cannot critically appraise the biryani. And let me give you an example. जो food critics होते हैं, जिनकी job food critique करने की होती है, जो restaurants के लिए काम करते हैं, I don't think they like all the dishes in the world, but their job is not to like a dish. Their job is to critically उसकी presentation कैसी है, अगर उसमें गोश्त है तो वो गला हुआ है कि नहीं गला हुआ, उसमें spices level क्या है, उसका texture कैसा है, उसका composure कैसा है, keeping in mind कि उनकी personal preference है या नहीं है, that should not interfere with the judgment of the biryani. And I know it's really hard to get that. It's really difficult to achieve that, particularly this conversation, to achieve it in one setting. But if you want to just remember one thing that is important to remember, critical appraisal means being fair, being unbiased in providing your critique. I don't know if it helps or not, but this is something to think about in the wider context of scientific papers and scientific research. Any other comments or questions, please? What is the I would be very interested to know, what is the level of research methods or scientific research that you teach to your students? Can somebody share, please?
Good afternoon. Can I ask a question? जी ma'am, please पूछिए. Okay. When usually students come to the this point when they have to analyze or they have to read the research papers, before that they usually adopt it to the textbooks. Like whatever they are reading, it is true. So it is sometimes very difficult to understand or to get them to path that okay, for textbooks all of you have read is okay, but when you are studying a research paper, the knowledge available on net or the knowledge available on databases, they comes from different sources. They can be third party or cannot be. So can you put some suggestions on this, how we can make the students to understand this point? Absolutely, and I think you raise a very important point that the simple answer is कि देखें, you have to make your students into researchers. ठीक है? You have to make your students into independent thinkers. उनके अंदर जो साइंटिफिक क्वेरी है, जो उनके अंदर जो इंट्रिंसिक क्वेश्चनिंग करने की जो एबिलिटी है, वो आप लोगों ने उसको इनकरेज करना है. जो किताब में लिखा है उसको तो आंखें बंद करके स्टूडेंट्स ने पढ़ लिया, जो टेक्स्ट बुक में लिखा है हम सब भी ऐसे ही पढ़ते आए हैं. बट दैट इज द प्रॉब्लम कि अगर स्टूडेंट क्वेश्चन नहीं कर सकता साइंटिफिक पेपर को, या उनको वो स्किल्स नहीं पता कि कैसे हमने साइंटिफिक पेपर को क्वेश्चन करना है, that is what where critical appraisal comes in. और जो भी आपने बात की कि वो you know exactly हम अपने बच्चों को सिखाते हैं कि don't trust everything you read on the internet. तो इसी तरह हमने स्टूडेंट्स को सिखाना है कि बेटा if you are googling something about cancer for example, अगर आपने एक वर्ड कैंसर लिखा है, कैंसर स्क्रीनिंग लिखी है for example, you are going to receive millions and millions of results. ऐसा ही है ना, जब आप एक वर्ड लिखते हैं, where on earth will you begin from? आप कैसे एनालाइज करेंगे, कहाँ से स्टार्ट करेंगे आप? Nobody has the time to go through millions and millions of those results. So there has to be a way कि जिसमें आप you can choose the reliable studies, you can choose the valid studies, and that is why critical appraisal is, this is what critical appraisal is enabling you to do. It is teaching you कि आपने कौन सी studies उठानी है, आपने कौन सी स्टडीज को डिस्कार्ड कर देना है, आपने कौन सा एकेडमिक पेपर पढ़ना है और कौन सा पेपर आपके काम का नहीं है. एंड अगेन गोइंग बैक टू दिस स्लाइड, द स्टार्टिंग पॉइंट इज फाइंडिंग द, टेल देम हाउ, टीच देम कि पेपर कैसे फाइंड करना है, यानी कि उस डेटा तक कैसे पहुंचना है, चाहे वो आपने कोई वेब का यूज करना है, चाहे आपने कोई और डेटाबेसेस यूज करने हैं. दिस इज वेयर यू हैव टू टीच देम टू हाउ टू बी क्रिटिकल when they approach limitless information on the internet. और जब एक बार वो क्योंकि आपने उनको इंडिपेंडेंट थिंकर्स बनाना है, यू हैव टू गिव देम द साइंटिफिक इंक्वायरी, और जब एक दफा उनको वो पेपर्स मिल जाए, इवन उसमें से भी फर्दर रिफाइनिंग करनी है, टाइटर क्वेश्चंस यूज करें, इररेलेवेंट सर्च टर्म्स को निकालें, एब्स्ट्रैक्ट पढ़ें. It's like a funnel, top down approach. ऐसे होते refine होते it comes down to this much of questions and information. I don't know if this is helpful or no, but I've tried to respond to your question. Yes, dear, thank you so much. Thank you. Any other? मैं आपसे जो question पूछना चाह रही हूँ वो ये पूछना चाह रही हूँ कि hang on. Thank you, Nigar. Thank you very much. What I want to ask you is कि आप सब लोग जो students को पढ़ा रहे हैं, what kind of research skills or what level of research methods की उनके पास knowledge है या वो उनके syllabus में शामिल है? Can somebody please share with me? For example, do students know about qualitative and quantitative research methods? They do? Okay, fantastic. जब qualitative की बात करते हैं तो कौन-कौन से research methods उनको सिखाए जाते हैं? Can somebody tell me please? And I totally appreciate कि यहाँ पे there are different variety of people, different जगहों से लोग आए हुए हैं, but I'm very interested to know because it means different things for different people. What sorts of qualitative methods are taught to your students? Can somebody share please? अरे लगता है मैंने बहुत मुश्किल सवाल पूछ लिया. हमारे यहाँ फार्मेसी प्रैक्टिस एक सब्जेक्ट है, जैसे यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में सोशल फार्मेसी के नाम से है. उसमें हम जो प्रोजेक्ट्स करवाते हैं, जैसे कोविड की आजकल सिचुएशन रही है,
तो मैं एक प्रोजेक्ट करवा रही थी जिसमें कोविड वैक्सीन का इफेक्ट ऑन मेंस्ट्रुअल साइकिल इन डिफरेंट एज ग्रुप्स। तो उसके लिए हमें साइंटिफिकली फार्मेसी में कुछ अलहदा से सॉफ्टवेयर अवेलेबल है जो डाटा को एनालाइज करते हैं क्वालिटेटिवली, और उसमें हम इनपुट करते हैं और उनका डिफरेंट उनके मोड्स है और उनके नाम है। मसलन एक हम यूज करते हैं फार्मेसी प्रैक्टिस में इसी तरह के डाटा को क्लिनिकली एवेलुएट करने के लिए, उसका नाम है स्टेपल। तो वो हमें अवेलेबल होता है, हम डाउनलोड करते हैं या परचेज कर लेते हैं। Okay. बेकार है। So basically this is sort of specific to pharmacy. मेरा ख्याल है उस फील्ड के लिए specifically एक जो है आपने मेथड शेयर किया. Thank you ma'am. I'm just figuring out जो qualitative methods जो आप में से कौन-कौन qualitative methods actually सिखाता है खुद से students को? मदीहा, ये सब जो है ना बायोसाइंसेस से ये क्वांटिटेटिव मेथड यूज करते हैं। Okay, so more quantitative, fantastic, lovely. We all love numbers. ठीक है, हम सब नंबर वाले लोग हैं. So I'm guessing कि आप सब लोग मैथ में बहुत तेज हैं फिर, क्योंकि अगर हम जब क्वांटिटेटिव की बात करते हैं तो we are talking maths, we are talking stats. ऐसा ही है ना? So do students know about different statistical tests? Do they know about chi-square, for example? उनको सिखाया जाता है undergrad level पे? Okay. ANOVA, ANCOVA, do they know about that as well? Okay, fantastic, lovely. So you're already telling me कि जो आपके students हैं, they are already aware of scientific approaches. अगर वो अभी undergrad पे हैं, जब वो postgrad पे जाएंगे, तो this is where also they will become independent thinkers, they will become researchers, they will become scientists, and this is where all of these skills, critical evaluation, academic writing, referencing, they will all start coming in. Is there another comment? उस तरफ मेरा ख्याल है कुछ कहना चाह रहे हैं हमसे? I want to share one thing. जी मैम, That बताइए. in undergrad level, we used to teach them about how to use referencing softwares, about how to analyze the data with some software like GraphPad and SPSS, and different type of referencing software. People are using this. Similarly, for the bioinformatics, the students are also using different tools for their research. Okay. So basically जो I suppose जो software है that is mostly SPSS जो आप use कर रहे हैं बच्चों के लिए. SPSS and GraphPad Prism 5. Okay. Is somebody using R by any chance? Okay, so I think SPSS and graphics app use kar. Fantastic, that's fine. So I think we have to remember that the software is a different thing and the research method is probably a different thing. They are both intertwined, and I think let's just continue with the understanding that आप जब अपने बच्चों के साथ काम कर रहे हैं, you are helping them become scientists, and this is where their critical thinking has to check in, because as scientists they have to question. This is their job, to question and analyze. So I will end the section 2 here, which is about critical skills. आखिर में एक और भी time होगा question and answers या comments के लिए. I'll quickly glance here. Phenomenological, oh my god, मैं तो ये नाम भी नहीं बोल पाती साकिब साहब, but whatever that is, that it's fine. I think what you're saying is कि आप critical appraisal skills इसके लिए use करते हैं. That's fine for case studies. Okay, cool, thank you. Let's move to section number 3, which is the academic writing skills. आप सब यहाँ पे academics बैठे हुए हैं, जो on call हैं वो academics हैं सब. This is a critical, the most important skill for anyone who is studying life sciences, biosciences, medical sciences. I think when I was a student, many years ago, जो मैंने एक चीज मेरे पास कोई academic writing skills नहीं थे. उस वक्त जो मेरे पास skill था, जो हमें मेरे कॉलेज में सिखाया गया, that was copy and then paste. और maybe आप में से कुछ लोग शायद relate कर सकें इस चीज को, but there was no concept of academic writing, there was no concept of referencing back in those days. Time has moved on. बहुत आगे जा चुकी हैं चीजें पाकिस्तान में, वर्ल्ड वाइड, यूके में things have moved. बच्चों की जो अभी
critical thinking है, उनकी जो inquiry based learning है, उनकी जो academic writing है, उस पे अब बहुत तवज्जो दी जाती है, and I'm so happy to see that. क्योंकि मेरे लिए सबसे बड़ा जो शौक था जब मैंने यहाँ पे अपनी पढ़ाई स्टार्ट की यूके में, it was this कि मुझे academic writing नहीं आती थी. I had no idea what I could write an essay. I had good English, but it was not academic. Academic writing is completely different to English writing. So if you are here today, if you are listening to this conversation, I would ask you if there is one thing you take from today, please do give your students the academic writing skills. क्योंकि हमारे बच्चे सबसे ज्यादा मार यहाँ पे आके खा जाते हैं. आप उनको मैथ का क्वेश्चन दे लें, मुश्किल से मुश्किल वो हल कर लेंगे. आप उनको पूरी डिक्शनरी याद करने के लिए दें, वो डिक्शनरी याद कर लेंगे. आप उनको इंटरव्यू में बिठा दें, they will do amazing. When you ask them to do an academic essay, that is where they struggle. And I say this after 12 years of experience of working with international students के हमारे बच्चे जो struggle करते हैं वो academic international universities में जब वो आते हैं, this is the first step. ये जो पहला hurdle होता है उनका, अक्टूबर में सेशन स्टार्ट होता है, नॉर्मली नवंबर में पहली असाइनमेंट ड्यू होती है. बाय नवंबर दे हैव गिवन अप होप के एक्सक्यूज मी by November they have literally given up hope कि मुझे academic writing नहीं आती. I don't know where to start from. I don't know how to do proper referencing. I don't know anything about plagiarism, etc, etc, etc. So if you are in a position, Allah Ta'ala ने आपको इस जगह पे बिठाया है कि you are giving knowledge to your students, please do give them the knowledge, give them the skills of academic writing. And what we will try is कि literally एक डेढ़ घंटे की conversation में ये skills cover करना बहुत मुश्किल होता है, because these are full-fledged workshops, as I'm sure you will know. But what we can just do is we can go through these next few slides together, literally as a refresher, ताकि जो आपके जहन में points हैं वो refresh हो जाएं, and then you can take those back to your students. Are we ready? Give me a thumbs up, please, if you're ready. Fantastic, thank you. और जो online सुन रहे हैं वो भी thumbs up करते हैं. Okay, so basically academic writing, structuring the essays and research papers, how to structure the argument, the writing process, and then developing an effective writing style and avoiding plagiarism. Very quick overview. When we talk about the structure, we talk about structure of essays. सबसे पहली मेरा ख्याल है ये चीज होती है कि जब हम बच्चों को यहाँ पे assignment लिखने के लिए दी जाती है कि एक academic essay, एक question दे दिया जाता है that this is the question or title. Now write an essay, 2000 words का essay है या 3000 words का critical appraisal है, which is by the way also an academic writing element. So what is the structure? The structure of the essay is to outline and develop a preconceived, जो कि पहले से सोचा हुआ है, and coherent argument, not left, right, center. It has to be coherent. It has to flow through. It has to persuade the reader of the value of that argument, whatever the argument. चाहे वो argument भले ये है कि garlic खाने से COVID ठीक हो जाता है, but the essay should be so कि वो reader को उस बात पे convince करके छोड़े. And then why is it more powerful than potential competing arguments? कि आपके जो essay का argument है, ये जो आपके student के essay का जो argument है, why should somebody believe that? उसमें क्या ऐसी खास बात है? So basically essay question से start करते हैं. Usually what is the essay question asking you to do? Analyze the question. Basically 3 components होते हैं इसमें. There is a task word, what you are required to do with the material. Then there are some content words. What content should you be drawing on? What method, what research you should be using? And then there are delimiters. What are the limits of the content that you need to draw on? And I'll give you an example, and it would be great to interact with you. Think of this essay title: critically evaluate the usefulness of motivational theories for understanding preventive health behavior. अब जो लोग online सुन रहे हैं और जो लोग stadium में बैठे हुए हैं, can you tell me what are the task words? Remember, task words वो हैं what you are required to do with the material. You can shout out the answers, or people who are online, you can type in the answers. What is the task word in this question? Critically evaluate. Yes, critically evaluate.
That is the task word, which is telling you what to do. ठीक है? What is the content word? And the content word, for your reminder, it is what content you should be drawing on. Understanding the preventive health behaviors. Motivational theories. ये आपका content है जिस पे आपने जाना है. You don't have to go towards the recipe for making biryani. You don't have to go towards how to plant trees in my garden. You don't have to go towards how to fix a puncture in my tire. The content word is motivational theories. ये content है जो कि critically evaluate करना है. ठीक है? And then what are the delimiters? And for your reminder, delimiters, what are the limits of the content that you need to draw on? Preventive health behavior. आपने जो टास्क वर्ड है वो आपने क्रिटिकली इवैल्यूएट करना है. जो कंटेंट है आपने किस चीज को क्रिटिकली इवैल्यूएट करना है? मोटिवेशनल थ्योरीज को. उसके अंडरस्टैंड डिलिमिटर क्या है, उसको जस्टिफाई कैसे करना है? टू प्रिवेंटिव हेल्थ बिहेवियर्स. सो आई थिंक इट्स सो इम्पोर्टेंट कि जब आप क्वेश्चन सेट कर रहे हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए, और व्हेन यू आर गिविंग देम दैट इंफॉर्मेशन, take some time to set the question in a way that it has these three components in it. It could be anything. आप biosciences में हैं, आप pharmacy में, जो भी आपका है, your question should contain these three things, because remember, keep reminding yourself that you are helping your students to become scientists. You are helping them to become academic writers, independent thinkers. So when you have pinned down the essay question, help your students to develop the essay plan. Normally, you start with an introduction, about 10% of the word count. In the introduction, you acknowledge and contextualize the question. You contextualize the question. For example, I'll give you a very easy example. The universal truth is that chips खाने से मोटापा होता है, right? We all agree on that. If somebody disagrees, they can tell me now, and then we can talk about that. Does somebody disagree with that? Okay, so chips खाने से मोटापा होता है. But how many times can we frame this question in a different way? Can we say, for example, कि ages 9 years to 14 years में chips खाने से कितना मोटापा होता है? Or can we say कि people who have existing heart conditions, उनमें chips खाने से कैसे होता है? So whatever the context is, whatever the essay question is, we have to contextualize that. And in the introduction section, we give an overview of the structure of our argument. Then we move on to the body of the essay, which is about 80 to 85% of the total word count. We develop our argument, whether we are doing a critical review, whether we're doing a literature review. We synthesize the evidence to support our argument. And then the final bit is the conclusion, which is about 5 to 10% of the word count. We sort of draw together the main points of the argument and to conclude that the viewpoint is valid, or indeed not, whatever the essay question is. That is sort of a rough essay plan. Then the writing process starts. Okay? Now the writing process, and again, I will totally acknowledge that an hour 40 minutes is not enough. ये पूरा एक full-fledged half-day workshop होती है writing process की. Right now, what we can just about manage to do is we can skim through these things as a refresher for you, so that when you teach these things to your students, you are well equipped. We start from pre-writing. You just make some, main notes, main points. Then you plan, you do the essay structure. Then you draft it, then reflecting and revisiting, making changes, then editing and proofreading, and then completion or the submission of the essay. And the writing style has to be really effective writing style. It has to be formal, because an academic article is always a formal article. It has to be economical. By economical, I mean in terms of the word count, because you all know that जब हम international journals में papers submit करते हैं, तो there's a very strict word count. उससे हम ना इधर हो सकते हैं, उससे हम ना उधर हो सकते हैं. You have to be, this is one of the skills we all struggle with, कि कम लफ्ज़ों में ज़्यादा बात कैसे कहनी है, how to be economical with words.
The writing has to be clear, it has to be simple, it's not use jargons, not try to bombard the reader with too many complexities. It has to be assertive. अगर जो बच्चा जो academic essay लिख रहा है, अगर उसको खुद अपने argument पे यकीन नहीं है, तो they cannot convince the reader. It has to be confident and it has to flow at an appropriate pace. You cannot jump from introduction to discussion and then jump back to theory. It has to flow at a pace that is already planned out at the planning stage. Very quickly, let's talk about plagiarism. अभी मेरा ख्याल है आप में से किसी एक ने जिक्र भी किया था कि this is one of the things, it's such a big risk कि हमारे जो academic जो हम writing करते हैं उसमें plagiarism by accident. We end up, by accident हम किसी और की ideas, किसी और का काम चुरा लेते हैं. And very quickly, what is plagiarism? Can somebody quickly tell me? I'm sure you all know this. Maybe I don't need to ask you. It is literally quoting someone's work or presenting somebody else's ideas without acknowledging their efforts and their time. And this can be done accidentally as well. In academic circles, it is a serious offense, academic dishonesty, and it's called the presentation of another person's thoughts or words or artifacts, pictures, images, songs, as though they were your own. Yeah. Again, very quickly, copying words or ideas from someone else without giving credit. And it is as easy as failing to put a quotation in the quotation marks. I think I know a student, उन्होंने एक quote reference दिया था, but उस quote पे वो commas लगाना भूल गए, and because वो quotation marks या commas लगाना भूल गए, that counted as plagiarism, and they were penalized for it. And I think plagiarism is also when basically it is the same concept, but we are just changing words, of a source without giving them the credit. And हमारे बच्चे, हम लोग, this is a very, very common mistake to make. And then talking about paraphrasing and referencing, this is so important to teach our students कि उनको paraphrasing और referencing की आदत हो और उनको different referencing styles का पता हो. So the simplest way to avoid plagiarism is to paraphrase and reference all the sources, make notes in their own words when they are reading articles. And then once you've read an article, move the original source out of sight and try to summarize the findings in your own words, because then it means that you are actually reflecting on what you learned, not copying the article over word by word. Of course, there's always a question, should I paraphrase or should I quote? So putting in your own words, that is called paraphrasing. अगर आपने एक article पढ़ा है, उसको फिर आप side पे रखते हैं, then you try and come back and write about it again. That is paraphrasing. You are putting it in your own words, which is the best practice. One level, another one, which is the acceptable practice, is using direct quotes from a research paper, within quotation marks, and using the appropriate citation, which is an acceptable practice. It's good, of course. It uses up a lot of word count, by the way. And the worst and the unacceptable practices that students are using direct quotes without quotation marks, without citation, which is exactly what plagiarism is. जैसे मैंने आपको example भी दी कि उस student ने पूरे का पूरा quote एक research paper से उठा के लिखा हुआ था without putting the quotation marks, and this could happen very easily by accident, but this is plagiarism. And I'm sure you are all familiar with self-plagiarism as well. कई दफ़ा हम अपना जो पिछला काम होता है उसको हम refer करते हैं कहीं पे without making a note of it. That is very easily done, self-plagiarism. So be mindful and teach your students कि अगर वो अपने पिछले किसी essay को refer कर रहे हैं या पहले उन्होंने कोई काम किया हुआ है, कोई article लिखा हुआ है, तो they are also giving citation for that. Effective writing, this is the last slide, I promise you. Effective writing is a key skill. ये एक बहुत important skill है for healthcare professionals. अगर आप healthcare professional नहीं भी हैं, आप biochem में हैं, आप pharmacy, जिस भी field में आप हैं, mostly life sciences के लोग आज यहाँ बैठे हुए हैं. For anybody in life sciences, effective writing is an absolutely critical skill. It's not only about writing, planning, drafting, reflecting, proofreading. It is more than that. It is about building a coherent argument. And what you must teach your students is that the time they will spend in planning
their article or planning their research study or planning their essay, that is time well spent. The style that they want to take, that is a skill that will develop over time. It will be nurtured. It will improve over time. They can consult textbooks. They can look at other style guides. There is so much information on the website, on internet, that it's a plethora, and everyone is free to Google different Harvard writing style hai, APA writing style hai, in-house writing style hai, whatever that would mean. And the referencing and the writing style is what will actually protect you, or by you I mean your students, from plagiarism. So I totally appreciate that it is really hard to encompass everything about effective academic writing in one conversation like this, but I don't want to overburden you with information. I don't want to overburden you with too many slides, too many text words. If there is one slide that I would ask you to think about, it is this slide. Please do pay attention to this. Do teach your students how to structure their essays, how to do academic writing. And I think normally jo meri beti, she does this very often. She wants to start writing an essay and she wants to get it right the first time. कि वो जो पहली बार लिखे वो बिल्कुल ठीक हो, उसमें ना कोई grammatical error हो, ना उसमें कोई argument का error हो, ना उसमें कोई spelling mistake हो. And I think this is a common error that we all make. We forget the drafting part. We forget the planning that needs to go into academic writing, and we jump straight on to writing a perfect essay the very first time. So if you are teaching your students the writing process, if you are teaching them how to do academic writing, teach them how to plan. Teach them how to build a draft. Teach them how to go through the draft again and again, edit it, proofread it, until they reach a point where they feel they are very happy. So I think this is it. I will again quickly recap. We have just done academic writing. We have done critical appraisal. I want to ask you now, my two questions to you are, what are the most common challenges that you face in teaching students, supervising students, working with them, and particularly within life sciences or within biological sciences? And this is the same question to people who are online. The second question is, and again, this is maybe for virtual university to take up, what do you think will help you? What sorts of trainings or what sorts of interventions will help you as a teacher so that you can better deliver your lesson plans? Over to you, please. I'll stop the screen share now because I would really like to hear from you. G, please. Who would like to take the So the most challenging thing in supervising the students is that they've got a very weak language expression. So although they've got really marked out concepts in their brains, but they're not able to put it down in words. So probably that takes almost a whole year or a semester for them to come up with the perfect draft, or probably more than a year as well, because the English expression, the correction needs to be done at the grassroots school and higher secondary level. At the level of undergraduates, we cannot really do much in 6-month semester. I totally appreciate. Our schools should work on English expression. बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, and I think this is, I mean, if there's one thing, the most important thing is कि हमारे बच्चों में जो लिखने की power है, they struggle with that. That is, and I think unfortunately that is the one thing जहाँ हमारे बच्चे थोड़ा सा मार खा जाते हैं या थोड़ा सा disadvantage हो जाते हैं. Like I was saying, उनसे math के question करा लें, they will do it. उनको dictionary रटवा लें, they will do it. When it comes to actually writing a coherent argument, that is where they struggle. And you're right, this goes back to school and college. वो 12 साल तकरीबन गुजार के आते हैं, right? 10 years in school and 2 years in college, ऐसा ही है ना? या 3 years in college, whatever. So you expect as an undergraduate teacher कि जब वो university में आएंगे, they will already have those skills. और यही इसी बात का रोना रोने हम आज इकट्ठे हुए हैं कि when they come to university, not all of them have those skills. And again, I wish I had a magic solution for that, कि वो कोई ऐसी चीज होती कि हम उनके वो skills सारे, I think मुझे नहीं पता कि आपके modules में यहाँ पे usually जो first बच्चे को जो first year होता है undergrad में, there is an entire module dedicated to
teaching academic writing, जिसमें उनको argument build करना सिखाया जाता है, literally starting from basics. उनको critical thinking सिखाई जाती है कि question कैसे करना है, हर चीज को accept नहीं कर लेना, just like without questioning the validity, but उसको question करना है और कौन कौन से question पूछने हैं, जैसे कि हमने critical appraisal की slides में देखे थे, और उनको ये सिखाया जाता है कि plan कैसे करना है, ऐसे लिखना कैसे ऐसे. So there are, what I'm saying is that there are resources dedicated to teaching writing to students here in the UK. जी मैम, आप बताएं, आप क्या कह रही हैं? I want to add some comment regarding this language barrier basically. क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स को घरों में भी और स्कूल्स में भी जो बेसिक मीडियम है ऑफ कम्युनिकेशन इट इज उर्दू, और अगर हम उर्दू में उनको कुछ रिटर्न करने को दें तो वो बहुत बहुत अच्छा क्रिटिकली उसको एनालाइज भी करके देते हैं, बहुत अच्छा सा हाइपोथेसिस भी डिजाइन कर देते हैं. उर्दू में आप कुछ भी पूछना चाहें वो बहुत अच्छे से समझा सकते बताते हैं. बिल्कुल. हम लैंग्वेज चेंज करते हैं तो उनके लिए तो इट्स अ एलियन लैंग्वेज, तो वो तो जितनी भी आप कोशिश कर लें. आपने देखा होगा, मुझे अपने एजुकेशन सिस्टम पे एक एतराज है. वी आर नॉट वर्किंग फॉर गिविंग देम इंफॉर्मेशन. हम वो 10 और 12 इयर्स उनको लैंग्वेज सिखाने में लगाते हैं. बिल्कुल. हम लैंग्वेज सिखाते हैं उन्हें 100%. याद करना है. दैट्स इट. बिल्कुल बिल्कुल मैम, आई शेयर योर फ्रस्ट्रेशन. तो जब हम इस पे रखते हैं उनको, तो फिर हम कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि दे कुड बी अ गुड क्रिटिकल थिंकर्स. वो तो सिर्फ लैंग्वेज का रट्टा लगाएंगे. बिल्कुल. में रहेंगे कि पास्ट में क्या हुआ, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस कैसे यूज करना है, सुपरलेटिव डिग्री कैसे यूज करनी है, उसके साथ डी लगना है या नहीं लगना. दैट्स इट. जो कि हमने आज तक अपनी लाइफ में कभी याद भी नहीं रखा. एंड आई थिंक निगहत जो है वो भी यही कमेंट ऑनलाइन लिख रही हैं कि द मोस्ट चैलेंजिंग थिंग इज दे डोंट हैव बेसिक राइटिंग स्किल्स, एंड टू मेक देम अंडरस्टैंड द बेसिक राइटिंग स्किल्स इन एन ऑनलाइन, इन अ वर्चुअल सिस्टम में तो आई मीन उनको रियल वर्ल्ड में सिखाना मुश्किल है, तो ऑनलाइन तो हम बिल्कुल भूल ही जाएं. यूरब, आई शेयर द सेम फ्रस्ट्रेशन एज यू. मैं बिल्कुल आई एम ऑन बोर्ड विद यू. आई एम अ विक्टिम ऑफ दैट. जब मैं स्टूडेंट थी मुझे ऐसे तो लिखना आता था, लेकिन मुझे एकेडमिक राइटिंग की अलिफ बे भी नहीं पता थी. राइट. आई वाज फॉर्चुनेट, आई वेंट टू कॉन्वेंट स्कूल. कुछ ज्यादा उन्होंने तवज्जो दे दी लैंग्वेज पे, तो मुझे एक दो लफ्ज भी आ गए. बट जो शौक लगा मेरे सिस्टम को, मुझे यहाँ यूके में आके मैं अपनी तरफ से समझ रही थी मैं क्लास की सबसे लायक बच्ची होंगी when I started my masters, and I was horrified to realize कि ये क्या हो गया. मुझे तो academic writing की, मुझे तो ये नहीं पता कि मैंने अपना पहला जुमला क्या लिखना है academic. I can write an essay on my best friend, I can write an essay on, I can write a newspaper article, I can write मैं अपनी बच्ची की स्कूल में दरख्वास्त भी आराम से लिख सकती हूँ. I can write a letter to my husband, I can do all of those, I can write an email. लेकिन जहां पे वो academic writing की बात आएगी, language is such an important issue. और ये लाइक ऐसे इसी बात का रोना रोने या इसी बात को इसका सोल्यूशन फाइंड करने, और आई थिंक व्हाट आई कैन से इज के हम या मैं और आप एक सेटिंग में इस सिस्टम को हम डिस्टर्ब नहीं कर सकेंगे. हम एक घंटे की 2 घंटे की कॉन्वर्सेशन में ये चीजें नहीं, ये सिस्टमैटिक चेंजेस हैं, ये पॉलिसी चेंजेस हैं, ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी जाती है इस पे, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी जाती है. आई थिंक जो हम सब अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में कर सकते हैं वो यही कर एज टीचर्स, और टीचर्स तो वैसे ही कौम का मामार होता है, मतलब कि जो जिस ओहदे पे आप लोग फाइज हैं, आप तो वैसे ही कौम के बिल्डर्स हैं. आई थिंक जो अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में हम कर सकते हैं कि जो हमें 1-2 लफ्ज आए वो हम बेहतर से बेहतर तरीके से जो सिखा सकें अपनी कैपेसिटी में, उन्हीं कंस्ट्रेंट्स में रहते हुए. मैं आपकी बात को 100% सपोर्ट करती हूँ. लैंग्वेज का इशू है, घरों में जो प्रीडोमिनेंट लैंग्वेज है वो उर्दू है, स्कूल्स में नहीं सिखाई जाती इतनी प्रॉपर्ली, इन द सेंस के जो स्ट्रक्चर कैसे बिल्ड करना है, वहां पे ग्रामर पे जोर जाता है. बस इन्हीं कंस्ट्रेंट्स में रह के हमने काम करना है. मेरी लाइफ में या आपकी लाइफ में ये सिस्टम मोस्ट लाइकली चेंज नहीं होगा, बट वी होप फॉर अ बेटर फ्यूचर. तो आई होप कि समहाउ आपकी बात को, शायद आपको थोड़ी सी तसल्ली हो गई हो मेरी रिस्पॉन्स से, बट वी विल वर्क टुगेदर एज लॉन्ग एज वी आर अलाइव. आई थिंक आपके जो 7 कॉलीग बैठी हुई हैं उनका शायद हाथ रेस था. वाज दैट यू? ओके, समबडी एल्स प्लीज. जी मैम. अच्छा बेटा, आप माशाल्लाह बहुत अच्छी प्रेजेंटर है. शुक्रिया मैम. और बड़ा अच्छा लगा आपको सुन के. मैं आपको एक बात बताऊं, पाकिस्तानियों ने मेडिकल साइंसेस में, इंजीनियरिंग में टॉपर्स में रहे पूरी दुनिया में.
यानी जब यूके और अमेरिका की एम्बेसीज में सिलेक्शन हुआ करता था तो हमारे डॉक्टर्स पहली पोजीशंस में होते थे, हमारे इंजीनियर्स। जब यूईटी बनी थी एक कॉलेज से, उसमें 58 की बात कर रही हूँ मैं, इसी तरह किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज जो अब यूनिवर्सिटी होता था, बिल्कुल टॉपर्स होते थे और कोई चैलेंज नहीं था, मतलब उनको कोई चैलेंज नहीं कर। इसका मतलब है कि बैरियर लैंग्वेज नहीं था। आइंस्टाइन की एक बात है कि अगर आप एक चीज को सादे तरीके से समझ सकते हैं तो आप उसको सादे तरीके से बयान भी कर सकते हैं। ट्रू। और जब आप उसको बयान कर सकते हैं तो इसका मतलब है वो आपको आती है। करेक्ट। हमारे असातिज़ा जो उस वक्त के थे वो वाकई इनपुट करते थे बेसिक पे, समझाने पे। भाई मेरे ऐसा नहीं, आपको पता है 40 into 40 का स्क्वायर 800 होता है, 800 होता है ना उसका। जी जी जी। एक मेरे उस्ताद ने फॉर्मूला मुझे बताया, उन्होंने कहा बेटा 40 into 40 करना है ना तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कर लो। अब आप इस फॉर्मूले को किसी भी जगह अप्लाई कर दे, 45 का होल स्क्वायर ले लें, आपको जवाब आ जाएगा। 4 चौके 16, 5 5 10। मैम कोई मैथ का क्वेश्चन ना पूछ लीजिएगा। नहीं नहीं, मैं आपको ये I'm just joking, but I get your point. हमारे ऐसा, अच्छा हमारे स्टूडेंट्स ने क्या किया, उन्होंने उस चीज को सिंप्लीफाई करने की बजाय पैसिव की तरफ चले गए। जो लिखा है उसको याद कर लो। बिल्कुल बिल्कुल, without understanding the basics. Correct. Without understanding, without putting into it. बिल्कुल। मेरे वालिद एक अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट थे और मैट्रिक, और वो इतनी खूबसूरत इंग्लिश लिखा करते थे। बिल्कुल। अच्छा उस वक्त उनको क्या कोई लामा बैठ के इंग्लिश की, बिल्कुल, और उस वक्त तो ये कंप्यूटर भी का दौर नहीं था। नहीं था। बिल्कुल। आप उस वक्त के सीएसपीस को देख ले। बिल्कुल बिल्कुल। कहीं गैप हमारी स्ट्रगल में है। बिल्कुल बिल्कुल। कहीं गैप हमारी उसमें है। मुझे जो सबसे ज्यादा तकलीफ दे बात होती है अपने स्टूडेंट्स के हवाले से, कि मैं सबसे पहले उनसे ये कहती हूँ कि आप ये बताएं आपकी जिंदगी का मकसद क्या है। Why you are a human being and you are a female. ये सब तो ऊपर वाले की करम है। Next what? अगला क्या है, आगे क्या है। इसी तरह जब आप एक ऐसे पढ़ रहे होते हैं या इंग्लिश लिटरेचर का या साइंटिफिक, उसमें जो क्रस्ट है वो ढूंढना कि आखिर इसका मेन मैसेज क्या है। बिल्कुल बिल्कुल। मेन मैसेज क्या है। अगर आपको वो मेन मैसेज पता चल जाए और आप उसको किसी भी जुबान में बयान करते हैं, डजंट मैटर। बिल्कुल बिल्कुल मैम, बिल्कुल 100%। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और मैम अगेन आई थिंक व्हाट आई वांट टू ऐड इज के आई फील इन मेनी वेज टीचर्स के लिए, जो आप जैसे लोग हैं जो बैठे हुए हैं जो पढ़ा रहे हैं, देयर इज सो मच ऑफ वर्क प्रेशर कि बस वो सिलेबस कंप्लीट कराना है, ट्रेनिंग की अपॉर्चुनिटीज कम है, काम पे काम होता है। आई मीन यू नो इट्स अ टू वे स्ट्रीट। उधर बच्चे जो हैं वो लेजी पे लेजी हुए जा रहे हैं, उनको पका हुआ हलवा चाहिए। नहीं, हमें इंफॉर्मेशंस मिल रही हैं, बिल्कुल हमें नॉलेज नहीं मिल रही कि बस वो एक इत्तलात है। और वो इत्तला कितनी सच है, और यही साइंटिफिक में भी हो रहा है। बिल्कुल। एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट को कहता है तुम्हें पता है वो जो फलां पेपर है वो मैंने पढ़ा है, वो बगैर देखे कि उस पेपर में कितनी सदाकत है या उसको मैं ढूंढूं, वो अपनी सहेली या दोस्त की बात सुन के उसी पेपर को डाउनलोड करता है। बिल्कुल छाप देता है। बिल्कुल मैम, यू आर राइट। यू नो ये आई थिंक पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ गई। एक खातून जो अपनी पसंद के जोड़े का दुपट्टा ढूंढने कोई आधा घंटा चक्कर लगा सकती है, एक लड़का जो अपनी पसंद के मोबाइल की वर्जन ढूंढने हफीज सेंटर या जहां जहां वो है वहां के 20 चक्कर लगा सकता है, वही लड़की और वही लड़का उस आर्टिकल को 10 मुख्तलिफ जगह से क्यों नहीं पढ़ सकते। इसी बात को तस्करा करने के लिए, बयान करने के लिए मैम हमें, यू आर राइट, एब्सोल्युटली, आई टोटली एग्री। मेरा ख्याल है आई फील के जो ओनस है या जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इट इज ऑन बोथ साइड्स। आई थिंक
probably more so on students, क्योंकि I feel कि जिस तरह मैम आपने जिक्र किया, जब हम students थे सारे, कौन सा कंप्यूटर होता था, कौन सा गूगल होता था, कुछ भी नहीं था। हम सब लाइब्रेरी जाते थे, जो हमें पढ़ा, ओके आई अंडरस्टैंड दैट वाज अ डिफरेंट टाइम एंड नाउ इज अ डिफरेंट टाइम। और वो जो हजरत अली का कॉल है कि अपनी औलाद को उनके वक्त के मुताबिक बड़ा करो, क्योंकि वो उस वक्त के लिए पैदा किए गए हैं। सो आई टोटली सी कि देयर इज सम ओनस और सम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द स्टूडेंट्स। उनको स्पून फीड हम कितना करेंगे, और स्पून फीड करते रहेंगे तो वो जो पोस्ट ग्रेड लेवल पे जाएंगे, पीएचडी लेवल पे जाएंगे, वो तो बिल्कुल उनको पका पकाया हलवा चाहिए होगा। And at the same time, the onus is on teachers, as all of you, कि जो अपनी personal capacity में, उन्हीं constraints में रहते हुए जितना अपनी knowledge को आप extend कर सकते हैं, जो भी resources use, I mean, आज आप सबने ये conversation attend की है time निकाल के, this is one way. तो this is a two-way traffic, it's going to continue like this. और जैसे वो एक बड़ी विशफुल थिंकिंग होती है कि काश कोई ऐसी जादू की छड़ी हो कि हम घुमाएं और सबके पास वो क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स भी आ जाएं, सबको बिरयानी बनाना भी आ जाए, सबको एकेडमिक राइटिंग भी आ जाए। वी कैन जस्ट थिंक एंड होप फॉर दैट। बट थैंक यू फॉर योर इनपुट मैम। प्लीज डू शेयर विद मी, और बताएं मुझे। मेरे ख्याल है एक कमेंट ऑनलाइन था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। इरम ने लिखा है, शी हैज सेड कि mostly what I encounter is that students trying to avoid plagiarism, they break the entire structure of the sentence, and they need a lot of training in paraphrasing and summarizing. I don't know, आप में से कौन जो है वो इस चीज से भी you struggle with this कि students को जो paraphrasing, जो मेरी colleague के ऊपर focus हुआ है कैमरा, please can somebody move that? I think it would be nice to see everybody. मैम आपका कोई question है? Yes, जी I have मैम, a question. जी प्लीज बताइए मैम, बताइए। I would like to add that I think the first problem that students encounter is that the difference of approach. Like in study, they have different approach. वो समझते हैं कि हमने read करना है और उसका exam जो है वो same उसी में से आ जाएगा. But when they come to the practical or when they come to the research, there is a different approach जो कि students को लेनी पड़ती है कि आपने जो time दोगे, जो आप जो है जितना इसमें involve होगे, और आपको डिफरेंट अप्रोच करनी है। इसलिए नॉट कि आपने पढ़ा और उसमें से पेपर आ गया। नो, यू हैव टू डू क्रिटिकल थिंकिंग, यू हैव टू ब्रॉडन अप योर विजन। सो फर्स्ट अप्रोच ये डिफरेंस है। उसके लिए मुझे लगता है कि हमें दे मस्ट बी अ कोर्स या मस्ट बी समथिंग जो कि पहले से जो लास्ट ईयर में आके हमने रिसर्च करवानी है, उससे पहले ही बच्चों को पता हो कि कैसे उन्होंने जो है वो अपनी थिंकिंग को डेवलप करना है। बिल्कुल, टोटली एग्री मैम। मेरा ख्याल है जो आप बात कर रही हैं वो ये कि जो क्रिटिकल जो नॉलेज है उसको अप्लाई कैसे करना है, क्योंकि अगर एक क्वेश्चन आप दाएं से बाएं करेंगे तो वो शोर मचा सकते हैं जी क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आ गया है। राइट, ऐसा ही है ना। अप्रोच जो है वो डिफरेंट करनी पड़ती है कि आपने जस्ट इसको रीड करके अब्सॉर्ब नहीं करना, आपने इससे क्वेश्चन भी निकालनी है, इससे जो है वो आपने अंडरस्टैंड करना है और इससे एक स्टेप आगे भी बढ़ना है। बिल्कुल। हमने जो टेक्स्ट बुक में हम वहीं पे उठते हैं, लेकिन फॉर रिसर्च टू डू समथिंग एल्स हमने एक स्टेप आगे भी बढ़ना होता है। आगे बढ़ना है, यू हैव टू क्वेश्चन दैट, तलाश करना है, उसको कैसे अप्रोच करना है, वो स्टूडेंट्स को, एंड दैट इज एग्जैक्टली द साइंटिफिक इंक्वायरी जो कि हमें जो है अपने बच्चों को सिखानी है। जैसे मैम ने भी बोला अभी पहले कि उधर आके अगर वही स्टूडेंट जो है वो मोबाइल ढूंढने के लिए घंटों चक्कर लगा सकता है, तो पढ़ाने के लिए बिठाओ तो 2 घंटे के बाद उनका हाथ से वो मोबाइल नहीं, वो कभी वो फेसबुक उठा के चेक करते हैं, कभी उनको इंस्टाग्राम पे, देयर आर सो मेनी डिस्ट्रैक्शंस। तो आई डू फील समटाइम्स के उनकी तरफ से जो इनपुट होती है दैट नीड्स टू बी फर्दर पुश्ड, उसको ज्यादा करने की जरूरत है अगर हमारे बच्चों को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे आके compete करना है। अगर तो उनको वो एक मतलब बेयर मिनिमम डिग्री करके पास करके दैट्स इट, दैट इज डिफरेंट। लेकिन इफ दे हैव टू बिकम इंटरनेशनल साइंटिस्ट, इफ दे हैव टू बिकम इंटरनेशनल थिंकर्स, दे हैव टू बिकम क्वेश्चनर्स, एंड दैट बिल्कुल वो अप्रोच की डिफरेंस आती है, अप्रोच सिखाने की बात है। आई एम गेसिंग कि जो फाइनल ईयर होता है उसमें उनका रिसर्च प्रोजेक्ट होता है मोस्टली यूनिवर्सिटीज में। सो फाइनल ईयर से पहले जो है वो हर सेमेस्टर में या एवरी नाउ एंड देन कोई ना कोई ट्रेनिंग वर्कशॉप दे के कुछ दे के उनको ये इंक्वायरी सिखाना, दैट इज सो इम्पोर्टेंट। आई कैन नाउ सी हमारे कुछ मेल कॉलीग्स भी बैठे हुए हैं पीछे। आई हैव नॉट हर्ड फ्रॉम देम एट ऑल एक्चुअली। इट वुड बी नाइस टू हियर समथिंग फ्रॉम यू प्लीज, जो मेरे कॉलीग्स पीछे बैठे हुए हैं।
Okay, now I'll pick. So I'll close my eyes and I'll say last row पे left से third number पे जो सर बैठे हुए हैं, please share your thoughts with us. अब जो भी हैं प्लीज माइक दें उनको. थैंक यू जी सर. सर आप इधर ही थे, मैंने देखा नहीं. आप डिड यू अटेंड द होल सेशन या आप अभी आए हैं? Yes, I have attended the whole अच्छा session. जी, बताइए सर प्लीज. व्हाट डू यू थिंक? आई मीन आई वुड बी रियली इंटरेस्टेड टू हियर कि आपका जो एक्सपीरियंस है, व्हाट इज इट लाइक, आपके चैलेंजेस क्या हैं, व्हाट इज इट लाइक फॉर यू? Being a teacher and from background of academics, I really think that there is a diversity in students. Students में बहुत ज़्यादा diversity है. अभी कोई बात कर रहा था कि इस इरा में जो है वो स्टूडेंट्स इतने रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं, बट मैंने जो देखा है कि देयर इज़ एन इमेंस पॉपुलेशन प्रेशर. बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो अच्छा भी उनके पास बहुत अच्छा नॉलेज है. एंड वन ऑफ द रिसेंट न्यूज़ आई हैव हर्ड दैट अ स्टूडेंट फ्रॉम अ कॉलेज published an research article in Impact Factor journal. Mashallah. So the thing is that we should improve some content in schools and in colleges and the universities, but it just about के जो thinking ability है वो हर किसी की different है. So some students are very good, but some students need some special ट्रेनिंग जिनकी वजह से हम उनको कैपेबल बना सकते हैं. I totally मेरा ख्याल जी जी. And in the end, I will just say that your presentation was good, and we should conduct some training on plagiarism and paraphrasing in future. बहुत शुक्रिया सर. एंड आई टोटली सी, मेरा ख्याल है आई थिंक हम शायद कुछ बच्चों पे ज्यादा ही हार्श हो गए. आई थिंक वी मस्ट ऑल एक्नॉलेज के जहाँ पे हमारे पास ऐसे बच्चे हैं जो कि थोड़े लेजी हो जाते हैं, वहां पे ऐसे बच्चे भी हैं जो कि टॉपर्स हैं, जो कि दिन रात पढ़ाई करते हैं. वी शुड गिव देम क्रेडिट. यू नो, क्रिटिकल अप्रेजल का बहुत इंपॉर्टेंट रूल है कि गिव क्रेडिट वेयर क्रेडिट इज ड्यू. बिरयानी अच्छी बनी है तो कहें कि बिरयानी अच्छी बनी है. सो आई थिंक जितने भी यहाँ पे जो कॉलीग्स बैठे हुए हैं, अगर उनके वो बच्चे हैं जो आर रियली हार्ड वर्किंग, हु आर रियली डेडिकेटेड, वी मस्ट एक्नॉलेज दैट. और मेरा ख्याल है वो मैंने भी न्यूज़ देखी थी जो कि बच्चे का वेरी यंग किड जिसका रिसर्च आर्टिकल पब्लिश हुआ. दैट इज अमेजिंग. दैट इज अमेजिंग, क्योंकि हमारे ही कंट्री में बहुत अच्छे अच्छे वेंचर्स भी हैं, बहुत अच्छे अच्छे और बहुत लाइक फाइक बच्चे भी हैं. आप जैसे लोग हैं जो कि उन बच्चों को हेल्प करते हैं. तो यू राइट. आई थिंक मेरा ख्याल है कमेंट चैट में भी यही है कि जो प्लेजरिज्म है, रेफरेंसिंग है, दोज आर क्रिटिकल स्किल्स जो कि एज अ बेयर मिनिमम कम से कम वो स्किल्स हमारे बच्चों को अंडर ग्रेजुएट लेवल पे जरूर आने चाहिए. माई डॉटर इज 17. जब कोविड चल रहा था 2 साल पहले, जब शदीद पहला लॉकडाउन हो गया था और यू नो जब बिल्कुल नया नया आ रहा था, तो और हम सब घर से काम कर रहे थे. तो अब घर में जब हम हर वक्त इकट्ठे रहते हैं, यू नो व्हेन यू स्टार्ट गेटिंग इनटू द फेस ऑफ ईच अदर, तो आप लड़ाई भी करते हैं, आप तंग भी होते हैं, आप गुस्सा भी करते हैं. आई वाज गेटिंग वेरी अनॉयड. वो हर वक्त मुझे आके मामा ये मामा वो, शी वाज यू नो डूइंग माय हेड इन. शी वाज 15 years old एट दैट एज. तो एक दिन मैंने सोचा कि अब कोविड तो पता नहीं कब तक चलना है, पता नहीं कब तक घर से काम करना है, यहाँ घर भी छोटे छोटे होते हैं. तो आई थिंक आई शुड जस्ट कीप हर बिजी. मैं उसको कोई प्रोजेक्ट दे दूं कि वो काम करे, बस मुझे वो अपना काम करती रहे और मुझे मेरा काम करने दे, मुझे तंग ना करे. तो उसको मैंने बोला, देखो बेटा तुम 15 years की हो, तुम एक प्रोजेक्ट बनाओ कि जो टीनेज बच्चे हैं वो कोविड से कैसे कोप कर रहे हैं, उनका ओपिनियंस क्या है, उनकी वरीज क्या हैं, उनकी थॉट्स क्या हैं, उनकी पढ़ाई, उनके फ्रेंड, उनके स्कूल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. पहले तो उन्होंने काफी नखरे किए कि नहीं ये वो. फिर मैंने उनको थोड़ा सा पैसों का लालच दिया कि मैं आपको कंसल्टेंसी फी दूंगी तो आप मुझे ये प्रोजेक्ट बना के दो. ऑफ कोर्स फिर वो राजी हो गई. उसके बाद उन्होंने अपने अब्बा के साथ बैठ के पूरा एक क्वेश्चनर बनाया, अपने फ्रेंड्स को फोन किया, फोकस ग्रुप किए, पूरा उन्होंने वो सर्वे किया सबके साथ. वो 8-10 क्वेश्चन थे. देन शी एंडेड अप राइटिंग इट एज अ रिपोर्ट. फिर उसमें उसने रिसर्च मेथड्स लिखे, उसमें उसने वो मेन फाइंडिंग्स लिखी जैसे कि एक एकेडमिक आर्टिकल लिखा जाता है. एंड देन एट द एंड आई वाज सो हैप्पी टू सी उसने मुझे एक रेफरेंस लिस्ट थी कि मामा ये मैंने आर्टिकल्स पढ़े थे. सो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज के इट इज सो इम्पोर्टेंट कि हम अभी ये इन्वेस्टमेंट करें जो बच्चे के अंदर जो एकेडमिक इंक्वायरी
साइंटिफिक इंक्वायरी की जो इन्वेस्टमेंट है, जो रेफरेंसिंग सिखाने की इन्वेस्टमेंट है, जो प्लेजरिज्म को अवॉइड करने की जो एक ये हमारी टाइम इन्वेस्टमेंट अभी है, जो हमारे बच्चों को 5 साल में 8 साल में उनके काम आएगी। तो माशाल्लाह that research was really impressive. उसको फिर यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड ने अप्रोच किया. Now she sits on their panel as a youth advisor. पता नहीं क्या क्या वो काम करती रहती है. But my point was कि मुझे वो शुरू में थोड़ा इन्वेस्ट करना पड़ा टाइम के इसको मैं अब टाइम कैसे यूज करूं, इसको मैं effectively as a parent, how should I engage her? And that one thing I did for her that had really good implications for her. उसको थोड़ी सी साइंटिफिक राइटिंग की समझ आई, जो कि 15 साल का बच्चा कर सकता है. उसको थोड़ी सी 2-3 पैसे मिले, उसको वो खुश हुई. उसको रेफरेंसिंग की समझ आई. तो she was really into that. So I think we are 1.5 hours into this conversation. I do want to invite any other comments, any other questions, any other suggestions. There is a question, what % of plagiarism is acceptable in academic writing? तो वजाहत साहब बात यह है कि एकेडमिक राइटिंग में अगर आप यू ऑल नो के सॉफ्टवेयर होते हैं, राइट? जब एक स्टूडेंट ने एसे सबमिट किया है तो वी रन इट थ्रू अ सॉफ्टवेयर. वो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली वो बता देता है कि ये पार्ट प्लेजराइज्ड है, ये पार्ट प्लेजर, वो हाईलाइट करना, लिटरली वो हाईलाइट करता है. You could be at 5% and still plagiarize, or you could be at 35% and not plagiarize. तो होता ये है कि अगर आप नॉर्मली जो एक एक्सेप्टेबल लेवल है 15 to 20% एंड बिलो, उसके चांसेस ये होते हैं कि देयर इज लेस एंड लेस प्लेजरिज्म और देयर इज नो प्लेजरिज्म. 15-20% से जून वो ऊपर जाना शुरू करता है तो इंटरनेशनल जो एक हम प्लेटफॉर्म पे देखते हैं वो ये कि पीपल आर मोर एंड मोर केयरफुल कि अब ये प्लेजरिज्म की तरफ जा रहा है. I don't know if that answers your question, Wajahat Sahab. If it does, then write in the chat. But I do want to say कि ये एक almost it's an individual case. जैसे मैंने कहा कि all it takes is one quotation without the commas and there you go, plagiarism हो गया. तो अगर आप किसी स्टूडेंट के साथ बात कर रहे हैं तो उनको उनकी थिंकिंग में प्लेजरिज्म डालें, उनको वो स्किल्स सिखाएं कि रेफरेंसिंग प्रॉपर करें. एक रेफरेंस ही तो लिखना है. That's it. You have avoided plagiarism. So, any more questions? My question was, जो हमने कुछ बात की है, what are... जी सर, please. एक चीज, अच्छा, एक मैडम ने पहले काफी डिटेल से उसको कह दिया, तो आई थॉट कि मुझे भी बोल देना चाहिए. जी सर, प्लीज. एटीट्यूड का भी एक जो है वो हम लोगों में इशू है दोनों साइड्स पे. मैं बात करूंगा सुपरवाइजर और स्टूडेंट के दरमियान जो है सर. तो वो जो गैप है उसमें बड़ी चीज जो है वो हमारे एटीट्यूड का है. मसलन मैं अगर सुपरवाइजर हूँ तो 8 आवर्स में मेरे ख्याल से 9 आवर्स मेरे पास टाइम नहीं होता, मैं बिजी होता हूँ. और अगर स्टूडेंट है तो 8 आवर्स में से 10 आवर्स जो है वो भी बिजी होता है, उसको सारे काम होते हैं बट उसको मेरे साथ डिस्कशन करने के लिए टाइम नहीं होता. तो ये दोनों एंड्स पे है. और दूसरा ये कि अगर बच्चा जो है, 2 बच्चे जो हैं वो 2 डिफरेंट साथ वाले घर में रह रहे हैं तो आप उनको एक ही लाइन में नहीं रख सकते. ये नहीं कह सकते कि इसने पेपर पब्लिश कर दिया तो ये भी इसको भी करना चाहिए था. बड़ा डिफरेंस होता है एनवायरनमेंट में, घर में, और देन जो है वो जिस सुपरवाइजर से आप डील कर रहे हैं. तो मैं ये कहूँगा कि स्टूडेंट का एटीट्यूड भी उसमें भी थोड़ा इशू है और सुपरवाइजर के एटीट्यूड में भी थोड़ा इशू है. एटीट्यूड इन अ सेंस के हमारे पास टाइम नहीं हम देते. और ये भी नहीं, मैं शायद आप लोगों को थोड़ा बुरा लगे कि 12 इयर्स अगर वो पढ़ के आता है तो इट डजंट मीन कि 13th ईयर में वो आपके पास आएगा फर्स्ट डे या सेकंड डे और 30th डे पे और वो आपको कहेगा जी ये मैंने पेपर पढ़ लिया है. जो ठीक, मतलब एफएससी में मुझे तो नहीं याद पड़ता कि मैंने कोई रिसर्च आर्टिकल का भी कोई आइडिया होगा. बिल्कुल मुझे नहीं था. मैंने वो डीएनए क्या होता है वो तो पढ़ लिया, लेकिन पेपर पढ़ना जो था वो मुझे बीएस का जो सुपरवाइजर था उसने बताना, उन्होंने सिखाया. बिल्कुल उन्होंने बताना था. वो हमें नहीं बताते. सर कह दें, खुल के कह दें, कोई बाबा आज यहाँ नहीं है. मैं बिल्कुल ओपन ही कह रहा हूँ. तो ये कुछ गैप्स हैं. सारी बातों की एक बात है कि अगर मैंने 20-25 साल लगा के
अगर मैंने पेपर पढ़ना या उसके एब्स्ट्रैक्ट पढ़ना सीख लिया तो मुझे चाहिए कि पहले मैं अपने बच्चे को वो सिखा दूं। बिल्कुल बिल्कुल मैं सिखाऊं फिर, लेकिन हम क्या कर रहे होते हैं, हम ये देख रहे होते हैं कि बच्चा क्या कर रहा है और बच्चा ये देख रहा होता है कि ये क्या कर रहा है और मैं कैसे छुप के निकलूंगा इनसे। बिल्कुल बिल्कुल सर, यू आर राइट, ये दोनों तरफ की है, यू नो, इट्स काइंड ऑफ अ टू वे ट्रैफिक। और मेरा ख्याल है जो एक चीज जो इन बच्चों को एडवांटेज है जो कि हमें नहीं था, अब ये बच्चे गूगल खोल के, यूट्यूब खोल के बहुत कुछ एक्सेस कर सकते हैं जो कि हम नहीं कर सकते थे बिकॉज था नहीं, राइट? चाहे वो कोई खाना बनाने की रेसिपी है, चाहे वो क्रिटिकली अप्रेजल की है, चाहे वो प्लेजरिज्म की है, तो इन बच्चों की फिंगर टिप्स पे वो रिसोर्सेज हैं जो कि हमारे पास नहीं थे। हमारे पास ले दे के टेक्स्ट बुक होती थी, या वो टीचर होता था, या बहुत हो तो एक स्कूल में या कॉलेज में लाइब्रेरी होती थी जिसमें भी कभी कभी जाने से हमें इजाजत कम मिलती थी, या खाली 2 बुक्स इशू करा सकते थे, और वट एवर दैट वॉज। तो आई थिंक द वर्ल्ड हैज रियली कम along, there is a lot of revolution, और जितना रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों की बनती है उतनी ही हमारी भी बनती है। और एक चीज जो मैं ऐड करना चाहूंगी, इंस्टीट्यूशंस की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अबाउट योर वर्कलोड, क्योंकि दैट इज अ बिग कंस्ट्रेंट, राइट? आपके पास टाइम होगा तो आप आगे बच्चे को दे पाएंगे, लेकिन अगर आपको एडमिनिस्ट्रेटिव कामों में रखा जा रहा है, या आपकी जो वर्कलोड एलोकेशन है दैट इज लिटरली कि क्लास में अटेंडेंस कितनी थी, उनके उन चीजों में उलझा के आपको रखा हुआ है, आप कब खुद पढ़ेंगे और आप कब बच्चे को पढ़ाएंगे? तो अगेन कुछ इंस्टीट्यूशनल इनपुट कह लें, कुछ पर्सनल इनपुट कह लें, कुछ स्टूडेंट की तरफ से इनपुट कह लें, इट्स अ बिरयानी ऑफ एवरीथिंग, इट्स अ मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग, आई थिंक। और सब की तरफ से एक कंटिन्यूड, जैसे मैंने मेरे ख्याल एक कॉलीग से पहले भी कहा था, प्रोबेबली सिस्टम तो हम बदलने से रहे, हमारी लाइफ टाइम में तो सिस्टम की चेंजेस नहीं आएंगी, बट व्हाट वी कैन डू इन आवर इंडिविजुअल कैपेसिटीज इसके जो हम एक दो अच्छे लफ्ज सीखें वो हम आगे अपने बच्चों तक पहुंचाएं। कोई और कमेंट है? किसी और ने जी कुछ बोला? जी सर, मैं कुछ प्लीज कमेंट करना चाहूंगा मैडम। प्लीज सर। बीइंग ए टीचर जो मैं थोड़ा सा फील करता हूँ ना, वो ये है कि स्टूडेंट को ब्लेम करने से पहले मेरा ख्याल है अगर मैं टीचर हूँ तो मुझे अपने ऊपर गौर करने की जरूरत है। मैं इसे कुछ मिसालों के साथ एक्सप्लेन करूंगा। पहली तो एक मिसाल आपने अपने घर की दे दी अपनी बेटी के हवाले से, माइट भी अभी आप बता रहे हैं ऑक्सफोर्ड में किसी ज्यूरी का वो हिस्सा क्या कर रही है, वल्लाह आलम, आप बेहतर जानते होंगे। आपने उसके ऊपर इन्वेस्ट किया एंड नाउ शी इज पार्ट ऑफ सम ज्यूरी बिलोंग्स टू ऑक्सफोर्ड। मैं एक थोड़ी सी मिसाल देता हूँ। किसी जगह मैं एक स्टोरी सुन रहा था कि जिसने बिजली बनाई, मेरे ख्याल उसका नाम था एडिसन। थॉमस एल्वा एडिसन जी। एडिसन। अच्छा, उसकी वालदा, चलो व्हाट्स एवर द नेम वाज, उसकी वालदा उसे जब एडमिट करवाने के लिए गई ना स्कूल में, तो कुछ अर्सा उसे पढ़ाया गया। उसके बाद प्रिंसिपल ने वालदा को कॉल किया, उसे एक लेटर दिया, उसे कहा कि जी आप इसे ले जाएं, इसको नहीं पढ़ाया जा सकता, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा ही है। घर आई, उसने पूछा अम्मा जी क्यों मुझे निकाल दिया गया? उसने कहा बेटा आप एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे हो, वो कह रहे हैं हमारे पास ऐसी फैकल्टी नहीं है कि आपको टीच कर सके, आपको स्कूल कॉलेज की जरूरत ही नहीं है, तो मैं आपको खुद टीच करूंगी, आपको जरूरत ही नहीं है स्कूल जाने की। वक्त गुजर गया, वालदा फोत हो गई, एडिसन ने बिजली बना दी। अब बिजली बना के फारिग हुआ तो कुछ वक्त गुजरा, एक दिन अम्मा के कमरे में गया, उसने एक पुराना सा संदूक खोला, अंदर से वो लेटर निकला। उसने कहा पढ़ू तो सही वो जो दिया था बचपन में। फारिग टाइम में जब उसने लेटर खोला तो उसके अंदर लिखा ये हुआ था कि ये बच्चा स्पेशल केस है, मेंटली रिटार्डेड है, इसको स्पेशल स्कूल की जरूरत है, हम तो ये नॉर्मल लोगों का स्कूल है, आप इसे ले जाएं। वालदा ने ये बात उससे छुपाई थी, उसे घर लाया था, उसे गलत बताया, झूठ उससे बोला उस टाइम के, उस टेम्पररी एक्सटेम्पररी, क्योंकि उसे टीच करना चाहती थी, उसके ऊपर इन्वेस्ट किया, खुद उसे सिखाया, प्रॉपर उसे टाइम दिया, उसने बिजली बना दी एक मेंटली रिटार्डेड बच्चे ने। ठीक हो गया। हम कितना करते हैं अपने स्टूडेंट के ऊपर इन्वेस्ट? मुझे याद है मैंने 9th-10th के अंदर जिस टीचर से ट्यूशन पढ़ी थी, तो मेरे वालिद साहब जब छोड़ने के लिए गए, और ये वाकया मेरे साथ 2 दफा हुआ, तो उन्होंने कहा कि जी इसकी फीस क्या है? तो उन्होंने कहा इसकी फीस ये है कि ये रेगुलर आएगा, ये छुट्टी नहीं करेगा, अगर ये छुट्टी करेगा मैं इसे पढ़ाऊंगा नहीं। खुशखती सीखने के लिए एक टीचर के पास चला गया, अपाइज थे वो, मुझे याद है जब वो आया करते थे अपने उधर ऑफिस में तो हम पकड़ के उन्हें बिठाया करते थे। सेम यही हुआ, मैंने कहा जी फीस, कहते बेटा फीस ये रेगुलर आओगे। ये आज भी याद है, तख्ती भी उन्होंने खुद मुझे खरीद के दी कि इसके ऊपर आपने लिखना। कितना करता हूँ मैं इन्वेस्ट? नहीं करता मैं इन्वेस्ट। आज स्टूडेंट के ऊपर मैं कितना करता हूँ टाइम इन्वेस्ट? मेरी प्रायोरिटीज कुछ और हैं। माजरत के साथ, विद ड्यू रिस्पेक्ट एंड ड्यू अपॉलॉजी, बीइंग ए टीचर मुझे इस चीज़ की ज़्यादा टेंशन है यार, मेरे 5-6 पेपर निकल जाएं इस साल, क्योंकि मैंने फला जगह पहुंचना है। ऐसा ही है बिल्कुल। शेड्यूल डिजाइन किया हुआ। मेरे टीचर के स्टूडेंट के साथ कोई कंसर्न नहीं है इतना ज्यादा। स्टूडेंट के साथ भी अगर कंसर्न है, अगेन विद ड्यू अपॉलॉजी, वो यही है कि इसको किस तरह से यूज करके मैं जरा अपनी सेटिंग बेहतर कर सकता हूँ। 100% सर। देखें
ये रियलिटी है, ये रियलिटी है बिल्कुल। ऑलवेज बेटर, ठीक है ना। हम कितना करते हैं कि मेरा स्टूडेंट कुछ बने, मैं उसके ऊपर इन्वेस्ट करूं, टाइम लगाऊं उसके पीछे। हम लाइक अ कोच हम कितना टीच करते हैं, जिस तरह कोच एक स्पोर्ट्समैन को करता है, या वो उसकी मेंटर की डाइट, तरह। सोना, उठना, बैठना, जागना, हर चीज के ऊपर नजर रखता है और बड़ा कॉन्शियस होता है उसको लेके, इमोशनल हुआ होता है वो। हम कितना इमोशनल है टीचर स्टूडेंट को लेके अपने, कोई फर्क नहीं। हम भी कहते हैं ठीक है आया, हम भी जान छुड़वाए, वो भी जान छुड़वाए, कोई एक आधा बीच में अगर समझ आ जाए जिससे हमें लगे कुछ बेनिफिट हो सकता है, चलो कोई म्यूचुअल वो जिसे कहते हैं कि म्यूचुअलिज्म हो सकती है, बिल्कुल सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनता है, तो उस स्टूडेंट के साथ तो थोड़ा बहुत टाइम हम लगा लेते हैं, चलो कुछ इसको भी हो रहा है कुछ मुझे भी। अदरवाइज कितने हैं जो वीक स्टूडेंट के ऊपर लगाते हैं। एफएससी में मुझे वो चैप्टर याद है, अगर हम भूल जाएं तो फिर पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। जिसके अंदर एक बच्चा फ्रेंच के अंदर दाखिला लेता है, सॉरी इंग्लिश क्लास में दाखिला लेता है, ये 12वीं क्लास के अंदर पूरा चैप्टर पढ़ाया जाता था, इंग्लिश की बुक के अंदर था, वल्लाह आलम अब है या नहीं। वो इंग्लिश क्लास में दाखिला ले लेता है, इंटरेस्ट बेचारे का फ्रेंच में होता है, पूरा साल इंग्लिश पढ़ता है, पेपर देता है, कुछ नहीं होता उससे। आप शायद आपने पढ़ा हो या एक जी याद है मुझे सर, याद है ना मैडम। जी जी वो बिल्कुल। फुल स्टॉप और कामे लगा के पेपर के अंदर आ जाता है, टीचर उसे बुलाता है, मेरे जैसा टीचर नहीं था कि उसने देखा फुल स्टॉप कामे लगा मैं जीरो कर लूं। वो कहता है बच्चा कुछ कन्वे करना चाह रहा है, क्या करना चाह रहा है ये उसे नहीं पता। वो उसे बुलाता है, उसकी सारी क्यूरी करता है और आपको याद होगा वो चैप्टर क्लोज करता है राइटर इस बात के ऊपर कि फिर वो बच्चा प्रोफेसर बनता है फ्रेंच में। बिल्कुल फिर टीचर डायग्नोज करता है उसके मसले को और उसे फिर उधर तक लेके जाता है जिधर तक वो डिजर्व करता था, जो वो चाहता था। हम में से कितने हैं जो एफर्ट करते हैं। अरे आप सब बिल्कुल ठीक आखिरी जी बस में प्लीज लेट मी प्लीज कंक्लूड। ऑफ कोर्स। जो आपने अभी वर्कलोड की बात करी थी, ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। मेरा वर्कलोड मेरी कैपेसिटी से ज्यादा है। जब कैपेसिटी, ये एज ए जेनेरिक बात कर रहा हूँ, मैं अपनी बात नहीं कर रहा। हम मेरे से ये तो मैं एक स्टैंडर्ड बिल्कुल यूज कर रहा हूँ, हाँ जी जर्नल मेरे से ज्यादा। जब मेरे से ज्यादा तो फिर आप खैर ये एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, ये जो इतनी लंबी तकरीर मैंने की है इसका आंसर मैं खुद ही कर रहा हूँ। फिर स्टूडेंट टीचर रेशियो जो है, आप इंटरनेशनल फिगर्स काउंट कर रहे थे, मेरा ख्याल है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, स्टूडेंट टीचर रेशियो जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड उनके मुताबिक एक टीचर 20 स्टूडेंट्स को ज्यादा से ज्यादा प्रॉपर तरीके से फोकस कर सकता है। 20 ज्यादा नहीं। एक क्लास में अगर 20 लोग बैठेंगे, मैडम मेरे सामने बैठे हैं 220, मैंने क्या सेम ये कुछ मसाइल हैं। बिल्कुल सारा बिल्कुल स्टूडेंट्स पे नहीं डालेंगे, हम ज्यादा रिस्पॉन्सिबल एब्सोल्युटली। मैं पोडियम के ऊपर खड़ा हूँ, वो इधर बेंच पे बैठा है। मेरे पास, मैंने दावा किया हुआ है क्योंकि कि मैं नॉलेज में तुमसे ज्यादा हूँ, तभी मैं उस पोडियम पे गया हूँ ना, इनको मैंने बेंच पे बिठा दिया। तो पहले मुझे, वो वैसे भी कहते हैं कि लीडर्स ऑलवेज लीड फ्रॉम फ्रंट, बीइंग अ टीचर वी आर आल्सो अ लीडर नेशन, ठीक है ना। अभी हम कह रहे थे कि हम मामार हैं कौम के, मुझे अपने ऊपर पहले थोड़ा सा हमारी टीचिंग फ्रेटर्निटी को बैठना होगा, चाय पी के हमें जरा अपने ऊपर करना होगा और उसके बाद फिर हम स्टूडेंट की तरफ बयानी को हजम करना होगा। सर 100% आपकी सारी बातें बिल्कुल ठीक हैं, एंड आई थिंक वेरी वेरी इंसाइटफुल और बहुत ऑनेस्ट रिफ्लेक्शंस हैं आपके, और ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आपके। हम, मेरा ख्याल है कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें, जैसे फॉर एग्जाम्पल जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, यूके में मैंने देखा है जो टीचिंग स्टाफ है उसका काम सिर्फ टीच करना है, उनको पेपर्स की बेस पे असेस नहीं किया जाता, उनको कितनी वो फंडिंग लाए उस पे असेस नहीं किया जाता। रिसर्च स्टाफ फर्क है। तो ऑफ कोर्स जब हम बात कर रहे हैं, हम इंस्टीट्यूशनल चेंज की बात कर रहे हैं, क्योंकि रिमेंबर डोंट बी हार्श ऑन योरसेल्फ टू मच एज वेल। आप अपनी कैपेसिटी में रह के, अपने कंस्ट्रेंट्स में रह के जो कर रहे हैं, मुझे लगता है वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो जो आपकी जो कंसर्न्स हैं वो दोनों तरफ बिल्कुल, यानी मेरा ख्याल है हम सारा का सारा मलबा स्टूडेंट्स पे डाल दें वो ठीक नहीं है, हम सारे का सारा खुद को कर लें, दैट इज ऑल्सो नॉट फेयर। आई थिंक जैसे वो पहले भी बात हो रही है कि वी आई डोंट थिंक हमारी लाइफ में एक ऐसा कोई सिस्टम होगा जो कि पूरा परफेक्ट होगा, जिसमें हमें allocated time for teaching मिलेगा, allocated time for research मिलेगा, grant writing के लिए funding proposal के लिए time लिखना, उसके लिए time मिलेगा। ये सारे वो wider issues हैं। I hope कि जो organizers हैं जो कि इस position में हैं, that they can consider these things, they can take these opportunities. समर यहाँ बैठी हुई हैं, I hope she can take this feedback back to the people who make decisions. It is a lot about कि कौन से resources कहाँ जा रहे हैं, और अब वो जो आपने बात की है ना, mentoring, coaching, student well-being, that is really really important, क्योंकि वो अभी इस वक्त बिल्कुल यानी कि कम है। और आप, why as a teacher would you invest your time in a student? आपके पास जब अपना इतना लंबा वर्कलोड है, आपको पेपर अपने पब्लिश करने हैं, आपको ग्रांट राइटिंग करनी है एक्सेट्रा, आपको एसेज मार्क करने हैं, दिस इज अ वेरी ये बहुत वैलिड इश्यूज हैं, दे आर कॉम्प्लेक्स, दे आर कॉम्प्लिकेटेड। मुझे लगता है कि एक सेटिंग में बैठ के हम इनका we cannot reach a solution. What we can do is we can create these platforms जहां पे हम लोग ये conversations कर सकें, safe spaces हों ये,
और आज की कॉन्वर्सेशन इट इज़ वन ऑफ दो सेफ स्पेसेस के जहाँ पे हम अपनी फ्रस्ट्रेशंस और अपने जो अचीवमेंट्स हैं उनको शेयर कर सकें, और हम जो लोग जो कि उस पोजीशन पे बैठे हुए हैं, पावर की पोजीशन पे, जो कि अथॉरिटी में बैठे हुए हैं, दे कैन टेक दीज सजेशंस ऑन बोर्ड, दे कैन टेक दीज आइडियाज ऑन बोर्ड, दे कैन इनकॉर्पोरेट सम ऑफ देम। तो आज की जो कॉन्वर्सेशन थी उसका मकसद यही था, एक तो एकेडमिक राइटिंग और क्रिटिकल अप्रेजल के बारे में बात करना, उसके अलावा आपसे समझना कि आपके चैलेंजेस क्या हैं एज अ टीचर or as a person who is imparting knowledge to your students. So we are 10 minutes away. I would like to draw this to a close. I would want to thank everybody जिन्होंने आज participate किया है, अपनी आपने knowledge share की है, अपने concerns share किए हैं. I'll quickly glance at the screen. आई थिंक वहाँ भी यही कॉन्वर्सेशंस हैं कि मास्टर्स लेवल पे, अंडरग्रेड लेवल पे एकेडमिक राइटिंग, प्लेजरिज्म, ये चीज़ें इनबिल्ट होनी चाहिए शुरू से, ताकि बच्चे जब हमारे पास यूनिवर्सिटीज में आए तो वो रेडी हों साइंटिफिक इंक्वायरी के लिए. And of course, there are wider questions, there are wider questions about staff support, staff training, there are wider questions about staff teaching, work allocation, etc., etc. Let's hope कि ये conversations, we will continue these discussions. कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है वो, कुछ ना कुछ तो आप ठीक कर रहे हैं, आप सब लोग, ठीक है, कुछ ना कुछ आप कर रहे हैं. अगर आपने वो, अगेन आई वुड वांट टू एंड ऑन दैट नोट कि आप अपनी कैपेसिटी में जो भी कर रहे हैं, जहां भी कर रहे हैं, जितना भी पढ़ा रहे हैं बच्चे को, आई सैल्यूट यू. आप मेरी नजर में आप लोग जो हैं वो, यू आर हियर. तो खुदा ताला आपको इसी नोबल प्रोफेशन को जारी रखने की तौफीक दे. और मुझे उम्मीद है कि जो एक दो लफ्ज मैंने आज आपसे शेयर किए हैं, इफ यू जस्ट टेक them away, think about them, और कुछ भी अगर अपने आगे स्टूडेंट्स को पास ऑन कर सकें तो मैं समझूंगी कि आज एक अच्छा काम हो गया. Anything else? Anything anyone wants to say? कोई और चीज, कोई और बात जो हमने करनी हो आज? Oh, I think आप सब तालियां बजा रहे हैं. Okay, I think we can all clap for each other, क्योंकि जितना मैंने आपसे सीखा है शायद मुझे ज्यादा अच्छा लगा आपसे बात करके और आपकी कॉन्वर्सेशन को सुन के. Summer, I will give you the final word from my side. Massive thank you and my best wishes for you. और मैं उम्मीद करती हूँ कि at some point आप लोगों से सबसे in person भी मुलाकात हो, किसी ऐसी ही एक और ट्रेनिंग पे, किसी ऐसी ही एक और सेशन पे. Over to you, Summer. Thank you so much, Madiha, for joining us and sparing time for us. And I hope it was very engaging and very interactive and informative session with all our participants. And when you come to Pakistan, inshallah, we will plan some live session with you, inshallah. बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच. डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड. और आप सब बस सेफ रहिए, अपना ख्याल रखिए, कोविड से बच के रहिए और अपनी साइंटिफिक इंक्वायरी को जिंदा रखिएगा. मेरी तरफ से ओवर एंड आउट. थैंक यू जी. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज. Thank you so much, participants. You can go now.